with Ambassador A&D Haksar in conversation with Madhav Nayar. The title of the session is Sanskrit Classics in Translation. This session is curated and supported by a suitable agency. A&D Haksar is a highly respected translator of Sanskrit classics who also worked extensively in the Indian Foreign Service. He has previously served as Minister, High Commissioner, and Ambassador respectively in the US, Kenya, Portugal, and Yugoslavia, and earlier at the Indian Mission to the UN at New York. After retirement, he undertook translation from Sanskrit to revive a long-held affinity with a language he had once studied as a schoolboy. His first translations were of tales from the Panchatantra, published by National Book Trust India in 1992. After their success in multiple editions, he continued with several other Sanskrit texts, many of which have been published as Penguin Classics. Over time, he turned his attention to bring to light lesser known but thoroughly significant Sanskrit works. This included works by medieval authors that reflected cultural intermingling, like the satires of Shemendra and Shivara's Kathakautukkam from Kashmir and Kalyana Mala's Suleiman Charitra from Uttar Pradesh, among many others. His most recent work is a translation of Damodara Mishra's Hanuman drama, a poignant 11th century retelling of the Ramayana. This is also Mr. Haksar's 20th translation for Penguin Classics. Madhav Nayar has done his Master's in History from SOAS and is currently working as an Archives Associate with the Ashoka Archives of Contemporary India. He has also been a contributor for the Scroll, Wire, Livewire, The Hindu, and Sahapedia. He enjoys listening to Carnatic music and has a keen interest in Indian epics. Over to Madhav to take the conversation forward. Thank you so much, Reena. I hope I'm audible. I think nothing can be a better way of starting a session on Sanskrit classics with a Sanskrit saying, perhaps. And this Sanskrit saying is by a Sanskrit poet commentator known as Appai Dikshitar, who incidentally also finds mention in Ambassador Haksar's translation of Raghuvamsha. And the saying is, Paropakara vismritin yujjate managapi, apakriyatu tatkrita tadaiva vismrita vara, which when translated into English means gratitude is a beautiful quality which should not be overlooked if we wish to raise ourselves in this world. And in order to exemplify this saying, I'd like to extend my heartfelt gratitude to the organizers of Samanvay, to Ambassador Haksar, because it's such an honor to be in conversation with him, and to all the members of the audience who've gathered here. So I was hoping that the manner in which we could structure this conversation is that we could perhaps have a 30 to 40 minute conversation about Haksar Sahab and his work and his translations, and about, we could have about 15 to 20 minutes for an audience Q&A. Ambassador Haksar, I thought, why shouldn't we begin with, your engagement with Sanskrit? What drew you to Sanskrit in the first place? How did you become a translator of Sanskrit classics? And why did you choose Sanskrit? Well, ladies and gentlemen and friends, first of all, my thanks to all of you for your kindly coming here today and giving me this opportunity to speak with you. Especially my thanks to my colleague, Mr. Madhav, who has been so kind with the words he has used about me. And also Srimati Kanika, who said nice things about me also. I've been asked
what has brought me to Sanskrit and to translations. I'll be very glad to give you a very brief account of this history. Like many other young students in this country, I was also initiated into the Sanskrit language when I was still 10 or 11 years old, for 3 or 4 years before I went into serious higher studies. That is when I learned Sanskrit. That is when I learned some texts which are still very popular, like the Panchatantra, and much more important than that, came across for the first time in ancient Sanskrit anthologies of what are known as the Subhashita verses. Subhashita, well said verses. I do not know if you are aware, but Sanskrit literature, which is an ancient literature in this country, has a very long and ancient tradition of Subhashita, well said verses, either included in big books, or simply created for themselves and existing now in many anthologies. And I would like to take this opportunity of mentioning to you the names of a few such anthologies which are still very much available in print and which people interested can have a look. There is the Sukti Muktavali, edited by a scholar in the 12th century called Jalhan, available firstly from Bombay printing houses. Then there is another text, also very well known, called the Sharangadhar Paddhati, created by a writer-scholar called Sharangadhar from Rajasthan in the 14th century. Finally, there is another text which I came across a long time ago called the Subhashitavali, edited by Vallabhadev, a scholar from 15th century Kashmir. These are texts which contain many hundreds of Subhashita, well said verses, each of them in large collections. And more recently, there is a text which is easier to come across today, available in print, the Subhashita Ratna Bhandagar, which was edited and printed and published in Bombay in the 19th century. Each of these texts contains thousands of Subhashita, well said verses, which anyone can read and enjoy even to this day, and maybe encourage people to learn a little bit of the language. But this is just for your background. My interest began, as I said, with a student as a small boy. Then, after an interval of something like 20 or 30 years, after retirement from the Foreign Service, I revived my interest by trying to revive my knowledge by making translations existing originally from the Panchatantra. And it so happened that my translations from the Panchatantra got published in those days in the Sunday Statesman. And this continued for quite a long time. So much so
that the National Federation then approached me and they said, why don't you let us print it as a book? So I agreed with them and they printed my Panchatantra verse translations as a book which still exists, is still selling, still around. And then of course I became known to others, publishers like Penguin and others, and by then my interest also had increased, and then I started translating for Penguin, and as I have said, it's been said already, I have done so far 20 Penguin classics of different kinds of verses and strokes. What I'd like you to know, what I would like everyone to know, is that in this country today, Sanskrit literature is recognized and acknowledged mainly as connected with holy and scriptural writings. When you talk of Sanskrit literature, you think of the Vedas, the Puranas, the epics, the Mahabharata, the Ramayana, and some other religious or holy texts. People tend to forget that Sanskrit literature is a very ancient literature. It contains all kinds of writings spread over many, many centuries right up to present times. And much of these literatures, these things, are totally forgotten now in the interest and the concentration on the religious and the holy aspects of the language. And my effort in translations has been to revive and to bring before people today some of the literature which thus exists and deserves today to be known better. And I'll give you an example. It is my latest translation. It is called the Hanuman drama. The Hanuman drama, the original title of the name in the Sanskrit text is Hanuman Natak. And the legend is, you will be interested to know the legend. I hope I am not I'm just adjusting your mic sound. boring you too much with these old stories. But the legend is that the Rama Katha, the original story of Ram and Sita, was in fact written by his personal attendant, Hanuman. And Hanuman was a monkey and he wrote it on rocks. The legend then goes on that the sage Valmiki, who was also a poet, asked Hanuman to throw those rocks away into the sea because he said, I have been asked to write the original story of the Ramayana. So Hanuman threw away those rocks, and as everyone knows, Valmiki then wrote the Ramayana, which still exists, which has been seen by many people and which has led to so many redoings in other languages of India right up to the present day. The legend then goes that during the time of Raja Bhoj in the 11th century, some of those rocks were rediscovered, and the court poet of Raja Bhoj, whose name was Damodar Mishra, who was himself a famous poet, was asked to write a story of the Ram on the basis of what is given in the rocks. And the legend goes that Bhoj's scholar, his name is Damodar Mishra, wrote in Sanskrit a text called the Hanuman Natak, which has existed in Sanskrit now for more than 1000 years, but it fell to me to translate it into English and bring it before people today.
And this book, written by Damodar Mishra, the court poet of Raja Bhoj, has come out as Hanuman drama and brought out by Penguin Classics only 2 months ago. And a copy of it I have given to Madhav, it is there with him. And this gives the story of Sita and Ram, now translated and put into English for people to see, gives that old famous story in very human terms, not just as a story of a divine incarnation, but as the story of Sita and Ram, their love life, their adventures, their encounter with Ravan and Mandodari, and how it all ended. So it is an interesting story, and people deserve to know that this is not an epic. It is a story as it was told more than 1,000 years ago. And this is the kind of work that I have been doing now for several years through translation to bring before today's English knowing public Sanskrit literary works which have meanwhile become almost unknown. And some of them deserve to be known today. And one work which I would like to mention before you, all of you, is the love poems of a famous but forgotten poet called Amaru. And it so happened that it fell to me to translate Amaru Shatakam, the 100 verses of Amaru, as my loving heart, which Penguin published. And this is a book of love poems, short love poems, entirely human, not about God and devotees, not about incarnations, but about men and women, how they fall in love, how they fall out of love, what happens to them, all these things. Wonderful poems, now available in English verse translations for people to see and to read. And not divine in any way, very, very human poems. So I am trying to give these accounts to explain before you that one of my intents in making translations from Sanskrit literature is to bring before public those elements in Sanskrit literature which recognize the human qualities of Sanskrit literature, which have tended to be forgotten in the kind of knowledge systems that evolved in this country. And Amaru and Damodar Mishra are only two recent works that I have done out of those texts, and others are also like that. And I am hoping that the interest which has been aroused like this would now encourage and incite other friends and colleagues to translate more works from Sanskrit literature and bring them out before people today. Works which are today not known even by their titles. And that really is my purpose. Now let me tell you just a few words about translation, anuvad. Each language has its own literary qualities. And in a translation, a good translator
attempts to convey not only the meaning and the spirit of the work he is translating, but also the meaning and the spirit as it is conveyed in the translation also. So it's not just a question of a literary translation, it's a question, not a literal translation, but something trying to do a literary translation. And that is the kind of work that I've been doing, and I am hoping that this will be examples for others to do that and have the effect of bringing many vast quantities of Sanskrit literature which are still there in before today's audiences through English translations. So that really is my purpose. And I've mentioned two to you. There are several others that I have done, and I'm glad to tell you that they all seem to have been received fairly well. Thank you very much. Ambassador Haksar has in fact anticipated and answered most of my questions. So I am left in a bit of a quandary. But Haksar Sahab mentioned a lot of Sanskrit texts. It is important to observe that a number of Sanskrit works that he has translated have either not been translated before, such as Srivara's Katha Kautukam, or have been translated perhaps a century ago, or also in some cases they have multiple translations, the Kama Sutra or the Panchatantra, for example. So his oeuvre, in other words, spans both the popular and the somewhat obscure. Having said that, I feel perhaps we should also focus on the title of today's session, Timeless Tales. What is it that makes some of these tales timeless? What are some of the enduring aspects or qualities of Sanskrit literature? If you'd like to reflect on that, Ambassador Haksar. Thank you for your question, Madhav. What I would like to mention there is that due to historical reasons into which I don't need to go and on which different people may have different ideas, certain aspects of Sanskrit literature have always lived in the minds of people, always been read, always been translated, always been redone. And these aspects all tend to have some kind of a religious connection. I'm not talking of technical works which students study as a part of studies, grammar and things like that. I'm talking of general readership. And there are other aspects which are not studied as much as they can. Now, I would like to mention to you one aspect which Sanskrit scholars know very well, but others perhaps do not know at all. And this is an aspect called the Subhashita verses. Subhashita literally means in Sanskrit, well said. Subhashita, well said. Now, in Sanskrit, there are thousands of verses either included
in bigger texts or composed individually and found in anthologies, and these are known as Subhashita verses, well said verses. Single verses, 2 lines or 4 lines, sometimes epigrammatic, sometimes full of emotional epigrams, and available in anthologies. And several Sanskrit verse anthologies are existing to this day. I would like to mention to you and bring before this audience the names of a few well-known, old but still existing verse anthologies. Firstly, there is an anthology called the Sukti Muktavali, the pearl string of sayings. Sukti Muktavali. Attributed to the 12th century editor and composer Jalhan. Secondly, and Jalhan perhaps lived in what is today called Maharashtra. Secondly, is the more recent but also very well known anthology of verses called the Sharangadhar Paddhati, edited and composed by a writer scholar called Sharangadhar, who lived in 14th century present day Rajasthan. Thirdly, this is an anthology which came to me right at the beginning when I began my studies. It's called the Subhashitavali. This is from 15th century Kashmir, edited and composed by a writer in Kashmir called Vallabhdev. And finally, here is the 19th century, more recent anthology from Bombay, Subhashita Ratna Bhandagar, the treasure house of verse gems. 19th century Bombay, still available, you can get it in a shop. Now these texts are not the only ones which contain Subhashita, well said verses. There are many others. But Sanskrit literature, apart from philosophy, religion, and serious material of that nature, has an enormous collection of Subhashita or well said verses in it, still due to further research, collection, editing and translation. I have done a certain amount of this work in the works that I have done, and people are welcome to have a look at them. The intention is to enable today's public to know through English translations the human quality, not just religious, but the human everyday quality of Sanskrit verse literature which still exists, which anyone can see either in the original or through translations. And I have done a few translations, and I hope that this will encourage others to do more, because the amount which is available is really enormous, and they correct
every aspect of life. I thought sometimes of preparing a verse collection devoted to the description of lack of success, failure in marriages. That is there also. But I haven't got around to doing it. The verses exist, they are there in all these anthologies I mentioned to you, and they exist in others too. But they are every aspect of human life which can be found there. Sanskrit literature, as you know, describes all literature as composed in Nava Rasa, 9 rasas, 9 flavors. And these flavors are not only holy, humorous, erotic, furious, peaceful, loathsome, angry, and others, but they contain verses which depict all aspects of human life. And last year I did a small collection which was put out by Penguin as Nava Rasa, the 9 rasas of Sanskrit literature, giving a few examples of Sanskrit verses illustrating each rasa, from the erotic and peaceful at one end to the hideous and loathsome at the other end. So all these things are there for anyone who wishes to read them. And I hope that people will be interested to look at these and do some more work, because I say to myself that Sanskrit literature in its time has had the same kind of capacity to collect and illustrate human feelings and imagination as English literature has today. And that is what I am attempting to do. Thank you very much. If I may add on a lighter note, perhaps Sanskrit literature also teaches us innovative ways to insult a person. Bhartrihari comes to mind when he says, Sahitya Sangeeta Kala Vihina, Sakshat Pashu Puchha Vishana Hina. Comparing a person who cannot appreciate the arts and literature to an animal without a tail. But apart from this, there is this sheer playfulness of Sanskrit as well, which if you read in the original, you get a sense of. For example, there is this verse by the great Shatavadhani Nayar Ganesh, which says, Kalikale kalalila kala kilala kelika, kalka kaka kukilaika kakali kokilakula. In this age of Kali, it is so difficult to pursue the classical arts, as if you have to, swim in a poisonous river, and as if a cuckoo bird has to be accompanied by a group of crows. So the flavor of Sanskrit and the sheer playfulness of it is something which perhaps, draws one to the language. But apart from that, if I may also add, Sanskrit classics are classics not only in terms of the universality, but also perhaps because of their difference, because of the fact that they offer us access to different modes of thought, peculiar ways of being, which are no longer accessible to us, So in that sense as well, the uniqueness of some of these Sanskrit narratives makes them a classic perhaps. The second theme that I wanted to touch upon, part of which you addressed, Ambassador Haksar, was the challenges that a translator of Sanskrit classics faces. There's Slesha, for example, which is a pun in Sanskrit. It's both a literary device and a genre of poetry in which each verse has 2 or maybe even 3 meanings. There's also the fact that Sanskrit as a language ranks high on polysemanticity. Each word has multiple meanings and
There's the case of synonyms as well. And there's also the fact that while translating, you would encounter certain contentious phrases, for example, maybe a jati slur, which when translated might offend the sensibilities of a modern day audience. So how do you tackle all of that as a translator? Do my speaking here from here, because I'm not very good at handling the portable microphones. All I can say is that what Mr. Madhav has pointed out to, all these things are possible. But for anyone who is attempting to work in this area, only those possibilities can become realities which one is able to handle. And I have found there are some aspects which I have been able to handle because maybe I was able to understand them better. And there are other aspects which so far I have not even attempted to handle because I did not understand them. But God willing, a time will come when I will understand them and do them also. So this is how it goes on. And as my different penguins, I've done 20 penguins now, giving my translations, and I feel that in the course of these translations, my own knowledge and understanding of the works of our ancient language has increased to some extent, and I am able to convey them in today's English more effectively than I could have done some years earlier. And the most recent, which I've just mentioned to you, is the Hanuman Natak. So do have a look at Hanuman Natak, which has a long history which I've just recounted to you. But it is an interesting history how it shows how the Ram Katha was originally written by Hanuman and then eventually ended up where it does. So these are things how they are. And I'll be very glad to have any opinions which the audience has. I thought before we open up for questions from the audience, perhaps I could take the liberty of reading out a few extracts from Haksar Saab's translation. There's a verse by Bhatrihari that he translates in the Simhasana Dvatrimshika, which says, "In vain do men delude themselves with the youth and beauty of lovely women. Kama is king in their hearts and does exactly what he pleases." There's another verse which says, "No fortune is greater than renunciation, no happiness more than enlightenment, no savior other than Hari, no enemy worse than this worldly round." Perhaps now we could open it up for questions from the audience. Yes. I'm sorry I can't do it very well with these handheld mics. I couldn't stand it. Thank you. One question and half a comment. The question is about process. In your life as a renowned translator, I've heard from you, sir, as someone who's inspired by you, that you learned Sanskrit in school, then you didn't put it to use of the type you're doing it now as a translator. Then one Mr. Venkatareshwaran came, he was your senior colleague in Brussels, that triggered something in you, rekindled interest in Sanskrit, and then you come back as a true blue professional translator at the age of 70, can you believe it?
you start really working on your books at the age of 70. That's really inspiring. The second one is a comment about Chanakya Niti. Very sage advice to what a diplomat should or should not do. Perhaps you could recite something if you have it. Thank you. I should mention to you, you took the name of a personality who is now quite old and forgotten, but who has a very important role in the Indian Foreign Service, of which many of you are aware as an association. As you know, the Indian Foreign Service has now been in existence since the time of independence. And people have been recruited to the Indian Foreign Service through UPSC examinations right from the beginning. Now it so happened that the first UPSC examination for the Foreign Service, which was held way back in 48 or 49, something like that, the person who topped that list was an officer called Venkateshwaran. So he is really the first true competitive Foreign Service officer in the whole service. Now it fell to my good fortune a long time ago when I happened to be posted to Brussels, which is not only the capital of the small European country Belgium, but also the headquarters of the newly established European Common Market. And I happened to be posted there as a young officer to work for Indian relations with the Common Market. And it was my good luck that the person under whom I was posted to work, his name was Mr. Venkateshwaran. And Mr. Venkateshwaran, as I mentioned to you, was the first and senior most member of the Foreign Service. And it is that Mr. Venkateshwaran who had an interest in Sanskrit and who presented me with an inscribed copy of Amaru Shatakam, which I translated many decades later. So you might say that Mr. Venkateshwaran was one of the people who got me interested into Sanskrit. Now it so happened that Mr. Venkateshwaran, under whom I was working in Brussels, passed away at a young age while both he and I were in Brussels. And I recall not only the news that he had passed away and rushing to his flat to see the situation, but then to make arrangements for the arrangements needed in informing his family in India, and they rushed to Brussels also, and to make all the other arrangements. But you might say that through Mr. Venkateshwaran, I had one of my early introductions to Sanskrit literature. Now, many years later, I had, after retirement from the Foreign Service, my interest in Sanskrit literature was potential, but it was still inside. And to revive it, I started translating from the simple text Panchatantra. And as I mentioned, it was first published in Sunday Statesman, and then after some time the Indian National Federation approached me and they said we would like to publish it as a book. So they published my Panchatantra verses and stories as a book. And it was very well received, and it had the good effect of introducing me to Penguin Classics, who had just opened an office in India.
And that is how I came into contact with penguin. And that is how my relationship began with the penguin. And then, over more than 20 years, I did translations which were published by Penguin Classics. One of the earliest was the one which has been quoted on the Simhasana Dvatrimshika, 32 Tales of the Throne, which are stories about the court and the life of the Emperor Vikramaditya, who is a historical figure, and in fact our own time slot, Vikram Samvat, is known after him. And after that there were many others, and the latest is the one which I have just presented to Mr. Madhav. It is a book called Hanuman Drama, and of it I have given the legend also, the stories. And God willing there will be others to come, because Sanskrit literature is a vast literature, and I am attempting through this translation to bring some of it in front of today's reading public. And I am concentrating in my work to bring out those Sanskrit texts which have become over time practically unknown to people today. And the last few texts have been such that they have been brought out through translation to the reading public now, much to my satisfaction and much to the satisfaction of many people who have read them. So this is how it's going on. Can I? Yes, sir. Sir, thank you. Thank you, sir, Ambassador Haksar. You have done absolutely yeoman service in bringing so many Sanskrit classics for us to be able to read through translation. I'd like to shift your attention slightly from literature to language, the evolution itself of Sanskrit as a language. A lot of this literature, at the times that it was written, what is the purpose of literature? Is to try to disseminate among all sections of society so more people can read. But precisely because of the way this language evolved and because of the way that it was preserved, it was also knowledge of Sanskrit was access to power, and it was considered to be elite language. Now, when you have even movements like that of the Buddha took care not to preach in Sanskrit because he wanted to be understood by the common people. So there was that limited access to these great stories and literature at the time, but there was a corollary, and corollary was that there were great works done in other languages which were actually many of them did not see light of day precisely because they were not written in Sanskrit. They were not considered to be classic. A few were rescued, of course. I would like to have your take on this. I mean, today we have this tremendous, of course, preserve, and this question is perhaps a little irrelevant given this context of space and time today. But what would you think that if Sanskrit could have been accessed, could there have been a linguistic revolution and accessed by more people, would that have strengthened the literature and more people would have written in Sanskrit? That's what I want to ask. Thank you. Well, this is a question which has an answer to which, or a comment on which, has many historical implications, which I do not know whether I am in a position to comment on at all. But what I can tell you is that when people talk of Sanskrit, they tend to ignore another aspect of Sanskrit which is called Prakrit. There was language written for refined readers and language written for popular readers, popular speakers. And there is a lot of literature in Prakrit also. And some of the Prakrit literature has been translated, and a lot of it still remains to be brought out in public. I hope that some of it has been done, hope some more will be done. Buddhist literature originally
Everyone says it was written not in Sanskrit. It was written in Pali. Pali was also a form of Prakrit. Spoken language tended to have many ways. And eventually Buddhist literature came to be written in Orthodox Sanskrit also. It fell to me to translate some Buddhist literary works directly from original Sanskrit into English, and they were published not by Penguin but by HarperCollins. And they exist. And it's a book called the Jatak Mala. And it is a book which gives a historical account of all the incarnations which went through the existence of the Buddha spirit in India, right from the beginning to the time that this work was written. So you have works like that also. These are all existing works. And it's coming along. So this is how the point which I would like to make is that in Sanskrit literature, Prakrit literature, there is an enormous amount of work which is available but not accessible to present readers in the absence of translations. And it needs people to do translations. And if translations are done, more people will read, because English language today occupies a position which is in some ways similar to that of Sanskrit many centuries ago. I think there's another question. साथियों माफ कीजिए. Okay, one last question. So who asks that last question? Me? Yeah. Pranam sir, it's an absolute honor to listen to you, sir. So I'm right here in front of you. Sir. Shall I sit down? Please have a seat. Okay. Sir. बैठ जाओ? बैठ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल. No, I can stand up and talk. There's no problem. Okay. The reason why I'm standing up and talking is because it's easier for me to handle this mic than the others. Yeah. I will hold it. Yeah. No, so okay. Sir, my question to you is that since Sanskrit is often considered the language of the spiritual and the holy, but there are many texts, actual religious texts, which are rather playful and irreverent. Like in the Vaman Puran, there's a very beautiful shloka that describes Lord Vishnu as a thief. So the shloka is very beautiful. It says, Narayan nam naro naranam prasiddha chaurah katithah prithvyam अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुत मात्र एव. Narayan is a thief among many people on this earth, and he's a very unique thief because the moment you utter his name through your mouth and your ears listen to it, बरसों की पाप राशि वो चुरा लेते हैं. So he is essentially telling you to chant Vishnu's name, but in a very unique manner. Now, sir, I was discussing this with somebody. I'm a broadcaster with radio, All India Radio, and this lady was very, नहीं, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान के बारे में. So I just want to ask you that have you brought out some books on this kind of playful aspect of Sanskrit, because there are many such verses which are absolutely a clever play and which convey. So is there, because I really want that people should not be scared of Sanskrit. It's a very beautiful language, and they should, it should be embraced by people more than it is currently. Well, I don't remember many Sanskrit verses, but I am encouraged to recite to you one small verse which comes to mind after your very nice question. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Narayana is not only man, but also the best of men.
So there are different aspects to it. And Sanskrit verses, the Subhashita verses, well said verses, are so enormous in number that by looking at an anthology, you can get an idea of what they're all about. And many of them are couched in such simple language that it is easy to follow and understand. So, I've mentioned several anthologies which I've had the opportunity of studying and looking at and finding verses which could be of interest today. And there are many more. And I'm hoping that one of these days others will be interested to do the same, so that more of the Subhashitas of Sanskrit can be brought out in today's language before people in this country. I think we've run out of time. I'd once again like to thank Ambassador Haksar for what has been a fascinating conversation about Sanskrit, Sanskrit classics and translation. And I'd hand it over to Renu. So I sit down now? You may sit comfortably now. Come. Ab aaiye. Oh, yeah. Sit down there? Yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you, Madhav, for moderating the session. धन्यवाद एम्बेसडर हक्सर, हमें संस्कृत भाषा और साहित्य की विविधता के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद माधव का भी सत्र का चालन और सहयोग करने के लिए। अनुवाद के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सत्र है धीरज धरो कुछ बजेगा। इस सत्र के वक्ता एवं चालक हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, एक प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक। वे देवी शंकर अवस्थी सम्मान सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित है। ये सेशन स्पीकिंग टाइगर बुक्स के सहयोग से आयोजित किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रवि सिंह जी आएं और हमें सत्र के बारे में बताएं और वक्ता का परिचय भी करें। Thank you, Ambassador Haksar and Madhav Nayar, for that very engaging session. Next up, we have a session with Dr. Purushottam Agarwal with the intriguing title, Dheeraj Dharo, Kuch Bajega. Be patient, something will ring. The session is curated and supported by Ravi Singh of Speaking Tiger Books. May I request Ravi Singh to throw some light on this interesting title and introduce the session and Dr. Purushottam Agarwal. Ravi Singh is publisher and co-founder Speaking Tiger Books, an independent publishing company based in New Delhi. Thank you all for being here. To throw light on the subject, वो प्रकाश तो आप ही डालेंगे, तो मैं सिर्फ आपका थोड़ा सा परिचय दे दूं. You know, for me, the best thing about Purushottam ji is he's the best kind of teacher. So somebody who encourages you to think, but also would not hesitate to tell you कि तुम मूर्ख हो. तो लेकिन इनको सुनने में इतना मजा आता है. And I think that really is the best kind of teacher who can actually, who's the best kind of explainer and take you to many places where you would like to go, but don't perhaps have either the gumption or the intellectual, resources to go. Among his books that I've read and enjoyed hugely, there's this book on Kabir. Then he's done an anthology, a brilliant anthology on the writings of Nehru and about Nehru, the introductory essay to which is honestly one of the most brilliant essays that you can read about contemporary Indian reality and also about political reality. So
And the other thing which I find really wonderful about him is that he's able to speak about, with great clarity, insight, and I also think courage, about politics, about poetry, about the metaphysical world, और also जो आजकल की ज़िंदगी है 21st century उसके बारे में भी. So अब इससे ज़्यादा मैं आप क्या बोलूँ, आप आइए जी. और the session he's going to speak about, I mean not to give it too tight a framework, but there will be Kabir, Dadu, Jan Gopal, so 15th, 16th, 17th centuries के जो mystic saint poets हैं उनके बारे में, और intriguing title जो है उसके बारे में आप ही बताइए जी. Over to you. सबसे पहले तो मैं इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूं कि बैठकर बोलूंगा, मैं खड़ा नहीं रह सकता ज़्यादा देर, मेरे घुटनों में तकलीफ है. दूसरा ये कि बहुत आभारी हूं हैबिटेट सेंटर का, समन्वय का, अपने दोस्त रवि सिंह का और स्पीकिंग टाइगर का, कि आप लोगों से बात करने का मौका मुझे मिल रहा है. इस टॉक का जो इंट्रीगिंग टाइटल है, इसका क्रेडिट दादा सीताराम को जाता है. दादा सीताराम सन 1978 में लिंडा हेस को मिले थे बनारस में. लिंडा हेस ने, हम सब जानते हैं कि कबीर के बीजक के कुछ पदों का सुखदेव सिंह के साथ मिलकर, डॉक्टर सुखदेव सिंह के साथ मिलकर बहुत बढ़िया अनुवाद किया है. एंड शी हैज ऑल्सो रिटन कपल ऑफ एसेज, एंड वन essay she has written about the so called उलट बांसीज ऑफ कबीर, अपसाइड डाउन सेइंग्स. तो अगर आप कबीर को, आप में से किसी ने पढ़ा सुना हो, हालांकि आजकल कबीर काफी इन थिंग हैं, तो माना जा सकता है कि सभी ने सुना पढ़ा होगा. तो कबीर की कुछ रचनाएं एपेरेंटली बड़ी इलॉजिकल है, और कबीर ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उसको कहते हैं उलट बांसी. तो उलट बांसी का अर्थ बूझना थोड़ा मुश्किल है. तो लिंडा हेस, हिंदी उनकी मदर टंग नहीं है, पुरानी हिंदी वैसे भी मुश्किल हो जाती है, तो वो उसमें कोशिश कर रही थी उन चीजों का अर्थ समझने की, और इस सिलसिले में किसी ने उनसे कहा कि दादा सीताराम इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं. तो ये गई दादा सीताराम के पास. तो दादा सीताराम ने समझाते समझाते कहा, धीरज धरो, कुछ बजेगा, कुछ देर धीरज धरो, बजेगा, समथिंग विल रिंग. ये लिंडा ने अनुवाद किया है दादा सीताराम के वाक्य का, समथिंग विल रिंग, धीरज धरो. तो टाइटल वहीं से लिया गया है. जब हम किसी भी एक कल्चरल हेरिटेज का एक दूसरी जुबान में, बल्कि एक दूसरी कल्चर में ट्रांसलेशन करते हैं, तो धीरज धरना बहुत जरूरी है. ये बेहद जरूरी है धीरज धरना. क्योंकि क्या होता है कि कई शब्द ऐसे हैं जो केवल शब्द नहीं है, उनके पीछे ट्रेडिशन है, उनके अपने निवांसेस हैं, उनके अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. वैसे तो ये हर शब्द के साथ सच है. महाराज भरत रही में 8वीं सदी में बता गए वाक्य पदियम में कि कोश में केवल शब्द की परिभाषा होती है, अर्थ तो वाक्य में होता है. ये बिल्कुल सच बात है. अब जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन पुराने संसद भवन के बारे में आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का विरोध करते हुए सदस्यगण वेल में पहुंच गए. द मेंबर्स रीच टू द वेल ऑफ द हाउस. तो सदस्यों की सुविधा के लिए कोई कुआं नहीं खोद कर रखा गया है ना. वो अध्यक्ष के सामने जो खाली जगह होती है उसको वेल कहते हैं. संस्कृत में इसमें बड़ा मशहूर उदाहरण है, सैंधव. घर से निकलते समय आप कहें कि सैंधव ले आओ, और आपका नौकर लाके नमक दानी दे दे, क्योंकि सैंधव का एक अर्थ नमक भी होता है. आप उस समय घोड़ा मांग रहे हैं, नमक नहीं मांग रहे हैं. डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहें कि सैंधवम आने, और नौकर आपका लाके घोड़ा खड़ा कर दे, तो द वर्ड एक्वायर्स मीनिंग इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. सेकेंडली, शब्दों की जो अपनी ट्रेडिशन और स्पेसिफिक यूजेज किसी भी कल्चर में होते हैं. अब मैं एक शब्द का उदाहरण लूंगा, और 2 प्रसिद्ध अनुवादकों ने उस शब्द की क्या दुर्गति की है यह मैं आपके सामने रखूंगा.
रवि ने अभी मेरी तारीफ में एक बात कही कि मैं ये कह सकता हूं कि आप मूर्ख हैं। मैं इसलिए ये कह सकता हूं कि मैं अपनी मूर्खताओं से खुद वाकिफ हूं। इसलिए मैं ना तो ये मानता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि दुनिया में परम पिता परमात्मा के अलावा कोई ऐसा है जिससे मिलने का सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला है, जो सब कुछ जानता हो। तो हम सभी किसी ना किसी लेवल पर मूर्ख हैं और एक दूसरे की मूर्खता में बताते रहना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अब जैसे विनय धारवालकर ने अनुवाद किया है कबीर की कविताओं का। कबीर का एक बहुत मशहूर पद है, दुल्हन गावो मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भतार। दोस्तों, ब्राइड्स, प्लीज सिंग मंगल गीत, बिकॉज माई ग्रूम राम हैज अराइव्ड टू सी मी और टू टेक मी। बहुत सुंदर गीत है, बड़ा मार्मिक गीत है, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भतार। तो उसमें एक पंक्ति आती है, तन रति कर मन रति कर हो। अब रति शब्द हम लोग जानते हैं क्या है। रति का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। रति का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर का सेटिस्फैक्शन या उसकी फीलिंग। दूसरी ओर रक्त एक शब्द है, ब्लड, जो कई जगह रत करके भी लिखा जाता है और खास करके इन लोगों की जुबान में तो इस तरह के खेल जो हैं चलते ही रहते हैं। ये अनुवादक हैं विनय धारवालकर, जिन्होंने अनुवाद किया है कबीर की कविताओं का। तो पंक्ति है पद में, तन रत कर मन रति कर हो। वहां कहा यह जा रहा है कि आई विल नॉट अलाउ द सेक्सुअल प्लेजर टू बी कन्फाइंड टू माई बॉडी ओनली। I will immerse myself fully in that. In the act of making love, I will not be involved only through body but also through my mind, my totality. So tan rat kar man rati kar. तन की रति तो करूंगी ही, मन की भी रति करूंगी। अनुवादक महोदय ने उसका अनुवाद किया है, आई विल पेंट माई बॉडी ऑल रेड। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी प्रेम का उन्होंने कहां देख ली जो मिलन के समय में, लव मेकिंग के समय में अपने शरीर को लाल झंडा बनाने में रुचि रखती है। What kind of translation is this? आपने रक्त शब्द पढ़ा है कहीं? आपको यह पता है कि रक्त का रत भी हो जाता है। रत का एक मतलब इन्वॉल्व होना भी होता है। मैं अध्ययनरत हूं, मैं व्यस्त हूं, फलाने आदमी को निंदा में बड़ा आनंद आता है, हमेशा निंदारत रहता है, यह भी मतलब होता है। तो कॉन्टेक्स्ट से आप निकालेंगे ना। और महारत है भी नहीं, वह छोटी की मात्रा लगी हुई है पुरानी पांडुलिपियों में, लेकिन फिर भी आप उसे आई विल पेंट माई बॉडी रेड। कारण उसका यह है कि आप कबीर का अनुवाद कर रहे हैं और आप ये मानकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि कबीर का क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन से कोई लेना जाना है ही नहीं। यह माइथोलॉजी पिछले 20-25 साल में बहुत पॉपुलराइज की गई है और इसलिए ट्रांसलेशन का सवाल कुछ बड़े व्यापक महत्व के कल्चरल सवालों की ओर आपको ले जाता है। These people were interrogative, undoubtedly, but they were interrogative with some sense, some knowledge. They were not interrogative out of ignorance. It's very easy to be interrogative with ignorance, but it's very difficult to be interrogative with some knowledge. They were insiders, they were not outsiders. अब हमारी आपकी तरह नहीं थे कि मंत्र को मंत्रा कहें और वेद को वेदा कहें और काम को कामा और अशोक को अशोका कहें। दिल्ली में किसी ऑटो वाले से कहिए अशोक होटल चलना है तो उजबक की तरह मुंह देखता है आपका। These people were not of that time. So they knew कि रति का क्या अर्थ होता है। इसी में कविता की सारी खूबसूरती निहित है। तन रति कर मन रति करो, वहां हो गया कि आई विल पेंट माई बॉडी रेड। एनीवे, फिर एक और मजेदार शब्द है, एक पुराना संस्कृत में और तमाम सारी हिंदुस्तानी जुबानों में एक्सप्रेशन है ऋतु, ऋतुदान। ऋतु इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेक्सुअल डिजायर पर्टिकुलरली ऑफ अ वुमेन। तो जब आप ये कहते हैं कि ऋतुदान किया, जब कोई कहता है कि मैंने ऋतुदान किया, इट सिंपली मीन्स दैट आई फुलफिल्ड द सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ वुमेन। या वो स्त्री ऋतु में थी, आई मीन शी वाज इन हर फर्टाइल पीरियड, शी वाज इन पीरियड ऑफ सेक्सुअल डिजायर।
और कहावतें हैं कि अगर कोई स्त्री ऋतुदान मांगती है और उसका आप अपमान करते हैं, उसको ऋतुदान नहीं करते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं। तो ऋतु का अर्थ है सेक्सुअल डिजायर, पर्टिकुलरली ऑफ अ फर्टाइल वुमन। जन गोपाल दादू के शिष्य थे। दादू, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दादू दयाल, बहुत प्रसिद्ध संत। हालांकि वो उतने इन थिंग नहीं है जितने कबीर हैं आजकल, क्योंकि उनकी जुबान उतनी तीखी नहीं है जितनी कबीर की है। ही इज नॉट एज शार्प इन हिज अटैक्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वेरियस थिंग्स। तो वो उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दादू। जन गोपाल दादू के शिष्य थे, उनके साथ ही रहते थे, और उन्होंने दादू की जीवनी लिखी है 1620 में। जन गोपाल पर मेरी और डेविड लॉरेंजन की किताब रवि छाप रहे हैं। और जैसा मैं इनसे कह रहा था कि देर करने का, वक्त पे वादा पूरा ना करने का प्रिविलेज केवल लेखक को होता है, पब्लिशर को नहीं होता। इसलिए मैं रवि की यहां सार्वजनिक रूप से आलोचना करना चाहता हूं कि इन्होंने किताब अभी तक नहीं छापी है। यह और बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने प्रिविलेज का लाभ उठाते हुए मैंने महाभारत पर इनसे प्रॉमिस की हुई किताब पिछले 6 साल से नहीं दी। anyway, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है। मैं चाहूंगा कि जब भी किताब छपे आप लोग देखें उसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है जन गोपाल द्वारा लिखी गई, क्योंकि ये जाहिर है कि उसी हेजियोग्राफिक टेम्पलेट में लिखी गई है। उसमें मिरेकल्स भी हैं, उसमें तमाम तरह की सुपरनेचुरल चीजें भी हैं, बट एट द सेम टाइम अ वेरी एक्यूरेट सेंस ऑफ हिस्टोरिसिटी भी है। ये उस जमाने की अकेली किताब है जिसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर मेंशन्ड विद देयर डेट्स। कि दादू का निधन 1603 में हुआ, 1585 में दादू अकबर से मिले, फलाने समय में उनके पुत्र का जन्म हुआ, फलाने समय में उनकी मान सिंह से बहस हुई। He has given years. So it's a very interesting book that way. Jan Gopal had a rational bent of mind, obviously. That's why he had that kind of sense of historical chronology. So he had a rational bent of mind. तो सारे चमत्कार के बावजूद उनके मन में जो डाउट होते हैं कई बार, वो उस किताब में दादू जन्म लीला में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी तरह का एक डाउट है कि दादू की संतानें हुई। दादू के 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। तो पवित्र लोग तो आप जानते हैं कि सेक्स वेक्स करते नहीं है, तो वो कैसे हो गई संतानें? तो जन गोपाल के मन में डाउट है कि 4 संतानें हो कैसे गई। तो अब उसमें वो उस डाउट को व्यक्त कर रहे हैं एक पंक्ति में, के रुतिदान के मानस दृष्टि स्वामी हूं के उपजी सृष्टि। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट वेदर बाई ऋतुदान, दैट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ लव मेकिंग एंड प्रोक्रिएशन, और बाय सम मिरेकल के देखने भर से संतानें हो गई। होती हैं ऐसे मिरेकल, होते रहते हैं। मतलब कोई मछली किसी को देख लेती है तो संतान हो जाती है, कोई सिंगनी जो है किसी को, तो तरह तरह से संतानें होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से हो इन लोगों की दुनिया में। लेकिन जन गोपाल कुछ हमारे जैसे थे, हमारे काफी नजदीक पहुंच रहे थे वो। तो उन बेचारे को डाउट होता है कि यार ये संतान हो कैसे गई। तो वो डाउट है के रुतिदान के मानस दृष्टि स्वामी ही के उपजयी सृष्टि। विनांत कालवर्ट का अनुवाद है, उन्होंने अनुवाद किया है दादू जन्म लीला का। हाउ कम स्वामी चिल्ड्रन वर बॉर्न थ्रू गिफ्ट और इन ह्यूमन वे। व्हाट इज दिस? थ्रू गिफ्ट और ह्यूमन वे मतलब आप ये अनुवाद इसलिए कर पा रहे हैं कि आपने थोड़ा धीरज धर के ये जानने की कोशिश नहीं की या किसी से नहीं पूछा कि यहां रुतिदान का क्या मतलब। रुति शब्द किस शब्द को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है? ऋतु को। ऋतु का क्या मतलब होता है? किसी स्त्री के ऋतुकाल का क्या अर्थ होता है? किसी स्त्री की ऋतु कामना पूरी करने का अर्थ क्या होता है? ऋतुदान करने का क्या अर्थ होता है? ये सब आपने नहीं पूछा और इसलिए विचित्र अनुवाद कर दिया कि थ्रू गिफ्ट और इन ह्यूमन वे। यानी अगर आप सोचिए जरा इस पर, इसकी ध्वनि ये निकलती है कि या तो दादू ने वो 4 बच्चे गोद लिए थे। गिफ्ट का मतलब यही होगा ना कि आपने किसी और की संतानें गोद ले ली, किसी और की भाई की, बहन की, किसी की भी संतानें गोद ले ली, या ह्यूमन वे में हुई। द पॉइंट हाउएवर इज कि ह्यूमन वे में हुई या किसी मिरेकल से हुई, और वो मिरेकल क्या है? तो सवाल यह है कि ऋतुदान से संतानें हुई
कि किसी चमत्कार से, मानस दृष्टि से। इसी तरह इसी पुस्तक से एक और उदाहरण मैं देता हूं। समय कम है, मैं 2-3 उदाहरण देके बस 1-2 बातें और कहूंगा, उसके बाद समाप्त। इसी समय आता है, इसी किताब में जन्म लीला में आता है, इसी में जन्म लीला में आता है मिलियो बगौरो ले लो भाई, ले लो आई, छाड़ी लज्जा लोक बड़ाई, परमेश्वर को भलो मनावे, हिंदू तरक काहू ना भावे। ये जनगोपाल कह रहे हैं किसी के बारे में कि फला सज्जन आके दादू से मिले और उसके बाद लोक लज्जा और प्रशंसा निंदा की चिंता छोड़ करके दादू के भक्त हो गए, परमात्मा का ध्यान करने लगे, आदि आदि। हिंदू तुरक काहू ना भावे अनुवाद है और बड़ा एपरेंटली सही लगने वाला अनुवाद, लेकिन अगर आप हिंदी जुबान के नुआंसेस जानते हो तो एकदम गलत अनुवाद है। अनुवाद है हिंदू मुस्लिम बोथ डिसलाइक दिस। तो निर्गुण भक्तों के प्रसंग में ये बहुत नेचुरल है, आपको बड़ा नेचुरल लगता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें, उनकी बहुत सारी बातें ना हिंदुओं को पसंद थी ना मुसलमानों को। लेकिन अगर आप पंक्ति पढ़ें परमेश्वर को भलो मनावे, हिंदू तुरक काहू ना भावे। हिंदी में भाव शब्द का अर्थ केवल पसंद करना या नापसंद करना नहीं होता, भाव का अर्थ मानना भी होता है। अगर आप में से किसी ने अगर ओशो रजनीश को पढ़ा सुना हो, मैं उदाहरण और भी दे सकता हूं लेकिन जानबूझ कर समकालीन उदाहरण दे रहा हूं, और मैंने अपने बचपन में ओशो रजनीश को बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं रही। लेकिन ये मैं किसी रजनीश के किसी भक्त की भावनाएं नहीं याद करना चाहता, लेकिन ओशो को मैंने बहुत पढ़ा सुना है बचपन में। उनके एक एक्सप्रेशन बड़ा टिपिकल है और बहुत सहज एक्सप्रेशन है, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ओशो मध्य प्रदेश के थे, महाकौशल के। ऐसा भाव करो, आंखें मूंद करके ध्यान में बैठ जाओ और ऐसा भाव करो कि तुम्हारे आसपास प्रकाश है। ऐसा भाव करो। तो भाव करने का एक और ज्यादा गहरा अर्थ होता है मानना, किसी चीज को एक तरह से इमेजिन करना या किसी चीज को स्वीकार करना, भाव करने का। यहां मतलब असल में यह है कि ये जो सज्जन है, जो दादू के प्रभाव में आकर के परमेश्वर का भला करने लगे, परमेश्वर को भलो मनाने लगे, मतलब परमेश्वर का ध्यान करने लगे, उन्होंने हिंदू तुरक के बीच में भेदभाव करना बंद कर दिया। भाव शब्द के साथ भेद जुड़ता है, ये आप सब जानते हैं। भेदभाव, समभाव, बंधु भाव। भाव का अर्थ डिसलाइक यहां दूर दूर तक नहीं, यहां अर्थ सीधा है हिंदू तुरक काहू ना भावे। वो हिंदू और तुर्क को कुछ नहीं मानते थे, वो सबको एक सा मानते थे, हिंदू और तुर्क के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। यहां कहा यह जाए, और अनुवाद मैंने आपको बताया कि क्या किया गया है। दिक्कत यह है कि हम ये भूल जाते हैं। देखिए, एक तो ये कि बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं। दूसरा जाहिर है कि बहुत सी चीजें यूनिवर्सल हैं। जैसा चॉम्स्की बहुत विस्तार से और बहुत कन्विंसिंगली वर्षों पहले आर्ग्यू कर चुके हैं कि अगर यूनिवर्सल मैकेनिज्म ऑफ कॉग्निशन ना होता तो वेरी एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। द वेरी एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज अ ग्रेट प्रूफ ऑफ सर्टेन यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, वरना ट्रांसलेशन संभव ही नहीं था। लेकिन उसके साथ कुछ पर्टिकुलर्स हैं, और उन पर्टिकुलर्स का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो ट्रांसलेशन कंफ्यूजिंग होगा, कई बार डिजास्ट्रस होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं एक अपने सीखने के लिहाज से कि मुझे तो इतनी अच्छी अंग्रेजी आती नहीं है कि मैं ट्रांसलेशन का दावा कर सकूं, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल की तरह थोड़ी बहुत तो आती है। तो मैं करता हूं कभी कभार ट्रांसलेशन अपने ज्यादा जानकार दोस्तों की मदद से। और मैंने ये रियलाइज किया कि चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी में। मैं अभी जेरी पिंटू से कह रहा था कि कोई नावल है या कुछ है, मैं ट्रांसलेशन करने बैठा हिंदी में, उसमें शब्द आया होली ग्रेल, और मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर दूं पवित्र प्याला। क्या मतलब होगा इसका? पवित्र प्याला बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मतलब होगा होली ग्रेल को हिंदी में पवित्र प्याला लिखने का? तो या तो कोई शब्द मैं खोजूंगा धीरज धर के, और अगर रवि सिंह जैसा प्रकाशक पीछे पड़ा होगा तो होली ग्रेल को फुटनोट में एक्सप्लेन करूंगा कि होली ग्रेल से क्या मतलब है, उसका क्या कल्चरल कनोटेशन है, क्या उसका हिस्टोरिकल कनोटेशन है। तो अनुवाद में
इस तरह का धीरज बहुत जरूरी हो जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग अ वर्क from one particular cultural tradition which has its own legacy of meanings, which has its own nuances, limitations and achievements to another culture. और इसी अर्थ में जो पुरानी कहावत है कि ट्रांसलेटर इज एन आर्टिस्ट ऑन ओथ, तो मैं कहता हूं कि इट्स एन ओथ विच वर्क्स बोथ वेज। ये एक ऐसी शपथ है वफादारी की जिसमें जो आपकी सोर्स लैंग्वेज है उसके प्रति भी आपको वफादार रहना है और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके प्रति भी वफादार रहना है। तो ये दोहरी वफादारी अगर आप नहीं निभा सकते तो बेहतर ये है कि आप अनुवाद ना करें। थैंक यू। So, like 5 minutes. So, if there are any questions, maybe about 3 questions. Ji, sir. एक माइक को हो। थे। मैं आपसे कर रहा था कि इसके पहले वाला सत्र जो था वो भी संस्कृत और क्लासिक से रिलेटेड था। मेरा सवाल ये है कि हम क्या अनुवाद करें, ये क्या इसके लिए निर्णायक चीज होती है जो आज के जमाने में पाठक, जैसे आपने कहा कबीर इन थिंग है, दादू उतनी इन थिंग नहीं है, उसके कारण भी आपने बतलाए। तो कबीर को अनुवाद करना प्रकाशक के लिए भी लाभप्रद है, कबीर के बारे में जिन्होंने लिखा वो भी लाभप्रद है, और दुकान चलती रहेगी, वो सब ठीक है। मगर यदि आप उसके पहले वाले सत्र में क्लासिक्स था, तो मेरा सवाल बिना पूछे रह गया था। मैं पूछना ये चाहता था कि क्लासिक्स जो कैनन है ये कौन निर्धारित करता है कि बड़ा क्लासिक है, आज वो कबीर क्लासिक की श्रेणी में है या कालिदास क्लासिक की श्रेणी में है। भर्तृहरि क्लासिक्स की उस हायरार्की में नहीं है। कालिदास की सारी रचनाएं, वो रघुवंश हो सकता है, वो शाकुंतल हो सकती है, वो संहार हो सकता है, मगर सब एक भाव नहीं है। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब आप चुनते हैं अनुवाद के लिए तो अपनी सामर्थ्य दोनों भाषाओं के प्रति शब्द ठीक है, प्रकाशक भी जो चुनता है कि ये अनुवाद मुझे पाठकों को रास आएगा, तो ज़माने की चाल के अनुसार चुना जाएगा या जो एक हायरार्की स्थापित है कि ये किताबें अनुवाद लायक है? पुष्पा जी, इससे आपके सवाल से मुझे एक बहुत रोचक प्रसंग याद आता है। वर्षों पहले, आई थिंक 25-30 साल हो गए, पियरे बोर्दियो ने एक लेक्चर दिया था पेरिस में। मैं फ्रेंच तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद किसी ने मुझे उपलब्ध कराया उसका, और उस लेक्चर का शीर्षक था टू द रियल मास्टर्स ऑफ वर्ल्ड। और वो लेक्चर दिया गया था मीडिया वालों के बीच में, मीडिया मालिकों और मीडिया कर्मियों के बीच में, और जाहिर है कि रियल मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड उनको कहा गया था। वो लेख मुझे इतना महत्वपूर्ण और रोचक लगा कि मैंने उसका जनसत्ता के लिए अनुवाद किया, और वो छपा अनुवाद जनसत्ता में, अंग्रेजी से अनुवाद किया मैंने। उस लेख की एक बात मुझे आपकी बात सुन के याद आ रही है। उस लेख में उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप पॉपुलर सिनेमा दिखाइए, अपने चैनल्स पर पॉपुलर सब कुछ दिखाइए, लेकिन आप सत्यजीत राय को भी, नाम लेकर उन्होंने कहा था कि आप सत्यजीत राय को भी दिखाइए, क्योंकि कोई भी जो कला है या कला को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, वो एक रीडर इन फ्यूचर के लिए भी होता है, ऑडियंस इन फ्यूचर के लिए भी, इनविजिबल ऑडियंस के लिए भी होता है। और संस्कृत में बहुत मशहूर है इस पर भवभूति का, उत्पत्ति थे कवि कोपि मम समान धर्मा निरवधि काला विपुला च पृथ्वी। तो अगर मैं अनुवाद करूंगा तो मैं केवल बाजार की मांग के मुताबिक नहीं करूंगा। Frankly speaking, no one is bothered about Jan Gopal. Not many people even have heard of him. But this was my and David's decision that because of his quasi-rational mindset, in which he is doubting many things which were taken for granted in his time, because of his sense of chronology, Dadu met Akbar in 1585 Common Era. Dadu passed away in 1603 Common Era. He gives dates. So we thought that Jan Gopal is a very interesting figure, particularly to underline the fact that this was not medieval dark period of Indian history. This was the period of vernacular modernity in India. So that's why I chose to
वर्क ऑन जन गोपाल। माय चॉइसेस आर दैट वे। अब बाकी जिनका जो है वो कोई और सवाल हो नहीं तो जेरी, was that whistle a question or appreciation? अच्छा, oh yeah, okay, please. बहुत सुंदर पंक्ति है निराला जी की, नयनों से नयनों का गोपन प्रिय संभाषण, यानी बिना बोले आंखों आंखों में बात हो गई। हजारों फिल्मी गाने भी हैं इस पर, तो उसको थोड़ा सा यहाँ बदलें तो जो जेरी ने किया और जो मैंने सुना उसको यूं कहेंगे कि सीटी का कानों से गोपन प्रिय संभाषण। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्यन है, मैं दयाल सिंह कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर मेरा ये प्रश्न है कि अभी हमने अनुवाद की बात करी, लेकिन ऐसे कई लेखक हैं, जैसे आपके बड़े प्रिय मित्र हैं देवदत्त पटनायक जी, उन्होंने कई मैथोलॉजिकल रचनाओं के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं, बेहद उम्दा लिखे हैं, पर उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पे कहा भी है कि मैं संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता हूँ। तो अनुवाद और भाष्य के बीच में ये जो लैंग्वेज की एक दीवार सी है, इसमें जिस सोर्स से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका ज्ञान होना कितना आवश्यक भाष्य लिखने के लिए आप देखते हैं, आप इसमें क्या समझते हैं? देवदत्त अगर ये दावा करें कि वो गीता का अनुवाद कर रहे हैं और फिर ये कहें कि वो संस्कृत नहीं जानते तो गलत होगा। लेकिन अगर वो गीता को उड़िया, हिंदी या अंग्रेजी में पढ़कर गीता पर अपने रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं केवल एक भाषा ठीक से जानता हूं और वो है हिंदी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, उससे थोड़ी कम बांग्ला जानता हूं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं हो सकता, अब जैसे जो आपने सवाल पूछा, पियरे बोर्दियो की फ्रेंच तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनके एक लेख का मैंने अनुवाद किया, अंग्रेजी से किया। लेकिन पियरो बोर्दियो के फ्रेंच में लिखे गए अंग्रेजी में अनुदित कामों के आधार पर अगर मैं उन पर रिफ्लेक्ट करूं, उन पर विचार करूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सब यही करते हैं। हम जब रिसर्च करते हैं, आगे चल के आप भी अगर रिसर्च करेंगे, अगर सिविल सर्विस एस्पिरेंट में शामिल ना हो गए तो अगर आगे चल के आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी विषय पे आप काम कर रहे हो, हर सोर्स आप मूल भाषा में नहीं पढ़ सकते, अनुवाद तो पढ़ना ही पड़ेंगे। तो देवदत्त पटनायक कुछ गलत नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। ही नेवर क्लेम्स दैट ही इज ट्रांसलेटिंग, ही इज इंटरप्रेटिंग, ही इज गिविंग हिज ओन he is sharing his own way of looking at things. There is no problem with that. Thank you, Dr. Purushottam Agarwalji, for such an interesting session. I now invite Ravi Singh again on stage to introduce our next session and our speakers. The session is called Translating Bhakti. And Jerry, I am sorry, एक तो मुझे सीटी बजाना नहीं आता, दूसरे मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे सेशन में ना सीटी बजा पाऊंगा ना ताली। इस सत्र का नाम है ट्रांसलेटिंग भक्ति। ये स्पीकिंग टाइगर बुक्स के सहयोग द्वारा आयोजित है। हमारे वक्ता हैं जेरी पिंटो, डॉक्टर रीटा कोठारी और संचित तूर। मैं उनके बारे में एक संक्षेप में परिचय दूंगी। जेरी पिंटो एक कवि, लेखक और अनुवादक है। उनके बहुचर्चित और बहुप्रसिद्ध कार्यों में से एक है दया पवार की क्लासिक ऑटोबायोग्राफी बलूता, जिसका उन्होंने मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जेरी पिंटो के अन्य कृतियां हैं फिक्शन में मर्डर इन माहिम, एम एंड द बिग होम, जिसे हिंदू प्राइज और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड दिया गया था। नॉन फिक्शन में उनकी बुक हेलेन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब को नेशनल अवार्ड दिया गया था।
डॉक्टर रीटा कोठारी एक बहुभाषी विद्वान और अनुवादक हैं जिनका काम साहित्य, सांस्कृतिक अध्ययन, मानव विज्ञान, समाज शास्त्र और इतिहास जैसे विभिन्न विषयों तक फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग, गुजरात, कच्छ और सिंध के क्षेत्रों और समुदायों के अवलोकन से जुड़े प्रश्नों पर वे काम करती हैं। संचित तूर अशोक सेंटर फॉर ट्रांसलेशन से जुड़े हैं, जो भाषा, मौखिकता, धर्म, अनुवाद और प्रदर्शन के सवालों में रुचि रखते हैं। साथ ही वे पंजाबी और ब्रिज जैसी भाषाओं के साथ काम करते हैं। स्वागत है। Thank you. Very quickly, so this session, translating, the idea was not just to speak on the translation of words, but also sensibilities of ideas, cultures, जो पुरुषोत्तम जी पहले बात भी कर रहे थे उस बारे में. And Jerry, of course, a very, very dear friend. I think I owe my publishing career also largely to him. And apart from his fantastic novels and this great book, which hopefully tomorrow I think is the session on cinema, which will talk about the book on Helen. But as a translator, he's done phenomenal work, and he's translated from Marathi, from Hindi also, Swadesh Deepak's memoir, Maine Mandu Nahi Dekha, that was his most recent translation. And the ones that I think are most relevant to this session are his translations. The first one with Shanta Gokhale, Behold the Word is God, which is on the work of Tukaram. And the other one with Neela Bhagwat on the Marathi saint poets, women Marathi saint poets, Janabai, Muktabai, etc. It's called The Ant Who Swallowed the Sun. So he'll be speaking about the act of translation. Rita, whom it's been a very, very long time since we last spoke and met, author and translator, and she's also written on partition, but the translation specifically from Gujarati and also Sindhi. And she teaches as well. And it's wonderful, Sanchit, that you agreed to moderate this session. So over to you. Hello. Thank you, Ravi. Professor Agrawal was speaking before us, and he already was questioning us about the figure of the translator, जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं. But I hope that the two of you will be patient, कि आप दोनों धीरज धरोगे as we go through this conversation. We're going to talk about bhakti, more specifically translating bhakti. And it's a wide-spanning movement which we won't try to cover, but we will make it a bit specific by focusing on Professor Kothari and Jerry's translations from Gujarati, Sindhi and Marathi. Bhakti has been defined by scholars as a storm of songs, a quotidian revolution, as well as Professor Agrawal was also talking about it, a period of vernacular modernity, as well as India's religion of the heart. Today, I would be quite keen to know from both of them, not about bhakti, but about bringing bhakti to a different time, to a different language, and focusing on their role as mediators who are engaged in this business of translating the world of bhakti from the time of the saints to ours. I think I'll just quickly start with a verse from a Shabad that a dear friend of mine sent to me in the morning. It's a Shabad by the fifth Guru, Guru Arjan Dev Ji. And it goes, Jim Jim varse amrit tara, man pive sune sabad bichara. That slowly and slowly the stream of nectar flows. And the mind, the heart, dwells on it, dwells on the Shabad to attend to it. So, Professor Kothari, if I could come to you, I'd first like to know about your coming to the words of these saint poets, or about their words coming to you. I know we are going to talk specifically today about one Akho Bhagat from Gujarati, and secondly about Shah Sahib from Sindhi. Working? Hello? Oh, it is actually. I
and I thought I'll just turn to Jerry since he's the. So I think I want to go back. I also want to go back in my response, Sanchit, to Professor Agrawal's talk, and especially to the word धीरज. और आई थिंक जो धीरज के रिश्ते होते हैं उसमें ये तय करना मुश्किल है कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं. आई थिंक शाह अब्दुल लतीफ़ जो सिंध के काफ़ी जाने माने सूफ़ी शायर हैं, कवि हैं, संत हैं, उनकी ओर उनके साथ जो मेरा रिश्ता बंधने लगा वो एक ये नहीं है कि मुझे वो प्रोजेक्ट करना है. इनफैक्ट आई हैव बीन एक्चुअली पुटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ फरीद अयाज सेइंग टू शबनम कि इसको प्रोजेक्ट की तरह मत देखो. एंड आई फेल्ट दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू अप्रोच विद अ लॉट ऑफ पेशेंस. और मुझे वो उस तरह की साधना, उस तरह की श्रद्धा के साथ जाना था. हालांकि शाह अब्दुल लतीफ़, although I am a Sindhi and I grew up in a post partition family, लेकिन हमारे परिवारों में शाह अब्दुल लतीफ़ की इतनी बात नहीं हुई थी. What did happen is that कई बार there would be these metaphors. For instance, there was a metaphor of मलीर. मलीर वो जगह है जो उमर मारवी की कहानी है, और उमर जो है उमरकोट के राजा हैं, वो मारवी को उठा के ले जाते हैं. And then Maruvi is constantly longing to go back to Malir. And this Malir is the place she came from. So very often the post-partition Sindhis would use that metaphor saying, Hamara Malir kahan gaya? So sometimes it was things like these, references of this nature, or sometimes someone would say the word Piri. Now Piri is so Sindhi. Shah Abdul Latif talks about his Pritam, his lover, the beloved as Piri. Piri pere par आई मिठाई काने कड़ाई चखी जो चेत करे. जो पिरी से मिठाई आई है वो कड़वी नहीं हो सकती, अगर तुम उस चेतना से खाओगे तो वो मीठी ही होगी. So sometimes these words began to fall on my ears and nobody mentioned Shah Abdul Latif. So I think जीवन के कुछ सिंधी होने के बुनियादी सवाल पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते मैं शाह अब्दुल लतीफ़ की ओर गई. But unlike many other people here and Jerry, I have not actually sat down to publish any of this. I am for the first time thinking of doing them in Hindi because I feel Shah Abdul Latif की जो his alliteration जो है वो मैं अंग्रेजी में नहीं रख पाऊंगी, और कई बार आई थिंक उनके उससे उनके जो मर्म निकलते हैं वो मर्म बहुत बदल जाते हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी के कई अनुवाद हो चुके हैं. सो रियली स्पीकिंग मेरा एक धीरज वाला रिश्ता बन रहा है और वो पूरा नहीं हुआ. वो उसकी मंजिल कहाँ है वो भी मैं नहीं जानती, बट दिस इज व्हाट इट इज. Thank you for your response, Professor Kothari, and we will certainly come back to the question of language. Jerry, if I could come to you, because I read from your translator's note as well. You speak about how you actually came across the words of the saint poets from the Warkari tradition in Marathi. Their abhangs you came across in school, but it was not at first that you were able to treat them as a poem. Treating it as a poem and subsequently as a poem that can be translated or that can have a parallel poem come into being in English happened later. So if you could share about your journey as well. Quite rightly, Sanchit has pointed out that in my introduction, I said that we learnt Tukaram in school, in the 8th standard, and we did not treat poetry as poetry. We treated poetry as a witness that had to be prosecuted and had to be tormented and had to be made to tell us what it meant in simple language for 4 marks in the exam. That was all it mattered. All education proceeded this way. We learnt the valency of calcium. We had no idea what it meant. We went out, we learnt to dissect a datura flower. We had never seen a datura flower out in the world. All knowledge was in silos, and those silos yielded marks at the end, and you went through school accumulating marks. It sounds like a terrifying place for any bhakti.
any attempt to understand something large, something, I think the beautiful thing that the monk says to the emperor about religion, about Buddhism, something vast, nothing sacred. Okay? Just terrifying and brilliant, but this we would have hammered into sentences and put them down in examination papers. But many years later, Tukaram just kept surfacing because I had learnt those lines by heart, and they kept coming back to me. But the starting of the bhakti moment was completely strange. I was in a gym on a treadmill next to Neela Bhagwat. And you know, if you have been to a Rathad gym, the kind that we have in Mahim, then the music, the soundtrack is din chaka din chaka din chaka din chaka din chaka, because they want you to go faster and faster, doing something faster and faster, the exact opposite of Dheeraj. Okay? So at that day the sound system had failed and there was silence in the gym, and I turned to Neela and said, "Kuch gaiye na Neela." Now if it had been somebody else, another classical musician, I would never have dared. But this was Neela, who has been a socialist and who will sing anywhere and who believes that, you know, music is for everyone, and if you can speak, you can sing. So she began to sing, and she began to sing Mungi Udali Akash. And I have no idea what happened. I was listening to it, and the great thing about classical music, right, is that they don't sing the line once. They sing the line again and again. And now with Mungi Udali Akashi, the idea is an ant flew into the sky and she swallowed the sun. And you're thinking, how could an ant swallow the sun? Could it possibly be like, you know, there's a little girl kneeling on the ground and finding a small black ant and picking it up, closing one eye and covering the sun, so that the head of the ant has swallowed the morning sun? Or could it be, this is what God feels like? When you swallow the sun, gold and lava melts down inside you. Your inside is now a volcano of feeling. What could this be? And of course, eventually this had to come to an end. She had to stop singing. And I said to her, "Neela, I want to read these. I want to read these poems. And of course I'm lazy. I want to read them in English." Right? And she said, "No one's translated them." And I said, "Let's do it. Let's do it together." Again, this was around the time that there were walls coming up around religion. People were saying, "This is my religion." Yeah, how is it your religion? You got born into a family. You inherited that religion. Most of us didn't choose it. How is it yours? How do you stop other people from having an opinion or an idea? Right? And here's the thing. What of your religion do you know that you did not get in translation? My own example, I won't go to Hinduism, but the God of my understanding, the God of my childhood, Jesus Christ, speaks not even in Hebrew. He speaks in Aramaic. But his words come to us in demotic Greek, because his followers want to spread the word. They want everyone to know this stuff, this great revolutionary stuff this guy's talking about. Please listen, they're saying, please, please listen. And so they won't use Aramaic because that's a very small language, so they're using Demotic Greek, bad Demotic Greek. They're translating badly. They're writing bad language, bad Greek. But it's urgent. It's fire. They've got to tell you this. And this is translated several times over until suddenly my mother is telling me about Jesus in Bombay, across the sea, and I'm learning in translation. These are facts. We learn most of what we know in translation. That is what gives you courage. That is what makes you say, okay,
I'm an outsider to this tradition, but I'm an insider in the heart. I'm an insider because I know what it feels like, or I want to know what it feels like when an ant flies into the sky and tries to swallow the sun. Because that is as powerful and as magnificent and as big an act as translation ever is. I want to swallow your language. I want to swallow your culture. I want it all. And then I must squeeze it and compress it somewhere and produce a translation. Thank you, Jerry. Yesterday when I was in conversation with them, I sent them a few things that I was interested in, and one question I've been interested in is, where does the force of bhakti lie? And I think what Jerry demonstrated to us is that the force of bhakti lies in the body. And certainly it was the body, the ghat, as Kabir says again and again, where these ideas and these poems were produced. I want to come back to both of you, but this time actually to talk about the poet in Saint Poet. The poetry that we are dealing with here in the stream of bhakti doesn't just move people because of the big ideas it carries, but it also moves people by coming to them in their own tongue, in their own register, but by also deploying that register in such a mixed variety that we are not able to escape its force. And translation as a result becomes one medium of sort of getting that tension out of your body. You've encountered a poem and you're like, what do I do with it? How do I understand it? And then you're like, wait, I think I must translate it so that I'm able to attend to the force of this poem. So I want to come to both of you and also invite you actually to read from your translations. I would request if you read the source text as well, and if you could read about 2 translations each, and also actually speak about the poet in the saints that you're talking about. You know, Shah Abdul Latif is a very embedded presence in the entire western region. Kutch, Rajasthan, like western Rajasthan, parts of Kutch, Sindh, and so on. And one doesn't think of so much of the man himself as you think of the stories he told, right? So, in like the far end, the villages near the Indo-Pak border where I did some ethnographic work in the region of Banni, if you had someone campaigning for BJP, someone campaigning for Congress, someone not having a child, someone who has not been able to sell cattle because these are cattle breeders in that region, there was always a Shah Abdul Latif verse that they could quote from the Risalo, right? And you had all these Maldhari, Sunni, Muslim tribes, you know, the Sumas, the Sumras, Mutwa, Halepota, Raisipota, very, very different Muslim demography from the Muslim communities that I would encounter in Vadodara and Ahmedabad and so on, right? And the stories of like Sasui Punu, when Sasui is, marries Punu, Punu is a Jat, and Sasui is the daughter of a Brahmin, and Punu's brother takes Punu away at night, Sasui goes looking for him. The idea that search or quest or looking for somebody acquires such an intensity in Shah Abdul Latif that in some sense people were constantly quoting to describe different kinds of unattainable quest. कि ससुई यूं चली जाती, किंजर के पहाड़ों में चली जाती, हिंगलज चली जाती. And this idea that, so really speaking, Sanchit, I don't think actually so much of the Sant poet. In fact, I would be able to tell you very little about Shah Abdul Latif himself. But I would be able to tell you what those stories mean. I would be able to tell you when they become so bloody poignant that you can sit there and cry and think like, what does translation even mean?
Actually, what it really means is an intimacy. This is for me a way to establish that intimacy, to claim something of a very fragmented heritage that the Sindhis came with, but knowing fully well that that fragmentation will continue. But I think, so I started looking at the different dastans of Shah Abdul Latif, and every dastan is actually meant to be a sur. It's meant to be sung at a particular point of the, it's a highly philosophical. It's also very Quranic. So I'm reading the Quran to be able to understand, especially the first two dastans, which are very, very rooted. They begin like the Quran. Somewhere they become like Rumi's Masnavi. At other point it becomes like 7 love stories about 7 wonderful heroines who don't manage to find their lovers. So it's just a lot of things. And so my immersion is actually not so much in the man himself. The man has become a sign of some kind in my head, but my immersion is actually in these various stories and so on. And maybe I will read out, after Jerry has spoken, I will read out some verses from the dastans that I have translated. Yeah? Yeah? Acha, theek. Okay. So, you know, there are quite a few English translations. This is my attempt at Hindi. But this is how Shah Abdul Latif, Shah Jo Risalo, which is a stunning text, this is how it begins. Aval Allah Alim Ala Alam Jo Dhani, Kadir Penji Kudrat Sa Kayam Ahe Kadeem, Wali Wahid Wahda Razik Rab Rahim, So Sara Sacho Dhani, Che Hamd Hakim, Kar Pan Kareem, Jodu Jod Jahan Ji. Remember I mentioned to you the alliteration. This is the Hindi one. Aval Allah Alim Ala Alam Ka Badshah, Kadir Apni Kudrat Se Kayam Hai Kadeem, Wali Wahid Wahda Razik Rab Rahim, Sarhaniya Sirf Wahi, Samajdar और ज्ञानी अपनी कृपा से वो जोड़ता जहान को. Then there are very clearly Quranic references and so on, and it's very interesting. The biggest scholarship of Shah Abdul Latif have been Hindus in these, and it's quite interesting. They have, this is mostly before partition and some scholars after partition. But what they did not tell people like us is that how much Quranic it was, and somehow the footnotes don't say that. It is only when I actually began to work on it. For instance, Wahada la sharik lah jin uton se iman, tin manyo Muhammad karani kalab saan lisan, e faik mein farman avtadi kahi na oliya. And this is from the Quran, the la sharik lahu. जिन्होंने ईमान से कहा वहदत लशरीक लह, वो एक है दूजा न कोई, माना मोहम्मद को जो सबब इस सृष्टि का, बड़ी उनकी गरिमा गुमराह न हुए कभी. This is the tone of the earlier parts. And then I began to think that I need to actually, if I'm quoting some lines which he's quoting from the Quran, then I can't actually take English Quran and then translate that into Hindi. So then I started looking for a Hindi Quran, a Sugam Hindi Quran, from which I could take the original lines. So that is what I'm doing. But I think I'll just come to maybe 1 or 2 small ones, which are actually my favorite. Padaro so sad vari, vaiya je lahi, hua agai gad buddhana mein bathiya. जो गूंज है वही उक्ति है, समझो उस बोल का रहस्य, थे साथ हमेशा से सुनने में बोल बिछड़े. So the echo and the call are the same. They become separate in the act of hearing them. I think I should stop here and go over to you. What we know of the poet saints, we know only through hagiographies that were written several hundred years later. We know to mistrust hagiographies, and we know to trust
that there is a basic and fundamental truth about all stories. If the story sort of settles into your heart, then you know that the story is true, even if it is historically false. Muktabai's story starts with her parents. It's a long and beautiful story. Corner me somewhere and I'll tell it to you, but we don't have time for so much detail. I just want you to, can we try something instead of if me just reading these things, can we do it together? I'll read a line, you have to read it after me. Will you do that? Come on, yeah, loudly. The bhakti does not require you to be half-hearted. Will you do that? Will you do that? Okay, that's better. Okay, we are doing one called Sukhache Shevti Dukh Ale Bheti. Sukhache Shevti Dukh Ale Bheti. Delhi, you can do better. Sukhache Shevti Dukh Ale Bheti. Lovely. भेटलियासाठी तेही नुरे, भेटलियासाठी तेही नुरे. सुख ते कवना, दुख ते कवना. ते कवना. देही अज्ञान करी पारे. देही अज्ञान करी पारे. मुक्ताई मणे चांग्याचे. मुक्ताई मणे चांग्याचे. स्वयंभू चैलावटेश्वरी. वाह! Give yourself a big hand. Lovely. First, this my translation is called Joy and Sorrow. First came joy, and on the morrow, hard on her heels, a visit from sorrow. Just as we settled down to grieving, sorrow announced that she was leaving. Joy and sorrow, what's the difference? Both are sisters, born of ignorance. Muktai tells Sangya, self-born the soul, standing like a banyan, erect and whole. There you go. I accept the applause for Muktabai. Thank you, Professor Kothari and Jerry. I am, of course, because my main point of reference in Bhakti is Kabir, and whichever saint poet I go to, every single time I find a familiar word, a familiar phrase, I'm like, wait, Kabir is also saying that. So it happens often when, say, I'm accessing Namdev from the Guru Granth Sahib, and particularly this one, that's my very recent favorite, Tu Kun Re, Maiji Nama. This is how it starts. So there also a phrase, it repeats as it is, as it does in Kabir. Similarly, when I was listening to Professor Kothari read the opening composition from the Risalo, which starts with Aval Allah, similarly we have another one of Kabir's which starts with Aval Allah Noor Upaya Kudrat De Sab Bande. But I want to actually come back to one thing that I think is certainly the central emphasis of Bhakti, but at the same time also the emphasis of the business of translation, the idea of the Shabad, the idea of the word. Kabir, of course, is talking about Shabad, about asking us to be Shabad Viveki. We get from the Guru Granth Sahib, Shabde Dharti, Shabd Akash, Shabdi Shabad Bhaya Pargas. And similarly, from your recent translation, Jerry, which is titled, Behold, the word is good. We have Tukaram saying, Tukam Hane Paha, Shabdatsi, Hadeva, Shabdetsi Gaurava Puja Karu. So this idea of the word being God, the word must be praised. The word is Dharti, the word is Akash, and the word is the one that permeates, I find, one that I am occupied with,
particularly for the reason that I think this is where the force of bhakti lies. But at the same time is the question of the publics that come to be developed around bhakti. They could be publics comprising just communities of translators. They could be publics that have fashioned themselves on the words or the afterlives of these saint poets. And it is in that vein that I want to come to both of you with one question each. I was actually also, as I was thinking about translating bhakti, reminded of this one segment from Professor Kothari's other recent book, Uneasy Translations, in which he talks about this one figure, this one person, Bhawan Bhagat, Bhawan Kaka, from one of the first Gujarati novels she translated, Angaliyat. And I want to come to you, Professor Kothari, to actually hear more about the figure of Bhawan Bhagat, particularly because it is here where you think that the business of translation has somewhat failed you, that this experience of understanding Bhawan Bhagat's bhakti has somewhat become uneasy, has somewhat failed to be carried over. So if you could just speak a bit about Bhawan Bhagat. So Bhawan Bhagat is an old man, belongs to the Vankar community, as in the weaver community of Gujarat. And in this very amazing novel called Angadiyat, which I translate as Stepchild, and it is arguably the first Dalit novel in this country actually, by Joseph Makwan. In that particular community, Bhawan Bhagat is someone that everyone goes to for matters which have to do with this world or that world. You know that Bhawan Bhagat will find you a girl. You also know that Bhawan Bhagat will make you renounce the world. And he's that kind of a character. He's present for everyone, but any day he will take his sarangi and he'll just go away for months and months or years and not be there. But Bhawan Bhagat is also an extremely interesting politicized Dalit. Although these are not words that you use at the time that the novel is written, but Bhawan Bhagat responds to humiliation of his community by saying, this is not the time I want to be giving you pravachan. Forget all that. Where is your anger? What kind of people are you? Why aren't you angry? Where is your rage? Right? So Bhawan Bhagat does not fit into any of the categories we come with, either of being political or of being spiritual and so on. And Bhawan Bhagat's day begins by singing, and it's like some mornings we know that begin with AIR, some mornings that community know they begin with Bhawan Bhagat's song. There was just so much to this man that actually spilt outside. That I always felt that although he's there in my book, but he's constantly haunting me. Either I have not done justice to him, or maybe my education has not done justice to him. But I always felt like Bhawan Bhagat would not leave me alone. I translated this novel in 2004, Sanchit, and I wrote about it even now in 2022, because I feel, what is it about this man that I keep coming back to him, and I feel like my modernity constrained both my translation and my understanding. Would I translate Bhawan Bhagat differently today? Maybe, maybe not. But the point is that I realize today that there is something here to the man which our language and our definitions become inadequate in capturing. And to me, that is also one of the fundamental relationships with bhakti, which is that you have to abandon all that you came with, and you have to, and I mean, Jerry manages that abandonment in a different way. In my mind, it is an abandonment by which I tell myself that बहुत हुआ पढ़ाया यार, अभी student बनना है मुझे. I feel like मुझे ये छोड़ना है या तो कम कर देना है, but I want to be a student here. I think I fooled myself all these years, thinking that I am teaching, that I know something, whatever little I knew, it was okay. But now I feel like that relationship with bhakti and understanding a character like Bhawan Bhagat, going to Shah Abdul Latif, even going to Akho Bhagat from Gujarat, for instance, for me, that is sort of beckoning me to say that come over and become a student here. And I think
that early translation I did of Angariyat and that character I came to know, वो जो पात्र है उस पात्र की जो उसकी जो छाया मुझ पे पड़ी है और उसकी जो आवाज़ें मुझ पे पड़ी हैं, वो जो साथ में लेके चली हूँ इतने सालों से, मुझे लगता है कि वो एक बेचैनी की भी आदत हो गई. एंड ट्रांसलेशन एक बेचैनी भी होती है. आप कर लेते हो और कई बार लोग उसकी सराहना भी कर लेते हैं, लेकिन आप फिर भी बेचैन हो. एंड आई थिंक वो जिंदगी और अनुवाद का एक आपस में जो रिश्ता है, वो एक बेचैनी का रिश्ता है. Thank you, Professor. Jerry, as I was saying, I am certainly interested in not in the business of what is left, but in the business of what is constructed through or created through translation. The first translation you did with Neela Bhagwat. The second translation that you did of Tukaram's verse, you did it with, but as a twin translation, as you say, with Shanta Gokhale. So one, this business of collaborative and comparative translation is what I'm interested in and would like to hear from you about. But second also, is this figure of the poet translator. We know Arun Kolatkar and Dilip Chitre, they have created versions, as it is often read as, of Marathi Sen poets already, and you also, with your versions in that sense, come to be a part of this tradition of modern Indian English poets who have been producing these interpretations or parallel versions of the words of the saints. And where do you locate yourself in this sphere? Yeah. I wish I could locate myself with ease, and I wish I could locate myself without... Actually, I wish that the day will come that we will not have to say Jerry Pinto, who was born a Christian and practicing Christian, is trans. It doesn't matter, right? Read the book, yeah? Always, routinely at all translation readings that I have done, someone will stand up and say, it is very, very good that you are translating from Hindi and Marathi. And if my name was Jaitirtha Panthna, and sometimes I want to make it Jaitirtha Panth, so we can just push that out of the door. But right now, we are rebuilding bhakti in a certain way. Because bhakti, if anything, was inclusive. You were a sex worker, Kanho Patra, Yana Tumi. You were pushed out of the door. Tukaram was pushed out of the door and made to put his poems into the river. Bhidski Vahi came out of the river. The wet book came out of the river. Soirabai, Zanabai is working in a house, cleaning and sweeping and abusing. And when I lost faith and felt someone is going to say something, they would look at me and say, we face this too. Why are you so scared? We face this too. We were outsiders. We had no way. Kanho Patra talks about seeing his feet. Okay? I should sit. Seeing his feet. If you go to Pandharpur, the place where the Dalits could look at the god, they could only see his feet. So when she talks about seeing your feet, that's as much darshan as she's got. Okay? So when you talk about Arun Kolatkar and Dilip Chitre, great, wonderful, magnificent writers, stupendous intellects, my childhood gods and gurus, right? I have memories of Dilip Chitre. Whenever he walked through a room, you felt burning. You felt something was burning inside him. Smoke was coming out of him because there was so much energy, so much desire to write. And you met Arun Kolatkar and you felt you were in the presence of a volcano, a quiet volcano for that moment, quiet, but intent on doing something really strange. Jezuri, yeah. If you have not read Jezuri, Jezuri is what you read when you can't believe and are forced into belief, because an old woman will open her mouth, her toothless mouth,
in a temple town full of dust and dogs, and you will see God. You will see God. So belief, that wasn't important. Neither Dilip Chitre nor Arun Kolatkar would have called themselves Hindus or believers or anything. What they responded to was this wave, and please, bhakti keeps being historicized as though it existed at some time. A friend of mine told me about his grandmother. Every morning she got up, went into her puja ghar and wrote a poem to Krishna, which she then went and whispered in his ear. She read it out to him. And at the end of her life, she asked for them all to be burned, because they were meant only for Krishna. And kiski majal, that you should want to read them as well. But she's like, I was so blown away by this story, so delighted that there is this intense, intimate relationship. I can't imagine. I'm skeptical. I bring a brokenness to any bhakti translation. I say, from this broken pot, something will leak. Okay? But there are full pots out there, pouring oblations onto God, oblations of love and devotion, full on, and rage and hate. Zanabai says, I have become a whore. I come now, Vittala, to destroy your home. How beautiful is a relationship that scoops God up and says, I love you. I love you so much that I hate you. And who hasn't felt that? Thank you, Jerry. Did I answer the question? You did. you quite did, but I'll certainly follow up with both of you with my remaining questions. And certainly the force of bhakti is such, as Kabir would say, Jeto prem khilan ka chao, sirdhar thari gali mere aao. If you want to engage in this play of love, you must bring your head and your hands to me. But I also, again, go back to Kabir also to realize, Pukhe bhajan na kije, mala apni lije. So if we are hungry, we can't quite do the bhajan business, and I know lunch follows this session. So we'll certainly move to food as well, but if there's a question we could take. In Marathi we say, Pahle pothoba, nantar vithoba. We are totally out of time, otherwise we'd be so happy to take questions. But both Rita and I are hanging yes, but they'll all be, both of them are around and they'll be very happy to answer your questions personally. Thank you so much for such an intense session. So we are all going to take a short break for lunch, and we'll resume for the second half of the day at 2 p.m. For those of you who are looking to grab a quick bite, Habit Area, the IHC food court, which has a range of wonderful quick eats, is right behind you. It's right there on that building there. Please check it out. We also have an exhibition on titled Print as Resistance, which is on at the Open Palm Court Gallery. For those who are interested in art and would like to just stroll around, here's something that you could look at. Yeah. And look forward to seeing you all at 2 p.m. for our next session. Thank you.
Hello. Check. 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 Hello. Hey. Check. Check. Hello. Hey. Hey. Check. Check. Hello. Hey. Check. 1, 2. Check. Hello. Hey. Check. Hello. Hey. Check. 1, 2. Check. Hello. Check. Hello. Hey. Check. 1, 2. Check. Check. Hello. Hey. Hey. Check. 1, 2. Check. Hello. Hey. Check. 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 6. Check. 1. Check. Check. 1. Test. Check. 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 ठीक है, वो तो एक्टिवेटेड है यहाँ पे. Check. Check 1. Check 1.
Mm-hmm. Check. Test one. Mm-hmm. Check. 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 Check one. Test. Check. Check. Check one. Test. Test. Test.
नमस्कार। हमारे नए सत्र हिस्ट्री कंटेंडिंग पर्सपेक्टिव्स यानी इतिहास के बहुविध कभी प्रतिस्पर्धित दृष्टिकोणों पर संवाद। मिथक और कल्पनाएं कहाँ खत्म होती हैं और इतिहास कहाँ से शुरू होता है? क्या कुछ भी प्राधिकारी या निश्चित तौर पर कहा जा सकता है? यदि इतिहास में प्रमुख कथा शासन के साथ बदलने लगे तो ऐसे में प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को समायोजित करने के लिए स्पेस या माहौल कैसे सुनिश्चित किया जाए? इन सब प्रश्नों को उठाने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिभावान और गुणी युवा पैनल हमारे साथ है। इतिहास थीम का नेतृत्व या क्यूरेशन पुष्पेश पंजी ने किया है और ईशान शर्मा सहायक और आज के सेशन के संचालक भी हैं। मैं हमारे सभी वक्ताओं का संक्षेप में परिचय कर देती हूँ। अर्श अली 23 साल के भारत के सबसे युवा पुरातत्वविद और पहले मिस्र विज्ञानी हैं। बहुभाषी अर्श 20 से अधिक भाषाओं के विद्यार्थी हैं और लगभग 1 दर्जन लिपियां जानते हैं, जिसमें संस्कृत, फारसी और अरबी शामिल है। अर्श ने इतिहास और राजनीति विज्ञान से जुड़े विषयों पर मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। अनिरुद्ध कानेसेट्टी मध्यकालीन दक्षिण भारत का नया इतिहास लॉर्ड ऑफ द डेक्कन के पुरस्कार विजेता लेखक हैं। उन्हें वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। वे द प्रिंट के लिए साप्ताहिक थिंकिंग मिडीवल कॉलम लिखते हैं और एकोज ऑफ इंडिया, युद्धा एंड द ऑल्टर ऑफ टाइम के पॉडकास्ट होस्ट भी हैं। डॉक्टर एकता चौहान जिंदल स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे वर्ल्ड हेरिटेज स्टडीज़ में पीएचडी होल्डर हैं और मौखिक इतिहास, शहरी और विरासत नीति, शहरीकरण, मानव विज्ञान और सांस्कृतिक विश्लेषण से संबंधित विषयों पर शोध करती हैं। ईशान शर्मा एक लेखक हैं, टेडेक्स वक्ता, धरोहर और इतिहास में एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वे कारवान द हेरिटेज एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव के संस्थापक हैं और खुद को हिस्टोरियन इन ट्रेनिंग कहलाना पसंद करते हैं। आप सबका स्वागत है। Good afternoon and welcome back to the second session of the day. We hope you had a good lunch break and enjoyed the short sound check by Harpreet. Speaking on history contending perspectives are Arsh Ali, archaeology prodigy and polyglot, Dr. Ekta Chauhan, assistant professor, Jindal School of Art and Architecture, and Anirudh Kanisetti, writer and historian. The session will be moderated by Ishan Sharma, founder, Karma Heritage. Over now to Ishan Sharma. Hello, am I audible to all? Hello, am I audible now? Thank you. आज हम बात करने वाले हैं इतिहास पर। अगर आपको क्लास 6 की हिंदी कक्षाएं याद हों, इतिहास का संधि विच्छेद किया जाए, इति धन हास, thus that happened or thus it was, और हिस्ट्री का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। फिर हम वो ओडिसी और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं हिस्ट्री के लिए। आज बातें होंगी कंटेंडिंग पर्सपेक्टिव्स की, और क्योंकि हम भाषाओं के एक समन्वय का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, मुझे उर्दू का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है। मुझे तलफ़ुज़ के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। कानपुर का रहने वाला हूँ, अवधी की भाषा नहीं जानता, लेकिन इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आई थिंक दैट रियली क्लैरिफाइज द परसेप्शन दैट there should be a diversity of interpretations, diversity of thoughts and opinions on a thing that is so personal to us like history, इतिहास। तो आज हमारे साथ बड़ा शानदार पैनल है भाई साहब, और अलग अलग लोग हैं। एक पब्लिक हिस्टोरियन है, एक एकेडमिक हिस्टोरियन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और मैं बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कल जब ये शुरू हुआ पैनल, उससे पहले एक खबर आई कि एनसीईआरटी ने ये ठाना है, पैनल ने, एनसीईआरटी पैनल हैज़ डिसाइडेड टू ऐड महाभारत एंड रामायण एज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री करिकुलम। अब जो हम इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऐसी बातें दबा नहीं पाते, चाहे सरकारें चाहें ना चाहें।
तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा अर्श अली से, जो कि इतिहास के भी जानकार हैं, संस्कृत भी जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, कि अर्श आप ये बताएं मिथिक और हिस्ट्री, इतिहास और मिथ्या में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है? क्योंकि जो भारत में इतिहास लिखा गया उसको इतिहास पुराण ट्रेडिशन कहा जाता है, और महाभारत और रामायण दोनों ही उसमें आती हैं, वो चाहे एपिक लिखे गए हों लेकिन इतिहास पुराण ट्रेडिशन का पार्ट है। तो अर्श, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ हमारे दर्शकों को और सुनने वाले श्रोताओं को। आदाब, आप सभी का खैर मकतब। Is it bilingual we are doing? जो भाषा आप बोलना चाहें, 22 भाषाएं जानते हैं वो, अब आप लोग समझ लें। वागर्था विवसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। So may my words be embedded with meaning. Coming to this question of the Ramayana and the Mahabharata being included into the NCERT curricula, I feel that it should be, in a way of allowing our students, our younger generation, to feel connected with the living traditions of our country, but not as a part of history curricula. There's a difference, right? Because if we talk about the Mahabharata, there are very few works of literature that can surpass the Mahabharata. We have the Shahnameh in Iran, we have the Iliad and the Odysseus from Greece, and we have the Mahabharata, which is even longer than all that combined. But coming to the fact of including it in as a part of history, I feel that we need to differentiate between myth, legend, and history. You know, it's a hierarchy. When we talk of myth, it talks about gods wandering in chariots in the sky, or there are people who are flying, you know, without the use of zero gravity or things like that. Legend has a mixture of both history and myth. It stands in the middle. You know, when you talk of a Venn diagram, the legend is at the center. And history is that which can be corroborated with credible evidence, whether we talk of archaeological evidence or literary evidence. And you need to corroborate that even with oral evidence, using oral sources. So I feel that including the Ramayana and the Mahabharata as perfect, wonderful works of literature will be a good way to lead forward, not as works of history, because when you talk about the Itihasa tradition, that is totally different from the modern perspective of history. So the Itihasa tradition is different from modern perspective of history, but as works of literature, I feel that including the Mahabharata and the Ramayana, you know, are works of politics. You know, the Bhishma, the Shanti Parva talks about, you know, politics, espionage, administration, and things like that. So I feel that it would be a very positive way to go forward in as works of literature, not as history. बहुत शुक्रिया हर्ष, और सही बात है। एक क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं कुछ कॉशंस हमें रखने पड़ते हैं अपने जहन में। जब भी हम इतिहास पढ़ें उसे हम अपना तो मानते हैं लेकिन उसके साथ कई इमोशंस जुड़ जाते हैं, और हिस्टोरियंस उसमें हमेशा फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इतिहास के साथ जाया जाए या पब्लिक के साथ जाया जाए। और आजकल तो पब्लिक भगवान के बराबर हो चुकी है देश में। तो खैर इसी से जुड़ा एक सवाल है रिलेटेड टू दिस, द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री वर्सेस मिथ is another question, and something that A.N.D. Haksar Sahab pointed out this morning, that you know, there is a legend that Hanuman wrote the first Ram Katha on the stones, and Hanuman being a monkey wrote it on the stone. I would now come to Anirudh and ask him this question of how do you see, because you write on the rulers of the south, there are legends associated with the rulers also, be it the Adil Shahis or the other rulers of the past. How do you navigate your way as a public historian? You interact with the public more than any of us through your scholarship, which is much more accessible than the academic scholarship. And I really can speak English, that proves. But how do you see this question of history versus legend? And while you write your book, do you also add legends and give a caution that, you know, this is a legend, you must not take it as history?
That's an interesting question, Ishan. I hope everybody can hear me just fine. Um, Before I begin, though, I'd like to add a little bit to what Arsh was saying. I think that was a beautifully balanced answer, Arsh, but I think it's also important for us to understand that these great texts like the Mahabharata and the Ramayana are fundamentally historical texts. They are not recited from the heavens, they are recited by people. They are made for particular purposes, and like anything produced in history, they received layers and layers of meaning over time. To me, it is very interesting to see not just the Mahabharata of Vyasa and the Valmiki of Ramayana as they are, but also to look at the various regional variations of these texts. I recently studied, for example, the Palnati Virula Katha, which is a story which essentially the Mahabharata of a medieval Telugu landowning caste that replaces the central gambling incident with a rooster fight. And has a rivalry between an evil widow called the female leader, the Nayakuralu, and her rivalry with Brahma Naidu, who of course is the Krishna stand-in. Now, why does this text exist, and why is this text less relevant than studying the grander Mahabharata tradition? If you were to actually look at the way that the Palnati Virula Katha borrows from but also retains its unique identity, you actually understand about a great deal about how Indian communities throughout time have sought to engage with the Mahabharata and the Ramayana. And from that point of view, actually looking at our society and asking why is it that in the 21st century we feel this need to understand the Ramayana and the Mahabharata, what do they mean to us politically, is I think a very interesting question. Now to come to the question of public history and the role of legend versus myth in public history. I'd like to begin by telling you all a bit of a story, and you will pardon the language that I'm using because it comes from the commenters on my post, not for myself. I once made a meme about how the Nayakas, who were a class of Telugu aristocrats who ruled in the Tamil country, tended to patronize Telugu and Kannada rather than Tamil. I immediately got a very irate comment from a young Tamil gentleman who said, obviously these guys were Telugu, so they only support their language, so why don't you learn about true Tamil history before commenting, you Telugu idiot? And I found that very interesting because I think that this notion has really taken root that only particular kinds of people of particular ethnic groups of particular kinds of social standings should be telling history. But the reality is that whether we like it or not, everybody is going to be telling history. We use the term WhatsApp University in a bit of a pejorative sense, with justification, if I may add. But nevertheless, what it reveals was the fact that there is such a thriving culture of trying to understand history through sending messages, through sharing images, saying, shouldn't we be proud of our country? Watching videos of like young people who might have somewhat more enthusiasm than research. I think it says something about the particular situation we find ourselves in as a country, where there's this profound need to search for pride in our past. The past is not allowed to exist as the past. The past cannot be something that we laugh at, that we admit that we have moved beyond. The past must be a place of contention that's always profoundly emotive, that we're supposed to feel proud about or shameful about. And I think that really are the main dynamics that define public history today. So given all that, it is very difficult, as Ishan said, as a historian to say that I'm trying to say this objectively, because that automatically seems to be met with a little bit of suspicion. Why is it that this person is claiming they don't have an agenda? If they don't have an agenda, that means they actually do have an agenda. I think the solution to that is, rather than see history as essentially a series of warring narratives where one side wins and then the other side comes and takes over, we have to understand that telling of a nation's history is a process that all of us participate in and that all of us must be equipped to participate in. We must understand that there is a process by which histories are told. And this ties back to your question, Ishan, about the Mahabharata and the Ramayana, because I think that understanding how the Mahabharata becomes history in all these regional traditions would allow students potentially to understand that history is an ever-shifting and ever-changing thing, and would also equip them with the tools to be better informed citizens and future historians themselves. Thank you so much, Anirudh, for that answer. And that you mentioned a word called objectivity. Now,
हम इतिहास पढ़ने वालों की एक और प्रॉब्लम देखिए, इतिहास के विद्यार्थी सिर्फ प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं पूरे जीवन, और वो हिस्टोरिकल क्वेरीज बड़ी मुश्किल होती हैं कभी कभी। और ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है जो पढ़ते हैं इतिहास को एज रीडर्स, नॉट एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स। देयर आर स्ट्रगल्स related to writing history and studying it professionally. Four of us are writing about history, studying, so we thought through this panel we must also tell you the process of writing history. एक जब हम पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं एक सवाल आता है कि भाई आप ये बताएं असल सच क्या है, what is the truth of history. सबको जानना है इतिहास का सच क्या है, बट वो ये नहीं जानना चाहते कि उसमें कितनी परतें हैं, हाउ मेनी लेयर्स देयर आर, देयर इज नो वन ट्रुथ, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। अब आपने उर्दू संस्कृत में शुरू किया था, हमारे अंदर भी कीड़ा है भाषाएं जानने का, तो हमने भी एक मार दिया आपके सामने संस्कृत की लाइन। तो एक था, आप एक एकेडमिक हिस्टोरियन हैं, आपकी अभी अभी पीएचडी आपने पूरी की है जर्मनी से। आप ये बताएं कि ऑब्जेक्टिविटी का क्या मसला है, कैन अ हिस्टोरियन बी ऑब्जेक्टिव, एंड यू हैव वर्कड ऑन अर्बन हिस्टरीज वेयर पीपल स्टिल लिव, अर्बन विलेजेस, योर वर्क ऑन अर्बन विलेजेस इज रियली क्वाइट फैसिनेटिंग. So tell us about this objectivity question and how do you manage it while you interact with the public? Hi. ईशान ने मेरे पे टैग लगा दिया है एकेडमिक हिस्टोरियन का, लेकिन दैट्स नॉट द केस. मैं जब काम कर, मतलब मैं दोनों, आई लाइक टू बिलीव दैट आई हैव मूव्ड बियॉन्ड जस्ट बीइंग एन एकेडमिक हिस्टोरियन. यार ऑब्जेक्टिविटी का ना, आई टेल यू अ स्टोरी रिलेटेड टू रामायण ओनली, ऑफ हाउ आई स्टार्टेड studying history as kids. So हमारे यहाँ पे both me and my brother we couldn't sleep without bedtime stories. So my mother used to tell us stories from Ramayana Mahabharata, thinking कि मेरे बच्चे थोड़े religion भी सीख लें. तो ये जो process है ना story telling का, उस टाइम आप नहीं पूछते मम्मी आप सही बता रहे हो क्या, सच्चाई बताना, लेकिन है ना. So that's the thing, like objectivity again, ये कीड़ा है लोगों में कि आप इतिहास का सच बताओ. When I also go for my interviews urban villages में, and I ask कि आपका कि like हमको नहीं पता सच, हम वो उससे मत पूछना उसको नहीं पता सच, हम पढ़े लिखे नहीं हैं हमें नहीं पता सच. But me working with oral history, my whole work has been around trying to understand कि एक आपका जो लिखित इतिहास है, right, we use written sources, we use archaeology, these for me these are elite sources. किसी ने बिल्डिंग बनाया है आज से 1000 साल बाद भी, आपके मतलब ये अच्छे वाले बिल्डिंग्स ही तो बचेंगे ना, लीट वाले. आम आदमी का घर तो वैसे भी नहीं बचेगा. तो अभी हमारे पास जो कुतुब मीनार या ताजमहल या मंदिर बचा है वो लीटों ने बनाया था, मेरे परिवार वालों के तो घर बह गए थे, है ना. ऐसी रिटन ज़्यादातर लोग तो लिख भी नहीं सकते. किताब मेरी तुम्हारी और 4 लोगों की बच जाएगी 1000 साल में, बट दैट डजंट मीन कि भाई पूरा भारत वैसे रह रहा था 2023 में जैसे मैंने और ईशान ने अपने आर्टिकल में या ट्विटर पे लिखा है या हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला है, राइट. सो I like to go beyond written and built history, which brings me to oral history. And again, the point being that there is no objective history and there is no point trying to find कि ये वाला सच कि वो वाला सच. There are multiple perspectives. You need to enjoy the process. When I go for all these interviews, like just yesterday, I was interviewing this gentleman who is above 80 years, शाहपुर जाट गाँव में, एशियाड विलेज के बिल्कुल सामने. तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे अच्छे अच्छे काफ़ी बुटीक स्टोर्स, डिज़ाइनर स्टोर्स हैं. फिर इन दादाजी से मैं मिली तो मैं ऐसे ही उनसे बात करने लग गई, और मतलब उनका इंटरव्यू चल रहा था. और मेरा इंटरव्यू लेने का स्टाइल ओरल हिस्ट्री में, आई लाइक टू गो फॉर इनफॉर्मल इंटरव्यूज. सो ही वॉज द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एशियाड विलेज. नाउ एशियाड, अभी लाइक आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल क्योंकि मेरे साथ कल ही हुआ है. अगेन अब एक आपका नैरेटिव है दिल्ली शहर के अर्बनाइजेशन का, हिस्ट्री का, एशियाड विलेज का, कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया. एक बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन. लेकिन जब एशियाड विलेज बन रहा था, जब इतने सारे एथलीट्स आ रहे थे, सडनली एक रूरल पॉपुलेशन है यहाँ पे आपके गांव में, वो क्या इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ. किसी ने, कोई वहाँ पे लेबर सप्लाई कर रहा है, मतलब वो बता रहे थे कि वो सुबह खेलते थे स्टेडियम में लोग, शाम को हम वहाँ जाके गोबर के उपले बना लेते थे जी, कि हमारा ही तो खेत है.
और सुबह श्रीलंकन एथलीट्स उधर की साइड रहते थे, वो भागते थे, हमको तो जी बड़ा अजीब लगता था कि बाहर के लोग भाग रहे हैं, फिर हम उनको गाय का दूध दे आते थे. सो दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, लाइक इवन बिकॉज माय वर्क हैज बीन फोकस्ड ऑन दिल्लीज अर्बन हिस्ट्री. उसमें भी एक आपका सिंगल नैरेटिव है कि भाई आज़ादी मिली, रेफ्यूजीज आए, फिर उसके पहले मुगल्स थे, उसके पहले जो भी है एक हिस्ट्री चल रहा है. बट व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट वर द पीपल डूइंग, वो क्या खा रहे थे, क्या उगा रहे थे. और जब आपका एक हौज खास एनक्लेव बन रहा था, या श्री फोर्ट बन रहा था, या पूरा साउथ दिल्ली बन रहा था, या दिल्ली यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो भाई गांव वाले क्या कर रहे थे, पूरा गांव पे बसा हुआ है. तो आई लाइक टू एंजॉय द प्रोसेस. और वहाँ जब दादाजी अगर बता रहे हैं कि भाई हम उपले बनाते थे, अब इसमें मेरे को ये कॉन्टेस्ट नहीं करना है कि नहीं आप सच्चाई बता रहे हो, उपले 4 ही थे ना कि 6 तो नहीं बनाए थे आपने उस दिन उपले, वो कोई पॉइंट नहीं है. इट्स टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव. दादाजी का पर्सपेक्टिव अलग था, उनकी वाइफ से बात करोगे वो अलग बताएंगे कि अरे इतनी टफ लाइफ थी, उपले बनाओ और कुएं से पानी लाओ, इतनी टफ लाइफ थी. एंड आई लाइक वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एंड आई विल कंक्लूड विद दिस, दैट देयर इज दिस, ये होता है कि हमें या तो हिस्ट्री में से ट्रूथ निकालना होता है, या फिर हम ना उसको एक फैंटेसाइज करने लगते हैं कि अरे पहले के ज़माने में ना बहुत अच्छा होता था, विच इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग टू थिंक. तो हम सबको अपना बचपन भी कितना अच्छा लगता है, बचपन में बहुत मज़ा आता था, चाहे कितना भी बेकार गया हो बचपन, होमवर्क ही कर रहे थे, सब कुछ नहीं कर रहे थे. थोड़े साल बाद जब अरे वाह वाह वाह. सो इट्स अ थिंग. ओरल हिस्ट्री में दिस इज द प्रॉब्लम. सो इतिहास का ना या तो लोग ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं, ये सच बताओ एकदम, या फिर जब सच नहीं मिलता है आप उसको फैंटेसाइज करने लगते हो कि अरे बहुत अच्छे खेत थे और खलियान थे और फ्लाइंग शिप्स थे और प्लास्टिक सर्जरी थी, whatever. वो जितना दूर जाते जाओगे ना हिस्ट्री में टाइम पे, उतना ज़्यादा वो फैंटेसाइज करते जाओगे उसको. बिल्कुल. अब इनके आंसर ने मेरे को मजबूर कर दिया है कि मैं 3-4 चीज़ें और बोल डालूं. नहीं देखें, इन्होंने बड़ा एक ज़रूरी बात करी ओरल हिस्ट्री की. ओरल हिस्ट्री इज़ द फाउंडेशन फॉर मैनी हिस्ट्रीज दैट आर बीइंग टोल्ड टुडे. First is tribal history, Dalit history, feminist history, subaltern history. Those who went unarchived in the archives that you have in the British Library or in the National Archives of India, oral history tells you the history of those unarchived. The archive of the exploited and the archive of those who had a long struggle for their identities. And the question of objectivity brings us to another matter. और ये सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा, आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. आफ्टरनून सेशन है, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया गया है. पुष्पेश साहब उसको ग्रेवयार्ड सेशन कहते हैं. हम मुर्दों की तरह यहाँ बैठेंगे नहीं, आपसे सवाल पूछेंगे. पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है कि शाहजहां चॉप्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ लेबरर्स हु बिल्ड द ताजमहल? Second story, Shah Jahan had a love affair with somebody called Anarkali, or sorry, Salim had a love story going on with Anarkali, who was a courtesan or a nachne wali in the court. Third, it's a popular story that India's freedom is on a lease for 99 years. So these are the kind of public history narrative that goes around, and people who flow these narratives in the public say that academic historians सब चोर हैं, ये सारे लेफ्टिस्ट हैं और ये सब के सब देश विरोधी हैं, एंटी नेशनल हैं और इन सबको जेल में डालना चाहिए, जेएनयू को जला देना चाहिए, उसको विवेकानंद यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए. पता नहीं नाम से कैसे नेशनलिज्म फैल जाएगा, लेकिन ये ऐसी बातें आजकल हमारे साथ होती रहती हैं. इसमें सबसे बड़ा रोल है जो आज अधेड़ उम्र के लोग हैं, 50-60 साल के. व्हाट्सएप बहुत नया नया सोशल मीडिया आया था, उन्हें बड़ा वही समझ में आया. वो बेचारे ट्विटर तक पहुंच नहीं पाए, व्हाट्सएप उन्हें बड़ा पसंद है. सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आता है सबके पास और शाम को गुड डे का टेक्स्ट आता है. साथ में बीच में एक हिस्ट्री का सब आ जाता है कि क्या तुम्हें पता है अकबर ने 1 लाख लोगों को हिंदू से ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया. ऐसे टेक्स्ट कितने लोगों के पास आते हैं, आप ज़रा एक बार हाथ उठाएं.
जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको लगता है मैं मान लूंगा कि नहीं आते, सबके पास आते हैं। ये पब्लिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है, दिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सो this is a question to all three of you, because all three of you work in the public domain of history. As professional historians, as public historians, or as somebody who just appreciate or understand the history, what truly meant when we say history is a science, it should be studied, and it should be appreciated for its various layers that I was talking about. How do you see, when you are in the public domain, these contending perspectives on history from the public? So WhatsApp history versus history that you know. I may, if I'm audible. Well, Dr. Chauhan had shared her view about oral tradition, and when she was doing that, I felt nostalgic. In a way, my Nana was actually a migrant from Pakistan. He was a Punjabi Jat, so he came all the way from Lalpur, that is now Faisalabad in Punjabi Pakistan, into Amritsar. My Nani is a Kashmiri Pandit, and her father had migrated from Lahore, Sialkot, and then to Srinagar. And of course, the same things that Dr. Chauhan had, told us about the problem and the plus point of using oral tradition is that exaggeration and exemplification of using oral tradition in a way that no evidence can actually, corroborate. I would hear stories, my Nana would say कि हम लोग जब वहाँ से यहाँ पर आए तो हम लोगों ने घी के जो सेर थे ऐसे डोल दिए कि हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई नहीं, किसी को नहीं करने देंगे. या when coming at the time of coming towards India, कि हमारी दादी जी ने सारे जेवर वहीं पर गाड़ के हमारे बंगले के बीच में आंगन में वो छुपा दी कि जब वापस आएंगे तो खोद के निकाल के लिए जाएंगे. Well, I feel that I should go. I have been to Pakistan and I've also seen that ancestral Haveli of my Nana ji, but I didn't found any treasure. So that's a problem of exaggerating oral tradition. So you have to tease out the fact from what the person is telling. But of course it adds that human touch to history. And regarding partition, having 80 lakh people coming, overnight in succession for months and years, from one part to another, it was also the same from Bengal. Punjab and Bengal, they suffered the most during partition. So oral tradition in that way, of course, is an important source. And coming to Ishan's view of, history as a way of, biased history, the same thing happens in what, normally called as WhatsApp University, ki jab partition hua to Muslims were like, butchering Hindus or Hindus were butchering Muslims. It wasn't. We don't realize that there were also stories of Muslims saving Hindus during partition or Hindus saving Muslims during partition. My Nana ji's family was sheltered by a Muslim family who were their neighbors in Lalpur before they found the right time to move towards Amritsar. There's one whole city in Punjab called Malerkotla, and the Nawab of Malerkotla is famous for the fact that he had requested Emperor Aurangzeb for the release of the sons of Guru Gobind Singh Ji. Now, it was unsuccessful because, there were other stories at play. But Malerkotla is still famous for the fact that there was no partition-related violence in 1947. The same goes for Lucknow as well, because I belong to that city, Lucknow. There also you don't have any instance of Hindu-Muslim violence or riots for the past 120 years, 150 years. So, the thing is that people don't realize that we have multifaceted perspectives of history. What I can take from the Jaina philosophy of Saptabhangi or Shadvad, that everything has multi-perspectives, different directions of views and opinions. So I think that we should also inculcate it in history as people who work as historians or archaeologists, but also as people, the general audience, who are interested in knowing about the past and as students of history. लेकिन देखिए हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला है हमने दे दिया. नहीं, अनुरोध पे आते हैं, फिर हम डॉक्टर चौहान पे आएंगे. So, I think that's an important question, Ishan, but
just so we don't become a panel of 4 people sitting in Delhi agreeing with each other, I'd like to also point out or really contrast India's public history space with that of, say, the UK. I find the UK absolutely fascinating because there was this very strong movement in the 19th century to declare the Normans who invaded England in the 11th century and then set up what we would call the Kingdom of England. There's a very strong movement to declare them as foreigners who invaded us. And therefore you see the romanticization of Ivanhoe and quote-unquote Anglo-Saxon heroes. But today, the kind of archaeological work that Britain does, not just for the Normans, but for the English and even for the Anglo-Saxons, all these quote-unquote foreign invaders who came to the island, is impeccable. The quality of archaeological work, the quality of academic work, and by and large, the quality of public history work, where everything that happens in academia is converted into documentaries, it feeds into video games, it feeds into movies, it feeds into books. Very often in the Jaipur Literature Festival, which all of us have attended, I'm sure, there are a lot of folks who are coming in talking about British history. I remember there's a fantastic speaker called Kat Jarman who had done a book on the Vikings, who is here in India talking about her book on the Vikings. And I think that shows you the thriving state of the British public history industry as compared to India's. And the question has to be asked as to why is this the case. I don't want to give simplistic explanations of colonialism and so on, but the fact remains that Indian academics very rarely have the same incentive to engage with the general public. And I think it is not unfair to say that there has been a general withdrawal of the Indian academics from the public domain, from public conversations in history, which only began to be felt very keenly post 2014, once a different sort of political power had taken over, and once they had begun to actively encourage this kind of historical misinformation. It's only then that we began to really keenly feel the consequence of historians being absent from Indian public discourse. So if I may bounce the question back to you as well, Ishan, how do you think we move beyond that? How do we bring historians back into India's public discourse? Because it is not enough for us to be, frankly, and with the greatest respect to IHC, it is not enough for us to be sitting here in fora like this and speaking in English about history. We need to be doing far more. Complaining is not going to solve WhatsApp University. It is not going to go away. What is going to be needed is something I'd like to ask the rest of the panel. So I'll respond to that question. It's a brilliant question, but I'll first give chance to Ekta to respond, and then I'll so a couple of things that I wanted to talk about. मैं एक्चुअली मेडिकल साइंस का एग्जांपल लेती हूँ ताकि ना जल्दी समझ आए. जैसे ईशान ने बोला कि हाउ इज हिस्ट्री एज अ साइंस, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस को ना लोग एक्चुअल एजुकेशन मानते ही नहीं है. हमारे यहाँ तो इंडिया में वैसे भी आर्ट्स को तो ऐसे ही मानते हैं, कुछ कोई भी बोल सकता है, हिस्टोरियन तो कुछ भी बोल सकता है, सबको पता है पॉलिटिक्स पे सबका ओपिनियन है, हिस्ट्री पे सबका ओपिनियन है, बट मेडिकल साइंस पे नहीं होता है उसका ओपिनियन, है ना. लाइक डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है भाई, ऐसे बैठ के कोई भी कहीं भी न्यूक्लियर वॉर मतलब न्यूक्लियर पावर पे इतना ओपिनियन नहीं होता, अब होने लगा है वो भी. So I would say कि history, like being trained as a historian, is as much of a training as being trained as a doctor. कि भैया ऐसे ही नहीं कोई भी जाके ऑपरेशन करने लग जाएगा कल को. But then coming to now oral history. Now again there is, I would like to point out that there is a difference between oral tales and oral history. Now we mix these two. Oral tale is what you get on WhatsApp. Gossip. वो तो गॉसिप हो गई कि यार उस दिन तो ईशान ने तो मेरे को ऐसे बोल दिया था, अच्छा नहीं लगा मैं ये बात, वो है ओरल टेल है वो ना. ओरल टेल से या एक इंटरव्यू से, जो मैंने एक बात की है किसी से कल ही जब मैंने इंटरव्यू लिया है, उसको ओरल हिस्ट्री तक ले जाने के लिए पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है. एंड इस प्रोसेस में इज वेयर योर ट्रेनिंग कम्स इन, राइट. ऑफ उन्होंने जो बोला उसको क्रॉस चेक विद अदर इंफॉर्मेशन. जस्ट लाइक आपका आर्कियोलॉजी या रिटन सोर्स या न्यूमिस्मैटिक्स, सिर्फ अभी तक हम सिर्फ उसे यूज कर रहे थे तो इसलिए आपका सबऑल्टर्न का आपको नहीं पता चल रहा था. तो लेकिन इसका फ्लिप साइड ये नहीं हो सकता कि आज से हम सिर्फ जो ओरल हिस्ट्री में जिसने किसी ने बोल दिया, 4 लोगों ने 4 बातें बोल दी तो उसको आप यूज ही कर लो. ऑल द सोर्सेज हैव टू बी कंसल्टेड. सो ये जो ओरल टेल है या जो ये ओरल इंटरव्यू है या ओरल कॉन्वर्सेशन है, इसको हिस्ट्री तक लाने के लिए, इसकी सेंस बनाने के लिए आपको
उसमें बीच में जो ट्रेनिंग लगेगी, दैट इज व्हाट इज द साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ अ हिस्टोरियन, राइट? And now again, like processes like Arsh was also talking about. So when again, like it's interesting because oral history is a very emerging discipline. It hasn't taken up so much space and it's always evolving, and it also unfortunately, because you know, it's the only discipline where your source is talking back to you, right? It's not, you're not looking at a building or जो या फिर एक book, क्योंकि वो तो नहीं बोल देगी, but आपके सामने एक इंसान है, तो it also has some elements of psychology that comes in. So when you're talking to a person, for example, जैसे उन्होंने partition की भी बात की, या फिर मैं भी interviews कर रही हूँ, it's not because facts तो लोग exaggerate करते हैं, it's a natural tendency of human beings. I'm not going to this uncle ji or auntie ji asking for facts. I am looking at how is he relating to, and then when you have enough number of people or some number of people, or ideally, so you can see how this community or how this group of people experienced this one event. Again, like, because it's very fresh in my memory, I'll go back to Asian Games 1982. Uska hai, you can also look at the infrastructure development. But I'm trying to understand कि भैया औरतों को कैसा लग रहा था, athletes का क्या experience था. It's the experience part. It's the, and when you sort of उनको सबको you have to read them together, not one uncle or one auntie who said something और उसको उन्होंने जो बोला आपने उनको facts ही मान लिया. No, they of course they will exaggerate इधर उधर ये वो. You have to understand them collectively, how people are experiencing it, and that's the point of oral history, how they experienced it. And of course facts are always cross-checked, and that is where your history ka, like your training comes in. So it's unfortunate that social science, not just history, सबको लगता है that they can, you know, but the training और appreciation तो मिलता ही नहीं है उस training का. They're like, आपको क्या history आती है, वो तो हम WhatsApp पे भी बता ही देंगे. But that's where the training has to come in. Thank you so much, Ekta, Anirudh, and Arsh for this response. Now I'll respond to it briefly because you pointed out जो एक understanding है, leftist है सारे academic historians, और वो लेफ्टिस्ट हैं इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ये बहुत पॉपुलर कथनी है. मैं एक छोटा सा आपको हिस्ट्री का लेसन दे देता हूँ. इतिहास लेखन की प्रथा जो आज है वो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है. इट वॉज समबडी कॉल्ड जॉन स्टुअर्ट मिल हु रोट अ बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, divided India into Indian history into three categories: Hindu India, Muslim India and British India, not Christian India. वहाँ पे उन्होंने कहा थोड़ा हम अपना करते हैं क्या क्रिश्चियनिटी. तो सबसे पहले धर्म पे इतिहास को बांटने की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में की थी. That brings me to this concept of academic history being leftist. इतिहास में राजनीति की तरह लेफ्ट राइट सेंटर विंग नहीं होते. इतिहास लेखन में अलग अलग schools हैं ideological. That the leftist, so to say, is the Marxist ideology that traces its origins from something called dialectical materialism, what Marx's historical vision was, and they have certain elements to it. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब ने ये लेफ्टिस्ट शब्द सुना है, मतलब किसी को नहीं पता है, तो मैं चाहता था कि एक छोटा सा आपको मतलब बता दूँ. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल चेंज को देखना, बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ. कोई भी सोशल चेंज में अगर इकोनॉमिक्स का कोई भी पार्ट है वो मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप का पार्ट है. इसके लिए सबसे अच्छी किताब है अग्रेरियन हिस्ट्री इन मुगल इंडिया बाय इरफान हबीब. बड़ी अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ें. साथ में इससे पहले आया था नेशनल हिस्टोरियंस जो आर.सी. मजूमदार थे और एच.सी. रे चौधरी थे, तमाम लोग जिन्होंने एंशंट इंडिया पे काम किया. उसके बाद थ्रू दिस हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ स्कॉलरशिप आए सबॉल्टनिस्ट, और हमारे साथ एक बहुत बड़े नाम सबॉल्टन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो जिनसे पढ़े भी हैं, रविकांत साहब भी हैं, और भी लोग हैं जो सबॉल्टन स्कूल से आते हैं. उनकी बात करते हैं जो अनआर्काइव्ड हैं, जो मैंने आपको शब्द दिया, और वो ज्ञानेंद्र पांडे का शब्द है. ज्ञानेंद्र पांडे की किताब पढ़ें सबॉल्टन समझने के लिए. ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आजकल अकेडमिक हिस्टोरियंस को इनिशिएटिव इसीलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक हैज़ रिजेक्टेड अकेडमिक हिस्टोरियंस ऑन द बेसिस प्राइमा फेसी. देखिए लॉ का एक शब्द हमें भी आता है, प्राइमा फेसी, that all historians are essentially leftist. It is not so. Politics does not reflect on historical scholarship.
Historians, as any human being, may have their political opinions. They are entitled to, everybody is entitled to have an opinion. But the training involved in history writing tells you to diminish or sideline that your own bias and bring out certain level of interpretation that may or may not have certain bias of historicity, but certainly not of politics. तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता था. इसके बाद एक वर्ड दोनों ने इस्तेमाल किया, अर्श ने इस्तेमाल किया नॉस्टैल्जिया, and Anirudh used a word called romanticizing. Now my question to all three of you is, in these contending perspectives, you also mentioned of the partition, especially with the kind of literature that is coming on partition, has this romanticizing of the past. Everything was so good, so flowery and बिल्कुल बड़ा जन्नत जैसा था. वो तो पार्टीशन हुआ और सब तहस नहस हो गया, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बातें रह गई. वो एक रोमांटिसाइजिंग हो चुकी है हिस्ट्री की. इसमें ही एक और टर्म है गोल्डन एज, स्वर्णिम काल. जो गुप्तन एज थी 5th century 6th century, that's the golden age for a lot of people. And the further it goes back in history, ancient India, the easier it is to prove that it was a golden age, because there are no sources to prove otherwise. So you tend to make a claim that that was the golden age, followed by a dark age, then the colonialists, and now we'll revive the golden age. हम फिर से वो वापस जाएंगे उस सभ्यता में, हम वापस अशोकन एज वापस इस हिंदुस्तान में लाएंगे. How do you, as people who interact with the public, and you also are public figures in your own rights, deal with this question of romanticizing the past? And we all have faced trolls on social media when we correct people that there was no golden age. Golden age is not a concept which is historical. वो ऐतिहासिक concept नहीं है. स्वर्णिम काल इतिहासकारों के लिए तो नहीं हो सकता. आप अपने मन के लिए, अगर वो क्या है, गालिब का शेर है ना कि वो नहीं, वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. सुनने में अच्छा लगता है कि, क्योंकि एक हमने जनाब से पूछा कि साहब आप बताइए गोल्डन एज क्यों था. अरे गुप्ता के ज़माने में गोल्डन कॉइन चलते थे तो वो गोल्डन एज हो गया, और हम हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ी बात थी. मैंने कहा अच्छा आप साहब एक बात बोलिए, अशोक का क्या रिलीजन था? अभी वो बुद्धिज्म तो कहीं आएगा ही नहीं. हिंदुओं ने फिर बुद्धिज्म को भी अपने में ले लिया, ये हिस्टोरिकल गलती हो जाएगी बहुत बड़ी. और क्या बाद में जब सो कॉल्ड डार्क एज है, क्या हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स नहीं थे देश में, सिर्फ मुस्लिम रूलर्स थे? ये भी एक रोमांटिसाइजेशन का ही पार्ट हो गया है. तो मेरा आप तीनों से सवाल है, और मैं सवाल इसीलिए प्रोवोकेटिव पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके अलावा पैनल्स चल नहीं सकती. तो दिस माइट और माइट नॉट रिफ्लेक्ट माई ओन बायसेस, बट I would question all three of you at this. Arsh, we'll start with you. Well, coming to that question of romanticizing history, it actually goes back to the romantic movement of Europe, because it's after the Renaissance and the Reformation that around the 18th, the 17th and the 18th centuries, we had the romantic movement of, romanticizing ancient Greece and Rome. So the same went, to India as well, because even if you go far, far, far before the nationalist historiography, you have the Orientalist approach of Indian history. When 1784, the Asiatic Society of Bengal was founded, William Jones and Charles Wilkins started translating the Bhagavad Gita, the Hitopadesh, the laws of Manu, etc., etc. And that was a time when British historiography was actually very much, appreciating Indian literature and culture. And then there was a reaction, an anti-reaction to the Orientalist view that is spearheaded by, other groups of historians, including, Stuart and later on Vincent Smith. That movement actually came from Europe, because by the time there was a strong European influence in India. But the problem, that we face of golden ages, whether we talk of in Indian history or in Egyptian history, because as an Egyptologist, we also find the same thing in Egypt. Because as the British historians were spearheading the study of Indian history,
during colonial times, the same was in Egypt. So in Egypt, the new kingdom is actually called the Golden Age. But now even Egyptologists are refuting the claims. Because even in, you had the Old Kingdom, you had the Middle Kingdom, they were also periods of stability, whether political or economic. The Dark Age thing that, came out is actually a very old concept. Because we can call or ascribe certain periods as Dark Ages in a vacuum of evidence. That was true of the 1950s and the 1960s. But now, in the wake of new archaeological discoveries, many new evidence is coming to light, which throws light upon the life of the people who lived in certain parts of India or certain parts of the world in certain periods of time. So it is in the wake, it is in corroboration with archaeology that we are getting new evidence. Like I was in Saudi Arabia just 2 months ago, and a very recent discovery just this year has thrown 15 Tamil inscriptions in the middle of the Arabian desert, which is about 1500 years old if you date them paleographically. In February 2023, we came across the statue of the Buddha on the Red Sea coast in Egypt. So there's no problem and there has to be no solution. History can never be a complete picture. Whatever books we are reading now are all based on evidence, thoughts, historiography of the time till when the book was in print. But when somebody would be writing a book of history 50 years from now, he or she would be including new evidence, which is coming to light now. And as even Mr. Khan Setti's book had very, very beautifully elaborated upon the extent of, Indo-China trade that was happening via South India, and the shipwrecks that were there, the goods that were there, all over wonderfully, accommodated in that book. I feel that much more work has to be done in view of how India was in the middle of an ancient globalized networks of trade and exchange. Correct. Anirudh? I'll keep my answer short. Yeah. I think the answer to how do you challenge the notion of golden and dark ages actually lies in the question that you asked, Ishan. It's simply to provide people with evidence that it wasn't necessarily a golden age. So in my work, which focuses on medieval South India, which recently has been discovered by politicians as some kind of golden age where Indians were going out and conquering the world, I pointed out that very often these conquests, at least in the epigraphical evidence, came at a tremendous and horrific cost. And the kind of violence and martial culture that was being lionized was not one that restricted itself to the elite, but rather ended in the destruction of cities with the wide-scale abduction of women and all sorts of atrocities. So I think that the notion of a golden age can only persist as long as people don't know what a particular historical period actually entailed. And even if you were to look at Ashoka, for example, I think if you were to actually look at Ashoka's inscriptions, he's got some really very strange ideas, like, for example, appointing officials to oversee women, because apparently women are conducting rituals that Ashoka doesn't like. Now, that's an angle of him that is really not very often talked about, and it's debatable to what extent that actually worked on the ground, but it still does complicate the picture. So, part of the solution, I think, is a public history approach where you actually give people the evidence, tell them why it can't have been that, and then allow them to reach their own conclusions. बिल्कुल एकता मैं ज़रा short में निपटा देती हूँ. हाँ बिल्कुल. And of course, like this idea of golden age, we can talk about how Britishers invented this idea, historiography है वो. But I would just like to say two things. Golden age for who? है ना? तो golden age होगा गुप्ता के टाइम पे राजाओं के लिए ना, औरतों की, दलितों की, गरीबों की तो golden age आ ही नहीं रही है. आदमियों की तो और अपर कास्ट की तो और हिंदुओं की और अमीरों की तो गोल्डन एज ही चल रही है. हम लटियंस दिल्ली में बैठे हैं, लटियंस दिल्ली में तो गोल्डन एज ही है, आज भी है. अब ये 50 साल बाद भी अगर हम 2000, अगेन आई लाइक टू टेक दिस एग्जांपल बिकॉज यू नो हिस्ट्री हमें लगता है बहुत पहले हुआ होगा, बट यू डोंट नो कि अभी 20 साल 25 साल में 2023 की हिस्ट्री लिख रहे होंगे लोग, है ना. तो अगर अब 2023 में भी people, if they write history, there are also people are starving in this country, there are atrocities against women and 1,000 other problems. Migrant laborers are trapped in a tunnel as we speak. But यहाँ golden age ही चल रही है ना. तो golden age for whom? I am sure golden age राजाओं के लिए हमेशा से अच्छी चल रही थी और चलती रहेगी.
और सो दिस आइडिया ऑफ गोल्डन एज आई डोंट अग्री विद, बिकॉज गोल्डन एज देखो भैया, जो आपके पास अगर प्रिविलेज है तो गोल्डन एज आपकी चल रही है बढ़िया, कोई नहीं हिला सकता उसको तो और अगर नहीं है तो तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आने भी नहीं वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तेजी से ताली बजाया करें, उससे खून का प्रवाह बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ताली बजाने से। मैं आपकी बात करता हूँ, अपनी बात नहीं। तो हिस्ट्री एज अ जिक्सॉ पजल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर पब्लिक एट लार्ज टू अंडरस्टैंड द complexities involved in writing history and its various perspectives। जो आज हमने बात करी है उससे ये हमारा कतई कहना नहीं है कि सिर्फ एक तरह की इतिहास ही सही इतिहास है। कोई भी तरह का इतिहास सही इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एंटायरिटी का क्वेश्चन आ जाता है एंड ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाता है, एंड देन देयर कम्स द इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन writing history and understanding history. You can only interpret the past, you cannot reconstruct the past, you cannot go back in the past। कोई टाइम मशीन अब तक तो इजाद हुई नहीं है। और अच्छे दिन की आपने बात की, वो अच्छे दिन बहुत समय से आ रहे हैं, एक डेकेड होने वाला है अच्छे दिन का, लेकिन वो अच्छे दिन आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। तो हम अपनी बात को यहीं आई थिंक पब्लिक के लिए भी हम थोड़ी जगह देंगे, लेकिन वो एक शेर है कि वो कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ से तमाम करूं वाला किस्सा हो जाता है इतिहास में। जब चार हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट बैठ जाएं तो फिर वो गप्पेबाजी में बदल जाती है बात। तो मैं पब्लिक के लिए हम करते हैं कुछ इंतज़ाम, आपके लिए माइक लाते हैं, हाथ उठा लिए जाएं जिनको सवाल पूछना है। और मैंने शुरुआत एक उर्दू शेर से की थी क्योंकि भाषाओं के इसमें है, तो मैं हिंदी की एक कविता से ख़त्म अपनी बात करूँगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्यार, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। तो पास्ट नेवर लेट्स एनीबडी गो, इट कीप्स यू अटैच टू इट, और आप पास्ट से भाग नहीं सकते। हम सब पास्ट के पीछे, आज हमने जो कहा शायद कल हम सोचेंगे यार वो क्यों कह दिया मैंने। तो हमारे दिमाग में पास्ट हमेशा रहता है, रहेगा। लेकिन जब आप किताबें पढ़ें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। अगर वो लॉजिकल है, उसमें सोर्सेज हैं, तो वो सही है। उसको हम ये समझ के पढ़ें कि ये दिस इज़ ऑल्सो नैरेटिव perspective that should be appreciated. Not judge the quote-unquote leftist, but quote-unquote right, quote-unquote nationalist, quote-unquote Marxist, subaltern, feminist, Dalit, all sorts of perspectives, tribal history, queer history, everything matters today and we must appreciate it. Thank you. We'll open the floor for public questioning. अभी हम scrutinizing के फॉर्म में हैं, आ जाए। Thank you very much for this very interesting discussion. I really enjoyed that. My question is, we talk about when we have different narratives, somehow we see that we try to balance it out. But my point is that when there is one narrative that allows other evidence and questions, don't you think that totally separate out from all other narrative that goes on? For example, there are many people, they would say, you can't ask question about Ram. Now, how that is going to add in the history? Because history is something that don't reside in the past only. I think that relates to the future also. And that is the narrative that totally separates it out from mythology or whatever else. So whatever observation you have, whatever like you would like to say on that, that would be, I would like to hear. Thank you. देखिए, एक बहुत महान फिलोसोफर ने कहा था, फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। तो उसकी वेरासिटी का क्वेश्चन पे सवाल है। एनीबडी in the panel wish to? So that's an important question, and all I like to say is that I find it very ironic that very often is the people who claim to be preserving history now who are the most insistent that their narrative of history should not be questioned and are willing to back it up with coercion if necessary. I think that today there's a bit of a, at least I can only speak for public history, I feel like the tendency is to believe that the reason why history exists is to comfort you, is to make us feel proud, and that if history doesn't do that, then it can't be true history.
But I think it's very important for us all to understand that the purpose of history has never been to comfort. How many of us can look out at our world today, as Ekta so brilliantly put it, how many people in India, if they were to look out at the broader world, would say that this is a perfect world? All of us find our world exhilarating, challenging, miserable, atrocious in varying degrees, and history is supposed to do the same thing. History does not exist to comfort us, history exists to challenge us. If a historical narrative comforts and convinces us that everything is fine and everything we believe is correct, then it's not history at all. थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि क्रिटिकलिटी बड़ा ज़रूरी है, टू क्रिटिकली सी योर पास्ट. इफ इट ग्लैमराइजेस, इफ इट सूट्स योर सोल, इट इज़ नॉट हिस्ट्री. इट शुड मेक यू फील रेस्टलेस. हाँ, इफ इट सूट्स यू, इट्स करण जौहर फिल्म, दैट सूट्स योर सोल. एक सवाल वहाँ से साहब का है, ये लाल चेक टी शर्ट, आपकी बड़ी अच्छी शर्ट है. अभी उनका एक सवाल हो जाए फिर हम आप पर आते हैं. हाँ जी साहब. मेरा सवाल ये है कि अगर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है और हिस्ट्री is about different narratives, then what is the point of that history? Like, what do we want to achieve with having maybe all sort of different narratives there? I mean, how do we? Is it to lead some sort of a political action? Is it to lead some sort of a policy changing? Like, what is the point of it? इधर मेरे बड़े प्रिय पब्लिशर बैठे हैं. साहित्यकार कथा क्यों लिखता है? उसे एक कहानी बतानी है. मैं ये मानता हूँ. आप लोगों ने वेन डायग्राम, कितने लोगों ने वेन डायग्राम का मैटर समझा है कभी स्कूल में? मेरे मैथ्स में 4 नंबर आए थे 100 में से, मुझे भी पता है, तो मैं जानता हूँ आप सबको पता होगा. वेन डायग्राम में 3 सर्कल जो मिल के बीच की जगह बनाएंगे, that is the possibility of history. When you write it, there are different narratives. Somewhere in between them lies the truth, or whatever you call the objectivity of history. The reason to write history is to make yourself understand what could happen in the future. The need of the past, the need to study the past is not to know what happened back then, but what could happen in the future. It gives you a pathway to the future. That is what I believe in. तो मेरे लिए इतिहास समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ जा रहे हैं एज अ सोसाइटी. ऐसे काम पहले हो चुके हैं 1930s 40s के. बहुत लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता है विश्व भर में 1930s में क्या हुआ था. आज दुनिया की कई जगहों पर वही नैरेटिव वापस आ रहा है. एंड दैट्स व्हाट हिस्ट्री टीचेस यू. हिस्ट्री नेवर टीचेस यू व्हाट मिस्टेक यू वोंट मेक, because you would definitely make the mistakes, but it would give you an alert. देखो अभी अगेन आई नो ईशान ने मेरे पे टैग लगा दिया एकेडमिक हिस्टोरियन का, बट मैं ज़रा जनरल में अगर बताएं तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है. एक तो ये है कि जब हम हिस्ट्री सोचते हैं ना, द आइडिया इज, वो जो हम क्लास में पढ़ते थे राजाओं की कोई बात और कुछ बहुत पहले कुछ हुआ था. कल जो हुआ है वो भी हिस्ट्री है, आज सुबह जो हुआ है वो भी हिस्ट्री है. हमें हिस्ट्री इसलिए पता होने की नेसेसिटी है इंसान के अंदर, बिकॉज वी हैव दिस ब्लेसिंग कर लो या कर्स बोल लो कि वी रिमेंबर. अभी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे आज ड्राइव करके आई, ये बाहर ट्रैफिक मिला हुआ था. अब अगर मेरे को कल आना है, या तो आई कैन टेक अ लेसन फ्रॉम दिस हिस्ट्री आई लर्नड जस्ट टुडे कि इस वाले रोड पे जाम होता है, या मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ और फिर जाम में अटक सकती हूँ, राइट. और अगर मैं रोज यहाँ पे आती हूँ और रोज जाम मिल रहा है, तो आई कैन चूज टू इग्नोर इट ऑल्सो. आप जाम में अटको, अच्छी बात है. लेकिन अगर आप कल वाली हिस्ट्री से और परसों वाली हिस्ट्री से और 1 महीने वाली हिस्ट्री से सीख गए हो कि भाई IHC में सुबह के टाइम इधर के साइड जाम होता है, तो आप ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढो या फिर कंप्लेन करो या उसे सॉल्व करो, जो भी करना है उसको, मतलब कुछ सोल्यूशन आ सकता है उसका. सो हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इंसान में ये जो नीड है या फिर ये जो हमारा मैकेनिज्म है कि हमें याद रहती हैं चीज़ें, हम भूल नहीं जाते. Unlike, I would say, animals. I'm not saying animals also don't forget completely, but they don't have such a long memory like unfortunately men have or women have or humans have.
तो इसलिए हिस्ट्री, अभी ये छोटा एग्जाम्पल था, अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस और व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी और सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए चाहिए होता है हिस्ट्री। हमारे साथी हमें बोल रहे हैं समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। जिनको सवाल पूछने, हम अभी यहाँ पर बाहर खड़े होंगे, आप हमारे से फोटो भी खिंचवाइए, हमारे साथ सवाल भी करिए। फोटो पहले खिंचवाइए क्योंकि मैं बाल वाल बना के आया था बढ़िया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, it is not the duty of just the historian to teach the past. The public must participate in proving the point that criticality is the essence of our times today. Keep reading, keep thinking, that's how you will keep yourself sane in such insane times. Thank you so much everybody. Thank you everyone, and we're completely out of time, otherwise we would have continued. But if you have questions, the panel will be right next to the bookstalls and they'll be most happy to answer your questions. सबका आभार। हमारा अगला सेशन भाषा, लिपि, ग्रंथों, टेक्स्ट, अभिलेख, पुरालेख पर डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में चर्चा करेंगे, उनकी चुनौतियों और उनकी संभावनाओं पर। ये सेशन सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़ और राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा संयोजित है। श्री रविकांत इस सेशन के क्यूरेटर भी हैं और संचालन भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वे इस सेशन को आगे ले जाएं। क्योंकि ये डिजिटल डिवाइड का सेशन है, इसमें प्रेजेंटेशंस भी होंगी। 5 मिनट हम लोग सेटअप में लेंगे, तब तक आप लोग बैठिए। Our next session, Digital Futures, Scripts, Fonts, Texts, Archives, which will be followed by a calligraphy demonstration by Rajiv Prakash. The session is supported by Center for Study of Developing Societies and Rajkamal Prakashan Samoha. Our discussants for this session are Dr. Rahi Soren, Assistant Professor, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University; Nitin Singh, Head of Rekhta Labs, the R&D wing of Rekhta Foundation; Rajiv Prakash, lettering artist, calligrapher, type designer and visual artist since 1980; and Oshim Ghosh, founder Shabd Koshish Technologies and Hindi So Easy, India's first online playway Hindi language learning portal. The session is moderated by Ravikant of CSDS. Bilingual historian, writer and translator, Ravikant has also curated the exhibition of Print as Resistance, Proscription as Control on view at the Open Palm Court Gallery. For those of you who have not seen it yet, don't miss visiting it. Hello. This is not the last session. I think इसके बाद कुछ. So we have limited time, huh? We have limited time. I think we should start while we set it up, because we should spend our precious time talking about what we are going to talk about. Okay. So you have already been introduced. I'm not going to dwell in any detail on the introductions. They are very well known people, and if you don't know them, please search them online. They are actually doing great work. Rahi comes from Kolkata. She teaches at the Department of Oceanography. I don't know what she does, but I know, because we have been friends for a while, that she is doing wonderful work of digitizing a lot of material found in Santali language. So there is an endangered archives program which is run by the British Library,
that she has been working with for several years. So she'll tell you, look, the question that we are asking, हम लोग बीच बीच में अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं. हाँ, आप यहाँ आना चाहेंगे, आ जाइए, please. Rajiv Khare Saab. So what we are going to do in this, you will notice a lot of activities. Language is a practice. Language with technology is a different kind of practice. भाषा और टेक्नोलॉजी का जो रिश्ता है वो बहुत अंतरंग है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से. अब एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है. जस्ट इमेजिन द लैंग्वेजेस दैट were big languages in the medieval period or till the medieval period. I am thinking of Awadhi, I am thinking of Braj, I am thinking of several, I am talking about Hindi belt languages. And those big languages became bolis with the onset of modernity because they all missed the print bus on one reason, on one account or the other. So they became bolis of Hindi because Hindi became the honcho language of print. Okay? So, but we are all, this is our Raj Bhasha. This is also a language जिसमें लोगों ने काफ़ी invest किया freedom struggle के time as a tool of unity amongst various states. There were big people, non-Hindi speaking people who were speaking for the cause of Hindi because they saw an anti-colonial, the prospect of anti-colonial unity in Hindi. So, but this is a very complex historical process, the status of languages in the world and how several of us, because India is a multilingual country, all of us know at least 2 languages. I know there was a session in which one of the speakers knew 22 languages, Satyanand Nirupam told me. So, I mean, there are such linguists amongst us, but India especially is not the USA. Right? Here, everybody knows at least 2 languages. There is one real mother tongue and then the other unreal mother tongue, etc. Okay? So, there is going to be a lot of activity in this. Rekhta, Nitin, you know. Rekhta, everybody knows. Rekhta, everybody uses. They have done stellar work by not only preserving and digitizing Urdu, which is a kind of, looks like an endangered language, but the more it looks endangered, the more evidence we find of it being used, even by youngsters. And Rekhta must be given credit. Apart from the strength that Urdu, right, itself represents, in terms of its poetry, in terms of the wealth, in terms of its musicality, in terms of the way it carried that wealth into something like Hindi cinema. And Hindi cinema is also a big contributor, right, to what we call the progress and of Urdu. Ashim Ghosh has been working since the 1980s on how to work with languages, learn languages by playing languages, and he will tell us also a bit about the evolution of these tools as the language itself developed technologically. Okay, and Rajiv Saab. And I thank the whole program team in setting up this panel. I'm not the only one. Sahab, he has been developing, I was just telling him, I should have met him much earlier. He has developed such beautiful fonts, Samanvay that you see, right? So it's his design. And he has been developing fonts for people, for publishers, for anybody who wants it, obviously for a fees, because it's a time-taking process. And he'll tell us offline and online, and also in a very physical sense, how he worked on those beautiful fonts. What does it take? Why are these scripts, why is this important? It's important because in language lies memory. That language then gets memorialized through scripts. What about those languages that still don't have a script, who also miss that print bus? Because print did not, could not make you speak. You could read. And in a country which is by and large still illiterate, right? The
importance of technology, whether we talk about radio, whether we talk about cinema, whether we talk about now the internet and the computers, right? So that is why it's a good moment to think about the future of the languages that miss the high modernity moment, but also the languages that are bolis. So can we make this transition from the oral to oral digital? Can these bolis become equally big languages? That's one of the questions, and I'm sure not all of us are going to answer that. What we are going to do is, we are going to tell you about the practices that we are involved in. I will start with Nitin. Nitin. Hello. Hello everyone, and thanks for coming. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। मेरा मेन यहाँ पे जो पर्पस है बताने का वो ये है कि रेखता ने पिछले 10 साल में जो आर्काइविंग का काम किया है वो किस तरह किया, क्या चैलेंजेस आए, और उससे दूसरी भाषाओं के लिए अगर वही काम हम रेप्लिकेट करना चाहें तो क्या सीखें ले सकते हैं। सो रेखता ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर सम ऑफ यू नो अबाउट इट। हम लोगों ने उर्दू भाषा को इंटरनेट पे लाने का जो पहला काम किया वो रेखता से शुरू हुआ। तो शुरुआत तो कुछ उस तरह की थी कि जैसे ब्लॉग्स पे आपको इकबाल का, गालिब का, फैज़ का, कहीं किसी कोई दीवाना उनका है, उसने उनकी पोइट्री इकट्ठी कर दी, लेकिन वो बहुत क्रेडिबल ब्लॉग्स या इस तरह के सोर्सेज नहीं थे। तो शुरुआत तो पहले ये हुई कि जो बहुत वेल नोन पोइट्स हैं उनकी पोइट्री को एक एडिटोरियल स्टैंडर्ड के साथ इंटरनेट पे लाया जाए, जो किताबों में पहले से था। तो ये तो बहुत जल्दी हो गया। उसके बाद फिर ये था कि जो किताबें लाइब्रेरीज़ के पास हैं उनको किसी तरह सुरक्षित रखने के लिए उनको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। तो ये जो मेन कहानी जो मैं बताना चाहता हूँ वो इसी से मुतल्लिक है कि कई किताबें जो वैसे विलुप्त हो गई होती, कई किताबें जिनकी सिर्फ एक कॉपी बची थी, उनको भी रेखता ने डिजिटाइज किया। किस तरह लाइब्रेरीज से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिल के आज हम लोगों ने उर्दू भाषा की करीब 3 लाख किताबों को डिजिटाइज कर चुके हैं हम लोग। और हमारा एक ये अंदाज़ा है, इसको मैं एक ऑफिशियल फिगर की तरह तो नहीं बोलूँगा, पर हमारा एक अंदाज़ है कि इंटरनेट पे आज जितने भी आपको ऑनलाइन बुक्स उर्दू से रिलेटेड मिलती हैं उसकी 70% इसी सोर्स से निकली हैं जो रेखता ने लाइब्रेरीज के साथ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ डिजिटाइजेशन किए। अब इसमें किस तरह की हमारा मतलब इस तरह का काम एक नई भाषा के लिए शुरू करने में किस तरह शुरू करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें शुरू में तो ये है कि पहले तो कोई यकीन करता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं वो सच में कोई ये करके देगा। सब सोचते थे कि ये बोलेंगे कि हाँ हम डिजिटाइज करेंगे, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ट्रस्ट नहीं करते थे। दूसरी बात, आज से 10 साल पहले शायद इसकी ज़रूरत लोग कम समझते भी थे कि कितना फ़ायदा है अगर प्रिजर्व कर लें हमेशा के लिए डिजिटल फॉर्म में बुक्स को। तो शुरुआत में इस तरह की चैलेंजेस, और सबसे बड़ी बात किसी को ये भरोसा नहीं होता था कोई क्यों मुफ्त में करेगा। जैसे रेखता का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है ये है कि हमने इन किताबों को जो लाइब्रेरीज में थी शायद ख़त्म भी हो जाती हैं, उनमें से कई किताबें, उनको हमने डिजिटाइज करके इंटरनेट पे डाल दिया। और उसके लिए वो किसी पेवॉल के पीछे नहीं है, कोई हम आपको सब्सक्रिप्शन की हफ्ता वसूली नहीं करते हैं। जनता ऐसे ही देख सकती है जाके उन किताबों को। तो लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन क्यों करेगा। तो शुरुआत में इसलिए बहुत रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर कई बार कई अच्छी चीज़ें तो नहीं, चीज़ें बुरी ही थी। जैसे एक बार मध्य प्रदेश में इकबाल लाइब्रेरी में बाढ़ आ गई, तो उनके जो नीचे के 2 रैक थे सभी दुर्लभ किताबों के, जब एक बार वो खत्म हो गए तो अचानक सबको समझ में आया कि इससे अच्छा इसको इंटरनेट पे हमने डाल लिया होता। तो इस तरह लाइब्रेरी से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जिसमें सबसे ज़्यादा कई स्टेट्स में, जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी बिहार में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंजुमन तक की जो फाउंडेशन है, जामिया हमदर्द, इन सब में करीब हम लोगों ने 60 लाइब्रेरीज के साथ मिलके 20-30 शहरों में अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स बना के किताबों को डिजिटाइज किया। इनमें कई किताबें ऐसी थीं जिनकी हालत इतनी खस्ता थी कि आप उसको उठाएंगे तो अचानक आधी किताब नीचे गिर पड़ेगी। तो इन किताबों को आप अगर सोचें कि नॉर्मली आप ऐसे फोटोकॉपी मशीन में डाल दें तो किताबें बर्बाद हो जाएंगी। तो उसके लिए हम लोगों को एक थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, एक वी शेप्ड क्रेडल मशीन हमने बनाई, जिसमें कमज़ोर किताबें जिनकी बाइंडिंग वगैरह ख़राब है उनका भी ठीक से उनको हम स्कैन कर सकें। तो इस तरह कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और
धीरे धीरे काम करते करते 10 साल में ये हमने एक रिपोजिटरी बनाई है। इसका आज जैसे आप लोगों ने रिसेंट उसमें ये सुना होगा कि अंग्रेजी मॉडल के लिए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए गए हैं, चैट जीपीटी और ये सब, तो कितना डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया उनको ट्रेन करने के लिए। हम लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि हमने जितना डेटा जमा किया है उर्दू लैंग्वेज के लिए, लगभग इतने ही डेटा में अंग्रेजी के ये मॉडल बन जाते हैं। यानी कल को ये जो हमने मेहनत की है ये उस सब के भी काम आ सकती है। ये अलग बात है कि वो मॉडल बनाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होता है, जब आप उसकी कीमत देखें कितने मिलियन डॉलर का वो चाहिए होता है, तो अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम डेटा जमा किया है, कल को आगे बात बढ़ाएंगे उसमें। एक छोटा सा कुछ एक एग्जाम्पल और मैं पेश कर देता हूँ। जैसे नवल किशोर पब्लिकेशंस हैं, हम लोगों ने उन्होंने 100 साल से ज़्यादा कई किताबें, हज़ारों किताबें छापी है, 100 साल से ज़्यादा वो छापते ही रहे। फिर बाद में जब वक्त के साथ वो किताबें कहीं पे कोई उनको प्रिजर्व करने का कोई और तरीका रहा नहीं, तो वो उनके बेसमेंट में पड़ी हुई सड़ रही हैं, दीमक खा रहे हैं। तो उन सब जगहों पे जाके उन किताबों को इकट्ठा करके डिजिटाइज करके आज आप सब लोग देख सकते हैं रेख्ता.org पे जो बुक्स का सेक्शन है, वहाँ पे आप ये सब PDF पढ़ सकते हैं मुफ्त में। यहाँ तक कि जो सबसे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमें मिले हैं तो वो कुछ इस तरह के मिले हैं, जो कुछ PhD करते हुए रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि हमारी लाइब्रेरीज में वो किताबें नहीं थी जो हम पढ़ना चाहते थे, तो हम लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी के शांत माहौल में लाइब्रेरी का इंटरनेट यूज़ करके रेख्ता.org पे वो किताब पढ़ते हैं। तो ये सुन के हमें लगता है कि हाँ, शायद हमने जो किया कुछ उसका वाकई उसकी कुछ वैल्यू है। तो अब ये एक उर्दू के लिए हमने कुछ काम किया है जो जारी है, अभी जारी रहेगा, लेकिन अब इसी को दूसरी भाषाओं के लिए, इंडिक भाषाओं के लिए, पंजाबी के लिए, राजस्थानी के लिए, सिंधी के लिए, गुजराती के लिए, इन पे काम करना हमने शुरू कर दिया है। अगर आप में से कोई लोग हों जो इन भाषाओं के प्रति कुछ उत्साह रखते हो, इस पर मदद करना चाहें, तो ये अगला प्रोजेक्ट की तरह बेसिकली अब हम उर्दू से ज़्यादा पूरा इंडिक लैंग्वेजेस के लिए काम करने की ओर रेख्ता प्रतिबद्ध हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक शॉर्ट में ये स्टोरी थी कि किस तरह का काम अभी तक हमने किया और उससे आगे क्या निकल सकता है। कुछ एक दो इससे अलग कुछ पॉइंट्स जो है मैं और इस पे शेयर करना चाहूँगा अगर। हाँ, तो रेख्ता साइट बनाते हुए एक तो जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है कि जैसे रेख्ता एक ट्राईलिंगुअल वेबसाइट है, एटलीस्ट स्क्रिप्ट के मामले में, कि अगर आप देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बहुत से दोस्त नहीं पढ़ पाते हैं, आप उर्दू नहीं पढ़ पाते, वो तो और कम लोग पढ़ पाते हैं, तो आप रोमन में पढ़ लीजिए, कम से कम गालिब, फैज़, इकबाल वगैरह को आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है। अभी ये जिक्र भी होता है वो भाषाएं जिनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है उनका क्या होगा, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें हमें कुछ करनी पड़ेंगी। और ये करते हुए कई बार कुछ पेचीदा नुक्ते हमारे सामने आ जाते हैं जिनका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते रहते हैं। आप लोगों के सामने मैं रखूंगा कि आप लोग भी कुछ इसमें मदद करें। तो अब जैसे जब हम ट्राईलिंगुअल लिखते हैं, मान लीजिए देवनागरी, ये तो आपने जोक बहुत बार सुना होगा कि दीवाने गालिब को लोग ऐसे समझते कि गालिब कोई दीवाना था, यानी दीवाने गालिब की बात हो रही है। ये शायद आपने कई बार सुना होगा। क्यों है ये प्रॉब्लम? स्क्रिप्ट की वजह से प्रॉब्लम। लेकिन एक बार ये भी देखें, हो सकता है आपको कोई ऐसा भी इंसान मिले जो ये कहे कि दीवान ए गालिब होता है, क्योंकि देवनागरी में लिखते तो आप ऐसे ही हैं, दीवान डैश ए डैश गालिब, तो किसी को लग जाएगा कि ये दीवान ए गालिब है, लेकिन वो भी नहीं होता, वो तो दीवाने गालिब है, वो दीवाने गालिब भी नहीं है। ये ए की वो आवाज है जिसको लिखना देवनागरी में है ही नहीं। पेन आप नहीं लिख सकते, आप पन लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पैन लिख सकते हैं, पान लिख सकते हैं, पर पेन नहीं लिख सकते। वही वाला ए है जो यहाँ पे आ गया। यही आप करते हैं। अब जैसे कहना लिखते हैं और कोई कहना बोल दे तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो कहना होता है ना, सहरा, मोहरा, इस तरह के कई ऐसी आवाजें हैं जो रेख्ता में हम लोगों को ये समझ आया कि जब आप हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं तब तो एकदम बढ़िया है, सब कुछ सारी आवाजें हैं, पर अगर आपको एक अरबी का शब्द लिखना हो, एक फारसी का शब्द लिखना हो देवनागरी में, तो कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा उसके लिए। अब देखिए, अंग्रेजी के लिए जब करने की जरूरत आई तो सब लोग तुरंत मान गए। हॉस्पिटल लिखने के लिए आपने बिना बिंदी का चांद आप सहमत हो गए कि आज पहले नहीं होता था, अब होता है। ऑ की आवाज जो इंग्लिश शब्दों में ही होती है, ऑगस्ट, हॉस्पिटल वगैरह, अब हम ये कहते हैं कि ऐसी आवाज मोहरा में भी एक नई आवाज है। तो वो जब हम लोग कोशिश करते हैं कुछ, जैसे हमारा रेख्ता का पब्लिकेशंस भी है, तो उसमें हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहले रिसर्चर्स पे काम किया है, उस काम को आप लोग भी मिलकर आगे बढ़ाई है, लेकिन ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे हिंदी का है, प्रक्रिया और प्रकृति में क्या फर्क है कि एक आप री से लिखते हैं
और एक में आधा का और रा और ई की मात्रा लिखते हैं। क्यों प्रकृति को ऐसे नहीं लिख सकते थे? तो इसमें जो आदमी जानता है वो थोड़ा बता देगा कि नहीं वो री है, कुछ उच्चारण का फर्क होता है, प्रकृति और प्रक्रिया में फर्क है या जो भी है, तो उसको आप देख ले। तो अब जब ऐसी चीजें, क्योंकि हम अरबी और फारसी के शब्दों पे भी काम कर रहे हैं, ऐसी ही चीजें जब हम लोग ढूंढ के लाते हैं कि हाँ ये कुछ और शब्द है, कि हिजरा में नीचे रा ना लगा के आधा जा और रा लिखना ही उचित होगा, ये जब हम भाषा स्टडी करके ये चीज बताते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं आप हमारी स्क्रिप्ट को बिगाड़ रहे हैं, इसके साथ खेल कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थानी गुजराती के दोस्त बैठे हैं, उन भाषाओं में जब देवनागरी को लिखा जाता है तो अब जैसे कोई शब्द है, जैसे जैसे कर्यो हम लिखना चाहेंगे, देवनागरी में आप लिखते हैं तो वो आधा रा उड़ने वाला ऊपर चला जाता है अपने आप। लेकिन राजस्थानी भाषा के हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं ऐसा ना हो, अगर हम कर्यो लिख रहे हैं तो आधा रा हलंत के साथ नीचे रहे और वो अपने आप ज्वाइन ना करें। तो अब ये वो चैलेंजेस कुछ है, मैं बस ऐसा ही कुछ ज्यादा बोल गया इस टॉपिक पे, लेकिन ये कुछ मिसालें हैं कि किस तरह स्क्रिप्ट्स पे, फॉन्ट्स पे काम की जरूरत को करते वक्त हमें बस ये नहीं देखना है कि एक स्क्रिप्ट देवनागरी है तो बस हिंदी के लिए है। देवनागरी में हमें अरबी भी लिखनी है, फारसी भी लिखनी है, उर्दू लिखनी है, कल को हम जो है संथाली भाषा भी हो सकता है देवनागरी में लिखे या दूसरी भाषा है। तो जी हाँ, तो शुरुआती मेरा यही पॉइंट था, अगर आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर। शुक्रिया नितिन। रेखता की खासियत ही यही है कि वो उसने उस झगड़े को खत्म कर दिया है जिसे हिंदी और उर्दू विभागों ने जारी रखा, कि हिंदी विभाग अलग होते हैं हमारे यहाँ और उर्दू विभाग अलग होते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में अक्सर ऐसा नहीं होता है, कई जगहों पर दोनों जबानें साथ पढ़ाई जाती हैं। मजेदार है, रेखता ने न सिर्फ उस हद को तोड़ दिया बल्कि उन डिक्शनरियों को भी निकाल कर बाहर ले आए जिनको आप सिर्फ टाइप करके जब चाहे, मेरे लिए कितना आसान हो गया है कि भाई इसमें नुक्ता लगेगा कि नहीं लगेगा, तुरंत टाइप करो देख लो, है ना। तो वो काम किया और साथ में उसको उस फेस्टिवल से भी जोड़ दिया, यानी उस रिवायत से जोड़ा जो कि उर्दू की खासियत है, एक तरह से मुशायरे की परंपरा और तमाम तरह की। तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हम लौटेंगे। हम अब बात करते हैं उस जबान की जिसके स्क्रिप्ट के बारे में झगड़ा भी है और उसके अस्तित्व के संकट के बारे में लोग कहते हैं कि अस्तित्व का संकट है। कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, कितनी स्क्रिप्ट्स हैं, क्या उसमें कुछ लिखित मिला है जिसको डिजिटाइज कर रही हैं लगातार राही और एक्सप्लोर भी कर रही हैं कि उस जबान में क्या है। सिर्फ जबान नहीं बल्कि जबानों में, कई जबानों में आप लोग बांग्ला के साथ भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, OCR भी साथ साथ चल रहे हैं, OCR का करेक्शन भी चल रहा है। मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी का लैब जब विजिट किया तो वो देखने लायक तजुर्बा था। तो राही, टेल अस व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब हम सामने जा सकते हैं, है ना हम लोग, क्योंकि पावर पॉइंट चलेगा तो हम खुद ही नहीं देख पाएंगे। Thank you all for joining us here. Thank you for inviting me. And above all, I would like to start my presentation by thanking our forefathers and foremothers, of course. Our ancestors with whom they have had a very hard time, as it seems, and we are still exploring the history, the historicity, the archiving, और उसका जो परंपरा है, what is parampara? We are still questioning such
perhaps basic things, but very important ones. And the little that I have been able to do in a couple of years is to try and understand myself, my own ancestors. I grew up in a very small town, but a town nonetheless, not in a village from where most of my ancestors had come from. So I have grown in a place where no one, कोई आसपास नहीं थे जो कि हमारी भाषा बोलते थे. So it was a challenge growing up, and abhi bhi there are people who ask, how do you know your mother tongue? For me, it's the most basic thing that to know your mother tongue is, sabhi ko aata hai, so what's so important about it? So anyway, exploring such things and trying to understand what it entails, what is the history or what is the oral history even, to the community, to the people, and what is there in itself that I had missed out during my younger years. And with the rapid changing environment that we live in, we are all born, in fact, bilingual and trilingual. I had no choice but to learn 4 languages to be able to communicate to anyone nearby. यहाँ पे भी, Hindi has been my, I guess, 3rd language, English my 4th language. So it's a necessity of survival to learn languages. And it has done many things to us, good, bad, as well. But of course, I'm very thankful because with languages comes the great resources of culture, the diversity, and the mentality to be more accommodating and inclusive in all these tiring times as of now. So today I'll mostly concentrate my talk on a resource that I have been trying to archive. I have been working with Adivasi heritage. I had collected songs, Santali songs, the recordings, which I'll not talk about it today. I'll talk about texts only today. Is it changing? Is it not? It's supposed to change, right? Yeah, just bear with me. So what inspired me is the fact that the most of our culture has been orally transmitted. And the first initiation of writing has been as late as 1890s, where आसपास के जितने थे सारे के like 500,000 साल से लिखते आए हैं. But it's very interesting to me to see what has been the influence of the changing from an oral to a written one. And that too, this transformation, how has it shaped the understanding of history, the understanding of being. The first people who had started writing Santali, were the Christian missionaries who had settled in a small village, a very sleepy town called Benagaria, now in Jharkhand. So they are the ones who had come and tried to write Santali in the Roman script. As we go on, we will unravel many more scripts, so to say. So when these missionaries went back, especially P.O. Boding, Paul Olaf Boding, in whose name the archives at Oslo's are there, he had taken almost like 30,000 pages of manuscripts and documents with him just before independence. So everything was there till I guess 2019, yes. Usse pehle people in our country, people in Bangladesh, the Santali speaking population had no access to the materials that were written in the 1890s, the first ones. So this archive, when it came online, I was like
very, very, inspired and thought, हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए. We should also have this preservation, and this is a way of conservation. Our heritage, which is say like not so much into print, so there is just one book, किसी ने भी बहुत मुश्किल से publish किए हो, and it's just once printed or maximally twice printed, and it goes out of print in say 20 years, if not less. So when we look at endangerment of texts, it can be even 5 years. So this is the collection put up by the Museum of Cultural History in Oslo. These are a screen grab from their website. So this is Paul Olaf Boding and his manuscript that has been translated. Please go to the website if you are interested, and there's a plethora of knowledge lying there to be explored. So this is the first manuscript that was written, handwritten basically, and now it is in print, 7 volumes. The written documents are almost of 10 volumes, which was the first Santali dictionary, the Santali English dictionary, and this is the basis on which this dictionary was prepared. This I find very fascinating. While archiving, you come upon, you chance upon new histories, you chance upon, it's like a clue and you just can't stop looking for it. So this is the copy of an agreement of how Santali shall be written, dated May 24-25 in Barwar and signed by Screfruit, Boding and the people over there. So it was a colonial endeavor, yes, of course, but it did serve a good purpose of at least documenting, howsoever be it, of a time that was. Sorry. Yeah, so what we did could not have been possible without people contributing, preserving documents, coming under very difficult situations. So I'll share a couple of our findings, the team that we worked at Jadavpur University. This is now on the website and can be accessed online. Yeah, this was my research team, Shutokriti Dotto, who is now pursuing her PhD in the US, Sitaram Baske, and Amritesh Bishash. They were all technical assistants as well as local people who were looking at finding where to find documents and surveying where do we get to find old collections. I'll share a couple of the collections. These are the collectors, Mahadev Hasda, this field collaborators. Oh, sorry again, I'll have to do this. Yeah, if you look at the website, you will find the private collections of W. Soren, Rabon Bashke, Sushil Bashke, and many more. What I would like to share here is what is there it is in the documents. So some of the documents that are there, I'll share. As you see, we were talking about scripts and scriptuality and what does it mean, about how do you pronounce certain words, how do you copy the pronunciation, something which is so, you can hear it and you try to write it down, the correct pronunciation, what do you understand by correct pronunciation and such. So Santali is written in 5 scripts as of now, and there are instances and there are debates going on between which is the most legitimately, most, the script which is most good at capturing the pronunciation. So you will see documents in Devanagari,
in the Roman script, in Olchiki, in Ohomia, as well as in Bangla, of course. So the debate is a very important one, but also looks into the division, as we have been discussing about the multiple histories and the myths of histories. काफी लोगों ने हम लोगों ने भी ये भी सुना है कि like India was divided into states depending upon the linguistic barriers, right? So ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन चली थी, it was before independence. It started before independence. The independent space for where, if you go back and see, it started during 1855, even before the Sepoy Mutiny, to be governed by their own people during the Santal Hul. But, well, we don't talk about it much. I'll not talk about it here either. So this is Dhadwa, and we had digitized 32 volumes, which range from 1931 to 1936. I will read a bit from Dhadwa. Why is it not changing? Yeah. So it's yet to be analyzed, so to say, but these are some of the things that you can see that I had translated here, and this was published in Dhurva. Kabli Baria Mutan Minatakwa. Pahil Mutan Teko Nyeloa, Tisre Adi Dulerte Kichri ko Emapekana. আর দশার মুঠনতে তিসরে সেপে খকয় কো লাগি লাঠি ঠেঙ্গা তেকো হিজুয়া আর টাকা দেন ছাড়া পারম বাকো মেনা নোয়া দশার মুঠন দ বড় বতর গে কো নেলোয়া মাসে নেলপে আদি আলগা গিয়া. So this is a picture which shows the both faces. It's a riddle. But it also shows how the representation of the Kabliwala of that time in a place represented by the missionaries of who had come mostly to transform Adivasis and the white burden and transform into Christianity and save them, being the savior and all that. So along with that, I'll also like to share this, which was published in 1934. You can see the representation of the Adivasi by the missionaries who had come from Danish colonies or had come from Norwegian missionaries. So in this month, after harvesting paddy, all Santals go to visit relatives. And why not the Goslings? They would also go. We would go to a relative's place where there is ample water. However, the children of men or the Santals, especially during Sohrai, go somewhere where there is ample handi or the rice beer and spend 5 to 6 days swimming in handi. Some say the children of men drink and behave like us during their festivals. Being a geese, this is a very shameful to us. We go straight to visit our relatives, stay very well and come back well and good. However, many Santals, not all, go to visit relatives as sane people, stay like street dogs and come back as pigs. How honestly, we are distant relatives through Has Hashil, but dogs, pigs and drunken men are not related to us. That is all I have to say. So this is a moral story that we can see from Dhadwa and the message behind it as well. I'll finish this off with another small song, which is the 30th Roar, or the Madi Sereng, which is
again a cultural indication of culminating one person during childbirth into the community. So we were also talking about translation in terms of cultural translation and the understanding of a particular community, not only through the languages, but the whole culture that it represents. Well, I'll end my talk here because we are late. Yeah, these are some of the text as well. I'll not go into it. Just pass it on, please. So these are the different Hord Shambad that was, you can see, written in Devanagari as well. And this is the website of our university. You can go to university website and explore many other archives, songs, Hindustani classical musics as well, which have been digitized. What I would like to discuss at the end, perhaps in the question, not now, are the questions that the archives raise about indigeneity, identity, knowledge, the decolonization and the cultural hegemony, and of course trans-borders, which we might discuss after the session as well. Thank you. Thank you, Rahi. Sorry, I had to interrupt you. It requires a whole presentation, 50-minute class, right? So let's move on. We are also doing our little bit. E-Gangotri is a huge project on archive.org. Chetan Pandey is the person who has been running it, mostly from the money that he earns as an engineer in Singapore. And he invests that in scanning old materials, Sanskrit books, but not just Sanskrit books, written in Sharda script, Kashmiri books, lots of material you can find, Hindi books, a lot of Urdu books also. CSDS is also doing its bit by trying to scan material that you might have heard of or might have seen in libraries, magazines, yes, of 60s, 70s, 50s, etc. Those magazines, inshallah, will be available, made available very soon. But look at once again, this different scripts and different borders that these languages traverse. And there is an element of play at the very moment when you learn a language. The more entertaining it is, and we also play with language. That's why every child indulges in all kinds of ungrammatical behavior, and then we laugh. It's a joke. Children's language is a joke, and we then train the child. Ashim Ghosh believes that we must let the child remain a child if we want him or her to learn the language. Tell us how. सबको नमस्ते। मैं काफ़ी कुछ लिख के लाया था, वो समझ नहीं आ रही मैं उसको पढ़ूं कि नहीं। इतनी सारी अच्छी बातें सुनी हैं हमने भाषा के बारे में, इतिहास के बारे में। But taking from what Ravi said is, I think play is not something which should be limited to children. In fact, that's one of the biggest mistakes we make. And as we grow older, we lose touch with playing. And in fact, it should be essential to all human beings while they're alive to be in touch with the idea of play. और भाषा के साथ ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं, हम बातें करते हैं साहित्य की, शिक्षा की, संस्कृति की, पर हम भूल जाते हैं कि यदि हम संस्कृति को ही लेके चलें, कि यदि हम एक भविष्यवादी और प्रगतिशील संस्कृति चाहते हैं या साहित्य चाहते हैं, तो हमारी भाषाएं भी प्रगतिशील और भविष्यवादी होनी चाहिए। और अफसोस की मैं औशिम घोष हूँ नहीं, अफसोस कि हिंदी के अंदर मेरी मातृभाषा और मेरी मैतृभाषा दोनों हिंदी हैं। और अफसोस की बात यह है कि बड़े अरसों से मैं देख रहा हूँ कि
हमारी भाषा की आत्म ऊर्जा घटती जा रही है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बच्चों को ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, और ये एक हकीकत की बात है। और साहित्य अगर उन्हीं छोटे से गुटों में रह जाए जिनको हिंदी के साथ कुछ जुड़ाव है या उनको आनंद आ रहा है, तो वो साहित्य नहीं, वो एक सब टेक्स्ट छोटी सी एक टापू की तरह बन जाती है। हमारी भाषा बहुत ही विस्तृत है, हिंदी नहीं है जैसे आपने कहा, हिंदियाँ हैं। और मैं क्योंकि दिल्ली का हूँ तो यहाँ की भाषा हिंदुस्तानी खड़ी बोली जो हम दिल्ली में बोलते हैं वो लेके चलता हूँ। और मुझे लगा कि हमारी भाषाओं में नई ऊर्जा लाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो मैंने कुछ अध्ययन किया, मैंने बर्कबेक कॉलेज के साथ एसोसिएट स्कॉलर के हिसाब से लिंग्विस्टिक वाइटैलिटी पे थोड़ी स्टडी करी। हम पंजाबी पढ़ रहे थे और अमृतसर में दिखने लग गया कि अंग्रेजी सबसे ऊपर है, उसके बाद आती है पंजाबी, फिर आती है हिंदी। दिल्ली में तो पंजाबी का कोई नाम ही नहीं है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है हमारी भाषाओं से धीरे धीरे वंचित होती जा रही है, और किसी रूप में हमारे हुनर का माप हमारी अंग्रेजियत बन गई है, हमारा हुनर नहीं है। तो यदि हमें अंग्रेजी बड़ी बेहतर तरीके से आती है तो हम बड़े ही हुनर वाले हैं, यदि अंग्रेजी नहीं आती है तो हमारी हुनर जाए खसमण खानू, जैसी मेरी नानी बोलती थी। तो इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम युवा पीढ़ी के अंदर हिंदी के प्रति और अन्य भाषाओं के प्रति भी, पर क्योंकि मैं हिंदी पे ही अपना ध्यान रख रहा हूँ, हिंदी के प्रति उत्साह और एक नई ऊर्जा न लाए तो हमारा इतिहास और आने वाला इतिहास और हमारे आने वाले साहित्य जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने वाली है, और ये दिख रहा है। तो मुझे लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए, और ये 80 के दशक से काम मेरा शुरू हुआ है कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच में देखा तो शब्द खेलों का जो योगदान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और क्या अंग्रेजी के कई प्रसिद्ध शब्द खेल हैं, आप जानते ही होंगे, स्क्रैबल, वेरियस बॉगल, जो भी हैं। इन्होंने जो अंग्रेजी की प्रगति के लिए जो किया है वो और किसी इतिहास या साहित्य ने नहीं किया है। तो मुझे लगा, और ये फिर 80 के दशक में एक प्रश्न उठा कि अब हिंदी में शब्द खेल क्यों नहीं है। तो अब बताएं, 44 अक्षर, इतने सारे आधे अक्षर, इतनी सारी मात्राओं के साथ शब्द खेल बनाना एक नामुमकिन चुनौती है, सर फिरा सा काम है। और इसको सोच के ही ज़रा हक्का बक्का हो गए थे। पर हमारा काम, जो शब्दकोशिश नामक एजुकेशन स्टार्टअप का प्रतिनिधि हूँ, संस्थापक हूँ, हमारी शुरुआत वहीं से होती है कि हम अपनी भाषाओं में इस प्रकार की नए खेल, नई पहेलियां, जो केवल वर्ग पहेलियां नहीं है, वर्ण पहेलियां हैं, और काफ़ी, अब आप फॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, जो मतलब ट्रू टाइप से यूनिकोड की जो जर्नी रही है। यूनिकोड में हमारी भाषाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रू टाइप में भी थी, कभी मात्रा टेढ़ी लग रही है, के पे अभी तक टेढ़ी मात्रा लगती है, हर बार खटकती है वो बात देखकर। तो मैं अब आपको इस यात्रा पे ले जाना चाहूँगा जहाँ मैंने शब्द खेलों का काम शुरू किया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग माय स्क्रीन। चेक। तो बड़ी जल्दी हमने अक्षर गोटियां प्रस्तुत कर दी, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शब्द खेल बनाने में एक क और एक श तरह गया तो नहीं होंगे, तो कितने क। तो सबसे पहला डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो मैंने किया कि पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी लेटर्स इन हिंदी वोकैबुलरी, कि अगर हमें शब्द खेल बनाना है तो अगर एक श तरह गया हो तो कितने क, कितने ह, कितने र इत्यादि। तो मैंने इसकी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, ये 90s की बात। चलिए, अक्षर तो बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ गए, अब इन अक्षरों के साथ हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम शब्द बना सकते हैं, जैसे आम बनाया मैंने, या सत्र बनाया,
ऐसे करके आप देख सकते हैं कि इन अक्षर की गोटियों के साथ बहुत सारे शब्द बचे। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे माँ बनाना है। अब माँ बनाने के लिए मुझे मात्रा चाहिए। अब मात्रा कैसी है? अब मात्रा हमारी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और इस पर ये अब सारा ओरिजिनल काम है। इस पर पेटेंट्स अपने हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बना है। बड़ी तरद्दत और बड़ी मेहनत से हमें इस काम को निकालना पड़ा है, प्लस फॉन्ट्स हमें रीराइट करनी पड़ी कई कारणों की। तो माँ बना, पर ये तो सारेगामा वाला माँ है, तो मदर वाला माँ कैसे बनाएंगे? तो ये जो मात्राओं का जो प्रारूप है वो खांचों में आप देख रहे हैं। तो माँ के ऊपर हम चंद्र बिंदु स्टैक कर सकते हैं, ये स्टैकेबल है, तो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाती है। तो मतलब कि अब सारी मात्राओं की दिक्कत है वो हमने सॉल्व कर दी। अब इसके आगे देख सकते हैं मात्रा सीख सकते हैं। तो सीखने की भी हमने एक पूरी प्रावधान रखी है, स्तर प्रति स्तर, सरल मध्यम अक्षर इत्यादि, ये कई सारी चीजें हैं जो हमने करी हैं। अब रह जाती है आखिरी चीज कि मुझे स्त्री बनाना है। तो स त्र छोटी की मात्रा, ये क्या सही है? नहीं, क्या गलत है जी? आधा सा चाहिए, बड़ी ई की मात्रा चाहिए। तो देखिए अब शिक्षण में कितना सरल हो जाता है। मैं गलती करूं तो उसको सुधारने में काट पीट के सुधारने की जरूरत नहीं है। मैंने मात्रा बदल दी, सही मात्रा लगाई, तो वो सत्री बन गया, स्त्री नहीं। आधा अक्षर कहां से लाएं? ओ आई एम सॉरी, यहां से तो नहीं है। क्या बात है सर, बिजली के साथ चमक रहा है मेरा काम। स्थिर हुआ सर, कुछ बेटर? ओके, तो अब आधा अक्षर हो गए, मात्राएं हो गई, मात्रा के ऊपर मात्रा रखनी समझ आ गई, केवल आधे अक्षर की बात है। तो हर व्यंजन के पीछे उसका आधा रूप है। तो हमने पूरी वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था क्या है? यह है हमारी वर्ण व्यवस्था। पूरी वर्ण व्यवस्था अक्षर, आधे अक्षर और सारी मात्राओं को हमने गोटी के रूप में प्रस्तुत कर दी, ईंटों की तरह। मात्राएं डायक्रिटिक्स, ये स्टैकेबल हैं और एक ही प्रकार से बैठ सकती हैं। आप इसको गलत रूप से रख ही नहीं सकते क्योंकि उसमें खांचे बने हुए हैं। तो ये केवल हिंदी नहीं, ये मतलब उर्दू के लिए भी बना है, क्योंकि जहां जिस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, अरबिक, उर्दू, तमिल, बांग्ला, हर प्रकार, मराठी का हमारा ऑलरेडी तैयार है, नेपाली तैयार है, तो इसमें बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं सीधा आता हूं यहां से डिजिटल पे। तो ये हो गया, ये पूरी व्यवस्था हो गई। हमने फिर हमारी शब्दकोश टेक्नोलॉजीज को एनालॉग, क्योंकि ये एनालॉग जो है ये बरकरार रहेगा। डिजिटल भारत के अंदर एक अफवाह है, एक सपना है, जो हो सकता है 25-30% लोगों तक पहुंचे, पर भारत 25% नहीं है, भारत 100% है। और संपूर्ण भारत की शिक्षा, भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए हम इस बोर्ड और इन गोटियों का प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी पूरी व्यवस्था करी है। पर डिजिटल से हमने भागना नहीं है। मैंने पहला डिजिटल गेम बनाया था हिंदी में 2004 में, जिसके अंदर उस समय मतलब हम लोग ट्रू टाइप फॉन्ट्स, जेपैग, ये वो काफ़ी सारे करते थे। फिर फ्लैश आया, फ्लैश में हमने फिर एक और पूरी व्यवस्था बनाई। अब आ गए यूनिकोड में, बहुत सर मारे हमने, स्टार्टअप इंडिया के साथ झगड़े हुए, स्टैंडर्डाइजेशन, फॉन्ट फैमिलीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। जो फॉन्ट्स के साथ काम करते हैं वो जानते ही होंगे। हमारे अभी तक फॉन्ट फैमिली स्टैंडर्ड नहीं है, कभी नुक्ता इधर हो जाता है, कभी बायां हो जाता है। भाई हम कर तो देते हैं, पर मुझे माफ करना, खटकती है बात कि हम देख कैसे रहे हैं इस बात को, और उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। हमारी भाषा है, अंग्रेजी में आई का जो ऊपर छोटा सा नुक्ता लगता है वो दाएं बाएं हो जाए तो भैया वर्ल्ड वॉर 4 शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 तो अभी चालू है। तो हम इसमें anyone can join in. If you want to log in with your phones, you go to hindisoeasy.com and you can join us right now. And I'll just take you to a trial zone. ये मुफ्त है। इसके अंदर हमने कई सारी पहेलियां बना रखी हैं। हमने 6 स्तर दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके अंदर आप पढ़ पा रहे हैं कि नीचे दिए शब्दों में कितने शब्दों में म है। तो लगते बड़े सरल है, पर अच्छे भले कई बार फंसते हैं। तो बताएं अब कितने शब्दों में म है? 2, ठीक है। तो 2 को क्लिक करें और दर्ज करें। वाह शाबाश, आपको 10 पॉइंट मिल गए।
अब अगला, अब दिए गए नोटों में से 100 का नोट कौन सा है? तो अब दिख रहा है, अब आसानी से बताएं कौन सा है, ये या ये? यही लग रहा है। चलिए क्लिक करें, दर्ज करें, क्या बात है, और 10 पॉइंट मिल गए। तो अब ये कहने की बात ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमने टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षण व्यवस्था को एक खेल रूपी डिजिटाइज कर दिया। अब यहां थी, और मैं ये भी दर्शाना चाह रहा हूं कि हमने काम कितना किया है। ये जो है, अब इसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार की पहेलियां मिलेंगी। तो जैसे ये है, इससे क्या बन सकता है, जल्दी बताएं। हाथ, वेरी गुड। हा, थाल, थाह, हाँ ठीक है, था भी बनता है। तो हाथ बना लें, इसको दर्ज करें, वो चेक करता है, कहता है हाँ जी अवेलेबल है, आपको 6 पॉइंट मिल गए। था, चेक करें, बिल्कुल है, आपको 12 पॉइंट मिल गए। थी, किसी ने कहा, चेक, अभी सुना मैंने एक शब्द, हाथी, देयर यू गो। अब इसके अंदर जो है, अगर आप पढ़ेंगे, अभी अंग्रेजी में लिखा है, पर हर पृष्ठ पर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। जिनको दिक्कत होती है हिंदी पढ़ने में, अंग्रेजी पढ़ने में, वो हिंदी में चले जाएं। जी हाँ जी, कोई बात नहीं, वहां भी पहुंच जाएंगे। वो श्री श्री रवि जी ही बताएंगे कि श्र कौन सा लगेगा। तो अब हम हाथी यदि बनाते हैं और इस पहेली में सारे वर्ण मिलाकर एक शब्द जरूर बनेगा, तो वाह, मुझे 20 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट देने का मतलब, कहने का तात्पर्य है कि ये रैंडम नहीं है, इनमें से कुछ भी रैंडम नहीं है। ये जो आपको स्पेल चेक दिख रहा है, मेरे पास 2.25 लाख शब्द हैं मेरे बैकएंड में, जिससे कि सरलता से, मेरी भाषा है, 3-4 हज़ार शब्द में मैं पेल नहीं रहा हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरी भाषा है, हमारी भाषा है, जिनकी भाषा हिंदी है, हम सबकी भाषा है, उसे बड़ी गहराई से हम देखें। और हमने इस वर्ण को भी इसी प्रकार से, वर्ण जो हमने प्रस्तुत किया है, ये बड़ा मुश्किल रहा है हमारे लिए। तो एक ये हो गया। अब ये स्टेप्स, अब 3, ये लेवल 3 है, लेवल 8 तक ये बढ़ती जाएंगी। तो ये पहेली में छुपे ये शब्द बनाइए, गुब्बारा। अब ये आपको हमारा सिस्टम प्रयोग करने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो स्पेलिंग तो आना चाहिए, देख देख के आप बना सकते हैं। वाह, तो मैंने सही बना दिया। हाँ, इसमें नहीं है, इस पहेली में नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे शब्दकोश में इसीलिए इतनी मेहनत लगी है कि दोनों वाजिब है जी। तो गुब्बार भी होता है, मतलब कई सारी चीजें निकलती हैं। तो नुक्ता सहित और नुक्ता रहित दोनों इस्तेमाल होती हैं। अब मैं तय नहीं करना चाह रहा हूं, ये एजेंडा नहीं है, मैं लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं। जैसे जिंदगी भी है, जिंदगी भी है। उच्चारण की बात किसी ने करी थी, तो उच्चारण हम लिपि में तब कर सकते हैं जब हमारे उच्चारण का मानक हो। अब क जो है, अ जो है, जैसे बिहार में जाएंगे वो क हो जाता है, तो जैसे वो लिखेंगे वो तो अलग से उच्चारण आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आखिरी एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें ये दिख जाता है कि ये हमारी पूरी वर्णमाला है। हमारे पास स्तर प्रति स्तर उच्चारण मदद के साथ एक पूरी व्यवस्था है। और इसमें जैसे यदि मैं एक शब्द बनाना चाहता हूं, जैसे राष्ट्र, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, र, उस पर आ की मात्रा डाली, वो जुड़ गया। आधा श, आधा ट और र, तो नीचे बन गया राष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल। पर मैं यदि इसको दोबारा करूं और इसको अगर मैं चेक करता हूं दर्ज करके, मुझे पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब मैं यदि इसको डायरेक्टली लिखूं, अब मैं दिखा रहा हूं कि हमने टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से इसको क्रैक किया है। सॉरी, ये आधे में तो जाता ही नहीं है ना, आधे अक्षर में मात्रा ही नहीं लगता है। तो र पे आ की मात्रा, आधा श, आ की मात्रा, सॉरी ड्रॉप करनी थी, र पे आ की मात्रा,
आधा श पे मैं डायरेक्टली ट जब ड्रॉप करता हूं तो वो वहीं जुड़ जाता है। देखिए, इस पे र ड्रॉप करता हूं तो वो भी जुड़ जाता है। अब राष्ट्र तो बन गया, मुझे राष्ट्रों अगर बनाना है तो मैं मात्रा उस पर ड्रॉप करूं तो मात्रा भी जुड़ जाती है, और उस पर अनुस्वार डालूं तो अनुस्वार भी जुड़ जाता है। तो हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमारी व्यवस्था के साथ आप बना पाएंगे, क्योंकि हमने उसे इस प्रकार से कोड किया है कि थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे छुपा हुआ है और वो समझ आ रही है उसको कि क्या करना है। तो मुझे बताया जा रहा है कि मेरा समय लगभग खराब नहीं नहीं, देखिए, अब मेरा समय खत्म होने वाला भी एक भाई काफी खराब सूचना है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद और सबका आभार। किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। ये भाषा रियाज है और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो वो रियाज कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये आप देख सकते हैं, है ना। और कितने डिबेट्स उसमें शामिल करना क्या है। वह इंसान जो नुक्ता के साथ लिखना चाहता है उसके लिए भी विकल्प तो होना ही चाहिए। वो इंसान जो बगैर उसके लिखना चाहता है उसके लिए भी विकल्प होना चाहिए। शामिल तभी होगा ना, इंक्लूसिव, जब दोनों तरह के लोग आ जाएंगे। तो राजीव खरे साहब, क्योंकि ये सेशन सीधे ये खुद भी हम सब ने, जब कंप्यूटर आया था, हम तो काफ़ी एंशिएंट लोग हैं, तो संघर्ष किया है। जब TTF फॉन्ट्स जिसका जिक्र कर रहे थे असीम घोष साहब, उस ज़माने से लेकर यूनिकोड, तो पहली बार जब हमने चैट किया, यूनिकोड आया, तो हमें लगा कि वाह क्या कर सकते हैं हम। पब्लिशिंग फॉन्ट्स अलग इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन फॉन्ट्स अलग इस्तेमाल करते हैं। दोनों के बीच आवाजाही नहीं हुआ करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि हम रुपया लेकर के US में घूम रहे हैं जब इंटरनेट पर जाते थे, तो यानी करेंसी वहाँ आपकी नहीं चलेगी। लगभग फॉन्ट वही काम करता है कि आपको यूनिकोड खास तौर पर वह आवाजाही संभव बनाता है, लेकिन उसको सुंदर भी होना चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, और वो सब काम करना चाहिए जो असीम घोष जिसकी बात कर रहे थे। तो राजीव खरे साहब, जिन्होंने लंबा संघर्ष और सफल संघर्ष किया है खूबसूरत फॉन्ट बनाने के लिए। धन्यवाद रहीमकांत जी। कैलीग्राफी करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, क्या आप बिना फॉन्ट के रह सकते हैं? कोई दिन आपने बिना फॉन्ट के निकाला है? जरा सोचिए। कैलीग्राफी करता हूं फिर जवाब दूंगा।
तो मैंने पूछा था क्या बिना फॉन्ट के रह सकते हैं हम? क्या आप किसी दिन बिना फॉन्ट के रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। आप सुबह उठते हैं, अलार्म देखते हैं, अलार्म में क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज फॉन्ट। वॉशरूम जाते हैं, कॉलकट उड़ाते हैं, प्रॉमिस उड़ाते हैं, पेप्सोडेंट, फॉन्ट इज देयर। मोबाइल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गाड़ी में जाते हैं, स्पीड देखते हैं, स्पीडोमीटर में आता है 80 20 120 140, इतना आगे मत जाइए, लेकिन फॉन्ट है वहां पर। ऑफिस जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, 4th फ्लोर 7th फ्लोर 8th फ्लोर, फॉन्ट इज एवरीवेयर। और रात के सोने तक फिर अलार्म सेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉन्ट। बिना फॉन्ट के कोई रह नहीं सकता। तो हाँ, रविकांत जी कहां है? समय कितना है? हाँ, नहीं है, मुझे मालूम था। फॉन्ट के लिए किसी के पास समय नहीं है। फॉन्ट के लिए कभी समय था ही नहीं, चाहे एडिटोरियल हो और चाहे एड एजेंसी हो। आई वांट द बेस्ट विजुअल, आई वांट द बेस्ट लेआउट। फॉन्ट के पास समय नहीं है, समन्वय में भी नहीं है फॉन्ट के पास समय। समय निकल चुका है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा अपनी कहानी। ओके, आगे बढ़िए। बातें तो बहुत कुछ सोच करके आया था मैं कल की बात करूंगा और आज की बात करूंगा, फिर आने वाले कल की भी बात करूंगा, लेकिन जैसा समय होगा वैसी बात करूंगा। आगे बढ़िए। थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, मैं फॉन्ट ध्यान करता हूं। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप। श्री कृष्ण ने कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि। 10वें अध्याय में वो बोलते हैं अक्षरों में मैं आकार हूं, लेकिन यहां पे कुछ और लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिए। आगे थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, लेकिन आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और आगे आइए, इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं। और आगे आइए, ये भी क्या कर रहे हैं। और आगे आइए, ये सब कुछ कहना चाहते हैं। इन्होंने अपनी केव पेंटिंग के थ्रू, हेरोग्लिफ के थ्रू और इंडस वैली में अपनी टैबलेट्स के थ्रू कुछ ना कुछ तो कहा है। और क्या कहा है आगे देखिए, या तो चित्र के थ्रू या स्क्रिप्ट के थ्रू। और स्क्रिप्ट क्या है ये देखिए। ईसा से 300 साल पहले अशोक ने क्या करवा दिया, पत्थरों पे लिखवाया। उसको मालूम था तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपकी सीडी का ओएस चेंज हो गया, रीडेबल नहीं होगी, लेकिन ये रीडेबल हमेशा होगा। आगे आइए, ये देखिए बहुत सुंदर, ये देखिए, ये दिखा रहा है एक वहां से लेके यहां तक कैसे बदला। कितने राजाओं को देखा, कितने युद्ध देखा, कितने कल्चर देखे और कितने चमचे दरबारी देखे इसने। आगे बढ़िए, देखिए ये है, जो वहां तक आया, इसने क्या क्या देखा। 300 साल पहले, 300 साल पहले, मतलब मैं बीसी की बात कर रहा हूं, और आज तक 2500-2600 साल हो गए और आ ने बहुत रंग रूप बदल डाले। आगे आगे, ई ने बहुत रंग रूप बदल डाले। आगे का को देखिए क्या हुआ इसके साथ। ओके, रुक जाइए। इतनी सुंदर सुंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई गई हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार। किसी ने भोजपत्र बनाया, किसी ने ताड़पत्र बनाया, किसी ने कागज बनाया, किसी ने सिल्क बनाया और किसी ने हड्डियों में बनाया। जैसा जिसको मटेरियल मिला, उन्होंने बहुत सुंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई हैं। आगे देखिए, स्क्रिप्ट हर जगह है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि किसने बनवाई और क्या बना था उसके साथ में, लेकिन आप फोकस कीजिए फॉन्ट के ऊपर और राइटिंग के ऊपर। आगे ये देखिए, और आगे आइए, कितना सुंदर लिखा है। लिखने वाला अगर उसका मन बहुत सुंदर होगा ना, तभी वो सुंदर लिख सकता है। आगे ये देखिए, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि सुंदर सुंदर लिखावट हुई, लेकिन वो रुकी क्यों। और आगे आइए, ये देखिए बाइलिंगुअल कैलीग्राफी। ओके ओके, रुक जाइए।
लेकिन समय बदलता गया और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट से चीजें बढ़ते 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 फैशन पे आ गई, पैशन पे आ गई। आज कैलीग्राफी की जाती है पैशन के ऊपर। क्या है वो? स्टेटस सिंबल है। मेरा शादी का कार्ड इसके प्रिंटिंग नहीं हो सकता, मेरा शादी का कार्ड तो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। राजू भाई 500 कार्ड हाथ से लिख सकते हो क्या? इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ऑर्डर होगा। मेरे पास हिम्मत ही नहीं है, लेकिन उस सेठ को 500 कार्ड हाथ से लिखे हुए चाहिए, वो पैसा देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आज की कैलीग्राफी स्टेटस सिंबल है। आगे ये भी देखिए, कुछ कुछ एडिटर के अंदर बहुत कीड़ा होता है, इतना कीड़ा होता है कि वो मुझे इस काम को करवाने के लिए होटल पार्क ले जाता है। होटल पार्क ले जाता है, वहां बिठाता है, मुझे बढ़िया सी कॉफी पिलाता है, कैपेचिनो, और उसमें कुछ डिजाइन भी बनी हुई है। ये पूरा घेरा गया था मुझे इसमें, है पूरा घेरा गया था। और आप लिख नहीं सकते, आप बना नहीं सकते, पहले इसको पढ़िए। पूरी किताब मुझे पढ़ा दी भाई साहब। पढ़ाने के बाद जब वो बन गया तो मैं मान गया कि ये कोई कीड़ा ही हो सकता है, मामूली आदमी ये काम नहीं करवा सकता है। तो ये देखिए, फिर ये देखिए, आगे आगे आगे, टाइम बहुत कम है। कहीं कहीं बैक 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 कहीं कहीं मैं जाता हूं तो वहां पर जंगल के लोग को मालूम चल जाता है लिखता है, वो तुरंत पेंट ले आएंगे खरीद करके, एशियन पेंट खरीद के ले आएंगे, ब्रश ले आएंगे, भाई साहब जरा बना दो मेरी दीवार पर भी कुछ। तो ये सब ड्रामे होते रहते हैं। आगे ये सब भी बहुत ड्रामे होते रहते हैं। देखिए, लेकिन ये हाथ का लिखा हुआ संभव नहीं है। इतनी बड़ी डिमांड है कि हैंड राइटिंग इज नॉट सफिशिएंट। आगे तब हमारे यहां पर लेटर प्रेस शुरू हो गया। लेटर प्रेस शुरू हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी प्रोडक्शन में। आगे आप डेट देखिए, नीचे डेट लिखी हुई है। और आगे ये देखिए, केसरी न्यूज़पेपर, ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है। उस जमाने में क्या उनके अंदर विजन रहा होगा, बाल गंगाधर जी के अंदर क्या विजन रहा होगा कि अपनी बात को कहने के लिए हाथ से लिखा हुआ संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने छोटी सी प्रेस लगा रखी थी और उस प्रेस पर वो जो है प्रोडक्शन करते थे अपने न्यूज़पेपर का। फिर आया टाइपराइटर, इसने तो धमाल मचा दिया इंडस्ट्री के अंदर। सारे पब्लिशर्स और सरकारी दफ्तर चालू हो गया काम वहां पर, थोड़ी स्पीड और बढ़ी। ओके, और आगे फिर तो भाई साहब, हाँ फिर देखिए वहां से इशारा हो रहा है, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे फिर बहुत सारी कंपनियां आ गई 88 86 के आसपास, जिन्होंने कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे काम किया। बहुत सारे फॉन्ट बने, और फॉन्ट के साथ साथ इनपुट सिस्टम क्या होगा, किसी को रेमिंगटन कीबोर्ड चाहिए, किसी को गोदरेज कीबोर्ड चाहिए, किसी को सियाटॉनिक कीबोर्ड चाहिए। और ये देखिए, अब मैं ये दिखा रहा हूं कि ये जो उस जमाने में 262 कोड के साथ पूरी हिंदी को का फॉन्ट बनाया गया, कितना मुश्किल था। बैक करो, तुम कहां आगे जा रहे हो, बैक करो। एक ये जो की लिखा हुआ है, की नहीं है, इतने सारे अक्षरों को तोड़ करके की लिखा हुआ था। अब यूनिकोड में सिंगल कैरेक्टर, जहां पर हजारों कैरेक्टर के साथ फॉन्ट बनता है, पहले सिर्फ 262 कैरेक्टर के साथ फॉन्ट बनता था। आगे आगे आगे, हाँ, फ्री फॉन्ट होगा कि पेड फॉन्ट होगा। अगर फ्री फॉन्ट होगा तो मात्रा अगर लेफ्ट से राइट भाग रही है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते आप, गंदा काम करके आगे बढ़ जाइए। पेड फॉन्ट होगा तो राजू प्रकाश से कान पकड़ेंगे, राजू भाई पेमेंट नहीं होगा, पहले मात्रा ठीक करो। ये है पेड फॉन्ट। आगे बढ़िए, आगे। तो ये है कि कैसे डिजिटल पर हम पहुंच गए। आगे डिजिटल से आ गया, ई मैगजीन आ गई, जहां पर फायदा क्या है, नेक्स्ट अनलिमिटेड स्पेस है। हमारे प्रिंट पे तो स्पेस होता है, इतने साइज की मेरी मैगजीन है, इतने साइज का मेरा न्यूज़पेपर है, ई मैगजीन में कोई स्पेस की बात नहीं है। ओके, ये हमारे वेबसाइट पर मल्टीपल फॉन्ट चाहिए, और किसी को हेडलाइन का फॉन्ट चाहिए, किसी को रनिंग मैटर का फॉन्ट चाहिए, किसी को फुटनोट का फॉन्ट चाहिए। क्या साइज होगा उस फॉन्ट का, और कितने मिनिमम पॉइंट साइज में वो रीडेबल होगा, और फिर उसको हम जूम भी करेंगे नहीं, उसी साइज में दिखना चाहिए। ओके, ये चैलेंज है लाइफ का। आगे ओसीआर बन गया है, बहुत बढ़िया ओसीआर है,
एक सरिता मैगजीन पूरी टेस्ट की जा चुकी है, और अगर आपको किसी को जरूरत है आप मेरे ओसीआर को टेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा तेज बढ़ो। हाँ हाँ, एक मिनट। तो इतना सब कुछ होने के बाद आनंद कब आता है? आनंद तब आता है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक सवारी बैठी हुई है, हस्बैंड वाइफ और या कोई और, उनके बीच में एक बैग रखा हुआ, उस बैग में लिखा हुआ है जालान, वो मेरा फॉन्ट है, वो मेरा फॉन्ट है। भाई बहुत ही आनंद आया। एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं, शहर में बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, होर्डिंग में आपका फॉन्ट है, वो क्या आनंद है, वो परमानंद है। लेकिन शहर से मजा नहीं आएगा, मजा तो आएगा गांव में, जब आप छोटे शहरों में पॉपुलर होंगे। ये देखिए बैक, ये देखिए छोटे से शहर में आप घूम रहे हैं और आपका बोर्ड लगा हुआ है, उसमें वो मेरा फॉन्ट है। आगे मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो का पूरा साइनेज सिस्टम मेरा फॉन्ट है, ये देखिए। और आगे तो फॉन्ट बहुत बन चुके हैं, फॉन्ट बहुत बन रहे हैं, और ऑर्डर पर भी फॉन्ट बनते हैं, पैसे बहुत लगते हैं, बहुत महंगा है कि। तो ये कहानी है, इसको मैंने थोड़ा सा तेजी में बताया, फास्ट फॉरवर्ड वे में बताया। कभी आपको फुर्सत मिले तो मुझे आप धीरे धीरे सुनने के भी बुला सकते हैं। माफी चाहूंगा राजीव साहब, हमको बहुत मजा आ रहा था, लेकिन क्या करूं, आगे बुल्ले शाह को भी मौका देना है, और इसलिए ये चूंकि इतना डाइवर्स सा पैनल था, और आपने गौर किया होगा कि हमने पास्ट के बारे में ही ज़्यादा बात की। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, चूँकि उस पास्ट में मेमोरी है भाषाओं की, और वहीं से हमारा भविष्य भी तय होगा। लिपियों में ही बहुत कुछ है, और लिपियों से आगे भी हम जाएंगे जब ओरल डिजिटल की ओर जाएंगे। तो आप सबसे माफ़ी चाहते हुए कि हम सवाल आपके नहीं ले पाएंगे, आप इंडिविजुअल स्पीकर से मिल सकते हैं, हमसे आप बाहर मिल करके सवाल अपने पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्ताओं का भी और आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद रविकांत जी और सभी पैनलिस्ट का। भाषा, लिपि और आधुनिकता के जो विस्तृत और अनूठे प्रयोग हुए हैं वो सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। संध्या का समय हो रहा है और मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगी। हमारा एक बहुत स्पेशल सेशन है बुल्ले शाह का। ये सेशन अ सूटेबल एजेंसी और मूर्ति क्लासिक्स के साथ संयोजित है। मैं इनवाइट करूँगी स्टेज पे मिस हिमाली सोडी अ सूटेबल एजेंसी से, वो इस सेशन को इंट्रोड्यूस करेंगी और हमारे पैनलिस्ट को भी। प्लीज़ वेलकम हिमाली सोडी। Good evening, everyone. On behalf of Murthy Classics and a suitable agency, we are delighted to welcome you to this very special session at this wonderful festival, IHC Samanvay, to celebrate the works of the renowned Sufi poet Bulle Shah. We will showcase Sufi lyrics translated from Punjabi to English by Christopher Shackle and published under the Murthy Classical Library of India by Harvard University Press. You can have a look at the books at Samanvay's official bookstore. We celebrate the magic of Bulle Shah's works with readings by Dr. Sumail Singh Sindhu, historian of ideas, Ambedkar University, and Garima Dutt, journalist and academic. A very warm welcome and thank you to both our speakers. We're also delighted to welcome Harpreet, singer and songwriter, who has come all the way from Mumbai to perform songs from the book. With many thanks to India Habitat Center and Samanvay, I now invite Garima and Dr. Sindhu to take the evening forward. Thank you.
जी, तो फिर शुरू किया जाए बुल्ले शाह के साथ। बुल्ले शाह कहते हैं कि जदों अपनी अपनी पै गई धी मां नूं लुट के लै गई, मूंह 12वीं सदी पसारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कहते हैं कि दर खुला हशर अजाब दा ते बुरा हाल होया पंजाब दा, डर हावीए दोजख मारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। I'll introduce him in English. So in the vibrant tapestry of the Indian subcontinent, amidst the effervescent melodies that echo through the annals of time, stands the immortal luminary Bulle Shah. Bulle Shah, the beacon of mysticism, the bard of ishq, the bard of love, and the unrelenting voice of reason and logic. Bulle Shah's poetry resonates with us in our everyday life as well. You know, we go around saying, Bulle Shah Rabda ki pana, etho patna, te utho lana. Right? And the beauty of Bulle Shah's poetry transcends beyond romance, beyond love, because he touches upon the societal ethos and the political turmoil of his Punjab at that time. I'm going to read from this very beautiful book published by the Murthy Classical Library of India. Bulle Shah lived at a time of great social upheaval in Punjab as the central authority of the declining Mughal Empire came under increasing challenge from armed rebellions by the Sikhs and from local notables establishing their own autonomy. Although these unsettled conditions are reflected in Bulle Shah's poetry, the main focus of his poetry is his abiding love for his Sufi master and guide Shah Inayat, who was from the Irain caste, and Bulle Shah was a Sayyid. So without further ado, I will take you through the legacy of Bulle Shah's oeuvre. As we celebrate this luminary, we must also recognize that there is nobody here in the audience who doesn't know him already. Bulle Shah has been celebrated, his songs, his poetry has been composed by modern maestros, Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, A.R. Rahman. He used it in Ravan, Ranjha Ranjha Kardi vi main ape Ranjha hoi, Ranjha Ranjha sab kende, mainu heer na kho koi. And then he goes on to give an entirely different twist to the song. Beguna pakda gaya, pyar mein jakda gaya. Then we have Surinder Kaur ji from Punjab, Abida Parveen ji, and of course the cult song Bulla Ki Jana by Rabi Shergill. His poetry has resonated with all of us in more ways than one. And here we are celebrating through an array of diverse verses. We have selected from this big book, few of them for you. I'll be reading in English and then it's over to Dr. Sidhu. So the first one, Ulte hor zamane aaye. Different topsy-turvy times have come, so I have discovered the beloved secrets. Crows have started killing hawks. Sparrows have brought down falcons. Horses gaze on rubbish heaps. Donkeys are fed fine meal. There is no affection among kinsfolk or among senior and junior uncles. There is no harmony at all between fathers and sons or mothers and daughters. The true gets shoved aside while the false are given seats of honor. उल्टे होर जमाने आए, हुण असां भेद सज्जण दे पाए। ਕਾਂ ਲਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਢਾਏ। ਘੋੜੇ ਚੁਗਣ ਅਰੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਦੋਂ ਖੂਦ ਪਵਾਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਏ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਾਈ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਏ।
ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ ਅਗਲੇ ਹੋ ਕੰਗਾਲੇ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਏ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਬੁੱਲਿਆ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾਏ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ आए हुण असां भेद सजन दे पाए। जो तस्वीर वो यहाँ पे खींच रहे हैं, आप याद करिए कि अगर हम सिविल वॉर की सेंचुरी जो थी इंग्लिश हिस्ट्री में 17th सेंचुरी इज द हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशंस, इज द सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशंस देयर, और उसमें भी जो नई क्लासेस जो नए वर्ग उठ के ऊपर आ रहे हैं उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी नई प्रिडिक्शंस और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, आजकल हम लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं। उसमें आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिनका टाइटल्स कुछ ऐसा था कि द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, मछलियाँ चढ़ी हुई हैं दरख्तों पे और जो परिंदे हैं वो पानी में चल रहे हैं। इस किस्म की इलस्ट्रेशंस वुडकट्स आपको हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। अब ये हैरानी की बात है कि जब बुल्ले शाह एग्जैक्टली उसी बात को अपनी इस काफ़ी में कह रहे हैं, वो जो तस्वीर खींच रहे हैं कि उल्टे ज़माने ये हुए कैसे हैं, इसमें दो बातें की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और पता चलता है कि ये लोग इतनी सादा बातचीत करते हुए कितने गहरे इशारे अपने दौर की हिस्ट्री के बारे में कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कां लगड़नों मारन लगे चिड़ियां जुर्रे टाए। अब जरा गुरु गोबिंद सिंह जी की उस बात को याद कीजिए कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। वो आगे के लिए कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा, बुल्ले शाह उसकी गवाही दे रहे हैं कि अब ये हो चुका है। तो एक लिहाज से इसको उनके एक इंटरनल डायलॉग के तौर पे भी देखा जा सकता है कि जो एक रिबेलियन पंजाब में जो खालसा के नाम से उठ रही थी उसमें से क्या हुआ। अब उसकी एक और जो इसमें एक लाइन आती है कि पूरियां वाले राजे कीते। पूरा किसको कहते हैं? पंजाबी लोगों को इसका पता होगा। जो एक बहुत ही सादा किस्म की लोई होती है ब्राउनिश ह्यू की, उसको हम लोग पूरा, और जो छोटी है उसको पूरी बोलते हैं, खासी कोर्स होती है। तो जो उस समय के सिख जो रेबल्स थे उनकी यही पोशाक थी। ज्यादा कपड़े वपड़े तो होते नहीं, एक घोड़ा होता था और एक भूरा लेके, तो उनको भूरियों वाले कहा जाता था। तो जब ये कह रहा है कि अब पूरियां वाले राजे कीते मुगला जहर प्याले पीते, सो it is also not just a description of the times, he is also saying कि उल्टे होर जमाने तो आए हैं लेकिन अभी हमने अपने उस सज्जन के भेद को भी पाया है। तो he is also kind of अपने को उनके साथ वो रख के ये बात भी कह रहा है, एक पर्सपेक्टिव की बात भी वो हमें बता रहे हैं। गरिमा। So the last line I will translate for the audience because I think there could be some people here who may not understand this complexity of Punjabi. Former leaders sit in destitution while carpets are spread for those who were at the back. Those who wore rough blankets have been made kings while former kings beg for alms. Bulla, the order came from the divine presence. Who can turn it inside? The next one we've chosen for you is Ishq di Navyo Navi Bahar. The spring of love is ever new. While I studied the lesson of love, my heart became afraid of the mosque. I went to enter the temple of the Lord, where 1,000 conches are blown. When I discovered the mystery of love, I destroyed the myna and the parrot. I became purified inside and out. No matter where I look, only my beloved is there. Meetings have taken place between Heer and Ranja. Heer is lost, searching in the river glade. My lover Ranja plays inside the folds of my scarf. I have lost all conscious awareness. People become exhausted reciting Vedas and Qurans. From prostrating themselves, their foreheads have become worn. The Lord is not in the sacred bathing places, nor the Lord is in Mecca. Whoever finds him is filled with a brilliant light. Burn your prayer rug and break your ablution spot. Do not pick your rosary, your staff,
or your stick. Lovers proudly proclaim, give up halal food and eat dead meat. Your life has been wasted in mosques while inside you're full of pollution. You have never performed with proper intent a prayer to God's unity, so why create this loud clamor now? Love has made me forget to prostrate myself to you. Why do you start this quarrel now? However long Bullah's silence lasts, love drives me on with constant blows. बड़ी उनकी मशहूर ज़माना काफ़ी है ये, इश्क दी नमियों नमी बहार। इश्क दी नमियों नमी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया, दायरे जा ठाकर दे बड़िया, जिथे वजदा नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित वल वेखा यारो यार, इश्क दी नमियों नमी बहार। हीर रांझे दे हो गए मेले, अगर यार कहना है पंजाब में तो उसका जो आइडलाइज्ड वर्जन है वो हीर रांझा है। हीर रांझे दे हो गए मेले, भुली हीर ढूंढेंदी बेले, और रांझा यार बुकल विच खेले, मैनू सुध रही ना सार, इश्क दी नमियों नमी बहार। वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां घस गए मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नमियों नमी बहार। फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, ना फड़ तस्बी आसा सोटा, आशिक कहंदे दे दे होका, तर्क हलालों खा मुरदार, इश्क दी नमियों नमी बहार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती, कदे नमाज तौहीद ना कीती, हुण की करना है शोर पुकार, इश्क दी नमियों नमी बहार। इश्क भुलाया सजदा तेरा, हुण क्यों एवें पावें झेड़ा, बुला हुंदा चुप बथेरा, इश्क करेंदा मारो मार, इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार। बुल्ले शाह जो कह रहे हैं कि ये जो सब कूड़ जो ये चल रहा है, इसमें अब एक नई सृजन का सबब क्या बने, तो वो इश्क की कोई ऐसी बहार है या किसी बहार का नाम जो उन्होंने इश्क रखा है। अब सूफियों से इसको जोड़ लीजिए, हम लोग इब्न अरबी से शुरू कर लेते हैं और वहीं पे रिड्यूस भी कर देते हैं कि ये सब इब्न अरबी से चला और ये उसी के एक्सटेंशन है। मेरा ये कहना है कि पंजाब के अंदर इश्क को लेके, प्रेम को लेके जितना सोचा गया है, इसको जितना करीब लाया गया है लोगों के, और इसके साथ जो एक बात जोड़ दी गई है कि इसमें सिर देना है, इसमें शहादत के लिए तैयार रहना है। ये कोई गोशा पकड़ के बैठने वाला इश्क नहीं है कि आपका अल्लाह मियाँ से लग गया और अब आप सब जगह से कट लें। वैसे आजकल के भी जो प्रेमी लोग हैं वो भी कटने में अब ज़्यादा यकीन करते हैं, भिड़ने में कम करते हैं। तो एक लिहाज से बुल्ले शाह हमें इस बात के लिए आगाह करते हैं कि इश्क का मतलब इस समाज को और गहरे से इसके साथ एक साक्षात्कार करना है, एक नई नज़र को हासिल करना है, एक नया प्रैक्टिस हासिल करना है, जिसको लेके आप फिर इस दुनिया में ये जो अलग अलग जो हमें मैनिफेस्टेशंस जो दिखाई दे रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस की, और मैं आज कहना चाहता हूं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडेंटिटेरियन जो काम धाम हम सब लोग करते हैं एकेडमिक्स में, और सब आइडेंटिटी एक दूसरे से जो लड़ी पड़ी हैं, इस लिहाज से भी बुल्ले शाह जब इश्क की बात करते हैं तो ये कैसा प्रैक्टिस है, ये कैसी नई बहार है जो इन अलग अलग आइडेंटिटीज को किसी सूत्र में बांध सकता है, जिसके बेसिस में एगैलिटेरियनिज्म है, प्लूरलिज्म है, एक दूसरे के साथ रहने का एक जो मादा है। और इसीलिए आप याद करिए कि जब वो ये बार बार कहते हैं कि ना हम हिंदू ना ही मुसलमान, या जो रबी शेरगिल ने जो उनकी काफ़ी गाई है, बुल्ला की जाना मैं कौन, in that he is counting all the identities available, all the sects which are otherwise rampant across Punjab and elsewhere, and he is negating all of those. कि मैं हूं क्या, जरा बात हो इसके ऊपर, और मैं सब में हूं,
मैं सब हूं और मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। ये सारी बातों के एक डायलेक्टिक्स को वो साथ लेके जिस तरह से चलते हैं, एक काफी में से दूसरी काफी का रास्ता खुलता है, एक के जो मेटाफर्स हैं दूसरी में कहीं पे और एक्सपैंड किए गए हैं, इल्यूमिनेट किए गए हैं। ये एक सफर उनके साथ साथ भी हमें करना है। जी ना मैं हिंदू ना ही मुसलमान पढ़ देते हैं, but before that obviously we are choosing this because his poetry is relevant today. There is undying relevance. I'll read something from the introduction. Bulle Shah's mystical perception of the unity of all things in the divine is not merely intellectual. It is a dynamic process pursued through love, the source of man's greatest delights and also his most acute emotional suffering. In keeping with the Sufi doctrine of a disciple's self-obliteration in the master, the most important focus of Bulle Shah's love is his spiritual guide, Shah Inayat, who is so frequently named in the concluding verses of his lyrics, now as the present source of his joy, now as the absent cause of his pain, now as the master who is mysteriously both different from and identical with his adoring disciple. More than once, Bulle Shah repudiates the criticism that it is inappropriate for him as a Sayyid, the Muslim group with the highest religious status, to be the disciple of Shah Inayat, a mere Arain. Hindu na hi Musalman. I'm not a Hindu nor a Muslim. I have forsaken pride and become unsullied. I'm not a Sunni nor a Shia. I have adopted the path of peace toward all. I'm not hungry nor am I full. I'm not naked nor am I covered. I do not weep nor do I laugh. I'm not ruined nor do I flourish. I'm not a sinner nor am I virtuous. I do not know about the path of sin and merit. Bulle Shah, the mind that is fixed on God leaves behind the duality of Hindu and Turk. जी, काफी है कि हिंदू ना ही मुसलमान, हिंदू ना ही मुसलमान, पए निरंजन तज अभिमान, सुन्नी नहीं हम शिया, सुलह कुल का मार्ग लिया, भुखे नहीं हम रज्जे, नंगे नहीं हम कज्जे, रोंदे नहीं हम हंसदे, उजड़े नहीं हम वसदे, पापी सुधर्मी पाप पुण्य की राह न जाना, बुल्ला शाह जो हर चित लागे, हिंदू तुर्क दूजन त्यागे। आप ये बात के ऊपर बार बार आइए। वो कहते हैं कि हीर रांझे को क्यों ढूंढ रही है, वो तो उसकी बिल्कुल बगल में बैठा है। दूसरे कह रहे हैं कि हिंदू तुर्क वाला क्या मसला है, ये एक ही हैं। तो ये जो एक किस्म का अद्वैत की जो बात यहाँ पे वो बहुत गहरे में कि एक हो जाना है, इकाई की तरफ चलना है, इश्क इसका रास्ता बताता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि एक अल्फ मैनू दरकार, अलिफ को इस्लामिक जो फलसफा है उसके अंदर उसको एक का, इकाई का माना जाता है सिंबल भी। और जो दूसरा आता है बे, एक तो वो नंबर 2 पे आता है, तो उसका मतलब है कि अब ये 1 से 2 हो रहा है, यूनिटी टूट रही है, अब एक किस्म का हम लोग फासले में जा रहे हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि एक अल्फ मैनू दरकार है और मुझे बे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो पढ़ना ही नहीं है। तो उस लिहाज से ये थीम उनका कहीं पे बहुत सामने आता है, ना हम हिंदू ना ही मुसलमान, और कहीं पे वो इस किस्म के इशारतों में, इश्तिहारों में भी वो अपना असर छोड़ता है। जी गरिमा। And this would be the last one, and then I'll like to pass it on to Harpreet, because what better way to know Bulle Shah through poetry and music and no translation in between. So I'll not come between you and the music. This would be the last one, a little longer one. Bansi Kaan Achraj Bajai. So Kaan is Krishna. How wonderfully Krishna has played the flute. Flute player, herdsman, Ranja, your notes are shared with everyone. Your delights are my time of gloom.
It is you who have mingled my tune with yours. Flute player, you call yourself Krishna. You perform so many beautiful hymns, my eyes cannot see you. What a tangled game you have set up. The flute is something that everyone can hear or play, but very few grasp its meaning. Anyone who discovers the note of the unstruck music becomes passionate for this flute. Hearing the flute's high notes, the body and soul scream like a peacock. The way it is put together, the whole art of a single note is created. This flute has a long story. Whoever searched for it has seen it. The stem of this flute is green. Its qualities have been created by the divine being. This instrument has 5 or 7 holes. All are filled with their own notes. Amid them all, one note sounds loudly. It has completely transported us. Bulla, his promise have been fulfilled. The beloved has come to stand at my door. Transact your business in the name of the word. The Lord will be your witness. काफी है कि बंसी कान अचरज बजाई, बंसी कान अचरज बजाई, बंसी वालिया चाका रांझा, तेरा सुर है सब नाल सांझा, तेरियां मौजां साडा मांझा, साडी सुर तैं आप मिलाई, बंसी कान अचरज बजाई। मैं यहीं पे रुकता हूं और एक बात ये कहता हूं कि एक तरफ वो कृष्ण को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब का एक अपना वर्नैकुलर कृष्ण भी है जिसको हम रांझा बोलते हैं। वो गाय चराते हैं, ये भैंस चराते हैं और दोनों बंसी ही उनका, और हम उसको वंजली बोलते हैं। बांस से बनी तो बांसुरी, बांस को हमारे यहाँ पे वंज कहा जाता है, लंबी उसकी होती है, तो वंज से जो बनी वो वंजली। और ये जो कह रहे हैं कि बंसी कान अचरज बजाई, बंसी वालिया चाका रांझा। अब यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने कृष्ण और रांझे को यहाँ पे इन 4 शब्दों में से उन्होंने जोड़ दिया है और आगे एक क्वालिफिकेशन खड़ी कर दी है, तेरा सुर है सब नाल सांझा। मेरा ये कहना है कि सांझा हुए बिना रांझा होना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। वो डॉन की तरह है कि उसको कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो सांझा हुए बिना वो मिलेगा नहीं। तो एक ये जो सांझा होने के ऊपर जो जोर है पंजाबी शायरी में, इस बात के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, हम लोग समन्वय में बैठे हैं कि पंजाब का इतिहास को अगर कोई एक नाम देना हो तो वो सांझी वालता का नाम दिया जा सकता है कि ये सांझी वालता का भी इतिहास है। नजम हुसैन सैयद जो दोनों पंजाबों के सबसे बड़े दानिश्वर हैं और हमारी क्लासिकल ट्रेडिशन के नायाब नगीनों से जो इस तरह से उन्होंने हमें उससे वाकिफ करवाया है, उनकी नज्म का एक टोटा आप देखिए कि जेड़ा सांझा ओयो रांझा। वो बुल्ले शाह की ही इस बात को आगे किस तरह से चलाया जाता है, क्यों है कि ये लंबी एक सीरीज चलती है। गुरु गोबिंद सिंह ही रांझा को याद करते हैं। उनका मशहूर ख्याल है कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, यारड़े दा सानू सथर चंगा ते पट खेड़ियां दा रहना। अब खेड़े जो हैं ये हीर का ससुराल है, दे आर द इटर्नल विलन्स ऑफ पंजाबी सोसाइटी और पंजाबी कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स। और तख्त हजारा पंजाब का एक अपना तीर्थ है। बुल्ले शाह इस बात को यूं भी रखते हैं कि हाजी लोग मक्के नू जांदे, असां जाना तख्त हजारे। मक्के के बराबर है पंजाबियों के लिए तख्त हजारे को जाना, हज के बराबर है। हाजी लोग मक्के नू जांदे, असां जाना तख्त हजारे, जितवल यार उतवल काबा ते भावें फोल किताबां चारे। अब ये चारों किताबें अब्राहमिक रिलीजन्स की भी हैं और इनको अगर आप 4 वेद भी कहना चाहें वो भी हैं कि ये इनको आप खंगाल के देख लीजिए, निकलेगा वही कि तख्त हजारे की तरफ ही यारों को जाना है, यही हमारा काबा है। तो एक लिहाज से बुल्ले शाह के अंदर पंजाब का जो एक विजन खड़ा होना शुरू होता है कि इसके अंदर क्या क्या मुश्किलें हैं। 18वीं शताब्दी का जो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर एक अपहीवल कैसे हो रही है। अब बुल्ले शाह जिस शहर में रह रहे हैं कसूर एक अफगान प्रिंसिपैलिटी है विद इन द मुगल एम्पायर, और वहां के जो हाकिम हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिव माने गए। इतना कि बुल्ले शाह के जो
मुर्शिद थे शाह इनायत, उनको शहर बद्र किया गया, निकाला गया उनको कसूर से। बुल्ले शाह के बारे में भी ये माना जाता है कि उनको भी एक बार कसूर से शहर बद्र किया गया। उनके खिलाफ मौलवियों से, मेरा ख्याल मौलवी मोहिउद्दीन से उनके खिलाफ फतवे दिलवाए गए कि आपकी ये जो कव्वाली और संगीत और रक्स ये जो होता है ये गैर इस्लामी है और आप इससे बाज आएं। बाद में वो फतवा वापस भी लिया गया, जो भी हुआ। और यहां तक की बात है कि बुल्ले शाह को दफन करने के लिए कोई मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था और वहां की कुछ तवाइफों ने उनकी देह को अपने कोर्ट यार्ड में दफन किया उन्होंने। तो आपको यह पता चलता है कि अगर ये आदमी सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन है, इसको सिर्फ तौहीद से वास्ता है, इसको किसी रिट्रीट में जाके बस एक मनन करना है, तब उसके साथ ये मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि उसको दखल दे के रहना है, वो किसी पैट्रनेज में नहीं है। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द पीपल एट लार्ज, जो नीचे हैं। और ये जितनी काफियां या जितना ये कलाम लिखा गया, नजम साहब इस बात को बताते हैं कि लिखने वाले को ये पता होता था कि आज शाम को इसको गलियों, चौराहों, चौकों, बाजारों में परफॉर्म किया जाएगा। इट वुड बी संग म्यूजिकली। तो वो इसके ऊपर जो मेहनत करते थे, फीडबैक आती थी, एक खासा ये फैला हुआ और बड़ा लोगों के अंदर ये रसा हुआ एक मसला था। मैं करिए जी। So before we give it to Harpreet on page number 191, एक और पढ़ देते हैं। Whether you know me or not, come into my courtyard. I am sacrificed to you. Come into my courtyard. I have seen no one like you, though I search the jungle, thickets, and desert. Even if I search the entire world. In people's eyes, he is a herdsman of the buffaloes. Among them, he is called Ranja. But he is our religion and our faith. Leaving my parents, I have clung to your skirt, O my Lord Shah Inayat. Protect the honor of the one who clings to you. तो काफ़ी जो हरप्रीत अभी गाएंगे और गरिमा ने जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी आपके साथ, ये उनकी बड़ी नाजुक किस्म की ही रांझे के इश्तिहारों में ये बात की गई है कि भावें तू जान ना जान वे वेड़े आ वड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आ वड़ मेरे। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा तां सारा जहान वे वेड़े आ वड़ मेरे। लोकां दे भाणे चाक महींदा, रांझा लोकां विच कहींदा, साडा तां दीन ईमान वे वेड़े आ वड़ मेरे। अब इसी लाइन को बस देख लीजिए कि लोगों के लिए तो वो एक मिनियल है, छोटा नौकर है, चाकर है, जो अदरवाइज लोग उसको जानते हैं कि वो रांझा है, उसका एक गोत्र है, उसकी एक सब कास्ट है, वो कहाँ से आया है, वो कोई शय है। लेकिन मेरा तो वो सब कुछ है, वही दीन ईमान है। तो वही वो अलिफ की तरफ वो दोबारा आ रहा है और आगे वो कहती है कि मापे छोड़ लगी गल तेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइयां दी लज पाल वे वेड़े आ वड़ मेरे। हरप्रीत।
जंगल बेला रोगी मेरे जहा मैनू होर ना कोई ढूंढा जंगल बेला रोगी ढूंढा तो सारा जहान वे हो लोकां दे पाने चाक महीना रांझा का लोकां विच कहींदा लोकां दे पाने चाक महीना रांझा का लोकां विच कहींदा साडा तां दीन ईमान दे हो छोड़ लगी लड़ तेरे शाह इनायत साईं मेरे माँ पे छोड़ लगी लड़ तेरे शाह इनायत साईं मेरे लाइया दी लज पार वे हो Thank you. जी, ये बुल्ले शाही रंग था और इससे कम तो हरप्रीत ने जैसे उसको निभाया है, इससे कम तो उसको गाना भी नहीं चाहिए। और इसने जैसे गाया है, अब मेरी बोलने वाले की अब हालत खराब है, अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन करना। अब आप और हरप्रीत के अंदर बात रहे और इतना कर देते हैं कि माटी गाली बुल्ले शाह की एक और बड़ी कमाल की उनकी काफ़ी है, माटी कुदुम करेंदी यार, माटी कुदुम करेंदी। बहुत सुना होगा ये, हम लोगों के सिलेबस वगैरह में भी ये रही। तो इसमें जो देखने वाली बात है कि यहां पे वो सबको माटी बोल रहा है। माटी कोड़ा, माटी जोड़ा, माटी दा असवार। जिस माटी पर बहुती माटी, तिस माटी हंकार।
माटी माटी नू मारन लगी, माटी दे हथियार। एक तो जो फोकस माटी के ऊपर है इतना, बिल्कुल जमीन पर है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है किसी के जीतने में, किसी के हारने में, या कोई अपने लिए जो डिवाइन राइट्स को खास उसकी किसी मेहरबानी के सदका जो अपने आप की धौंस जमाते हैं, ये उनका नकार देखिए। और पंजाबी में बहुत तैयारी से एक दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन डेवलप हो रहा है इसकी थॉट में, इसके लिटरेचर में। वो गुरु नानक से इस लिहाज से शुरू हो जाता है कि वो स्वर्ग नर्क को रद्द कर देते हैं कि ये कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो यहीं पे है, यहां पे जो करेंगे उसका बस लेखा आगे देना है, लेकिन यहां पे ठीक कैसे रहा जाए, एथिकली कैसे रहा जाए, जस्टिस के साथ कैसे रहा जाए, ये एक बात जो वहां से चली है वो हमारे इन बागी सूफियों के साथ जुड़ते हुए वो यहां तक आई है कि माटी की तरफ आए। इसके साथ जो जुड़ती दूसरी बात है कि इश्क मजाजी जो एक मनुष्य का दूसरे के साथ होता है, आमतौर पे इसकी जो व्याख्या की जाती है कंजर्वेटिव किस्म की, और वो एकेडमिक्स में भी खूब चलती है कि ये थोड़े निचले दर्जे की होती है इश्क मजाजी, इश्क हकीकी ऊपरे दर्जे की होती है। तो आप फिर वही एक डाइकोटमी, वही एक दर्जाबंदी दोबारा लाके खड़ी कर देते हैं, और बुल्ले शाह बड़े आराम से इश्क मजाजी को कि हम महिमा गान करते हैं। हीर रांझे का जो एक वो स्वरूप घड़ रहे हैं, उसके अंदर जो एक कॉन्सेप्चुअल इंटेग्रिटी ला रहे हैं, उसको भर रहे हैं, वो बाद में हीर वारिस शाह में के किस्से में दो आपको पात्रों में वो दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये इतना काम हुआ तो एक अगले टेक्स्ट के लिए जमीन बनी, जहां पे फिर वो बहुत ही समूरत और सरगन स्वरूप में वो सामने आते हैं। और हाशिम शाह इस बात को एकदम डिफाइन कर देते हैं कि पंजाब में इश्क मजाजी कहीं आगे जा चुकी है। मैं इसको एक अलग लिहाज से यूं भी कहता हूं कि शायद ये किसी एक लिहाज से कोई पंजाबी आधुनिकता का भी कोई इशारा इसमें है कि मनुष्य इसके केंद्र में है, और मनुष्य ऐसा जो आजाद है, जो किसी सेक्ट का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी जेंडर का नहीं है, जो इश्क वाला मनुष्य है। मैं ज्यादा इस पॉइंट को भी प्रेस नहीं करूंगा, लेकिन हाशिम शाह की बस दो लाइनें, फिर उसके बाद माटी इसको कैसे एक लिहाज से एंकर कैसे करती है। हाशिम शाह लेट 18th अर्ली 19th सेंचुरी के शायर हुए हैं, और कादरी सिलसिला उनका भी। वो यूं कहते हैं कि रब दा आशिक होन सुखाड़ा ते ए बहुत सुखाड़ी बाजी। यहां पे तो सिर्फ इश्क हकीकी को बुरा नहीं कहा जा रहा, बुल्ले शाह में इश्क मजाजी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। हाशिम शाह क्लियरली उसके अंदर हायरार्की लेके आते हैं कि रब दा आशिक होन सुखाड़ा, कि ये तो बहुत आसान काम है, ये बहुत आसान बाजी है। तस्बीह पकड़, तस्बीह फड़ पकड़ रो गोशा ते सब दुनिया रहंदी राजी। आप बैठिए आराम से, तस्बीह पकड़िए, गोशा पकड़िए, सब दुनिया को आपके साथ कोई मुश्किल ही नहीं है, सब आपको अच्छा ही कहेंगे। लेकिन हाशिम खाक रुलावे गलियां, एक काफिर इश्क मजाजी, कि ये है असली जहां पे इम्तिहान है, जो गलियों में आपकी खाक को रुला देगा और ये आपको कुफ्र की तरफ लेके जाएगा, जिसको के बाकी लोग कुफ्र मानते हैं, और इसके बीच में से गुजरे बिना ये काम आगे जाएगा भी नहीं। तो एक इश्क मजाजी को एस्टेब्लिश करने से, दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन को एस्टेब्लिश करने से, और बाद में इश्क मजाजी को इश्क हकीकी से ऊपर बता देने में जो एक सवा सदी का सफर है, उसकी एक बड़ी मजबूत झलक माटी कुदम करेंदी यार में हरप्रीत आपको सुनाएंगे। हरप्रीत, I think we are hard pressed for time. Harpreet, you are not supposed to sit down now. आप गाइए, please. अब बिना उसके, ठीक है? Thank you. माटी मुझे लगता है मेरी लाइफ की पहली कॉम्पोजिशन है। आई थिंक 2007 में मैंने शायद इसे कंपोज किया था, 2007 से मेरी पहली कॉम्पोजिशन।
माटी कुदम करेंदी ही याद वाह वाह माटी ही दे गुलजार माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असबार माटी माटी नू दौड़ावे माटी दी छनकार माटी नू मारन लग गई माटी दे हथियार ओ जिस माटी पर बहुती माटी सो माटी हंकार बाग बगीचा माटी माटी दे गुलजार ओ माटी माटी नू बखर आई माटी दी अपहार खेत फिर माटी होवे बंदे पाँव पसार ओ बुला जाए बुझारत बुझे ना ला पाँव सिरों मारता ला पाँव सिरों Thank you so much. And the next one is called A Milyar Saar Le Meri. यार सार ले मेरी आमिल यार सार ले मेरी मेरी जान दुखाने केरी मेरी जान दुखाने केरी आमिल यार सार ले मेरी जान दुखाने केरी मेरी जान दुखाने
सजन दा लहब लिया अपने खेरी नदियों पार मुल्क सजन दा लहब लिया अपने खेरी सतगुर बेड़ी फड़ी खलोते तै क्यों लाइया देरी ओ बुले शाशो तेनू मिलसी हाँ बुले शाशो तेनू मिलसी दिल नू दे दलेरी प्रीतम पास ते टोले किसनू ओ प्रीतम पास ते टोले किसनू भुल गए सिखर दोपहरी आमिल यार सार ले मेरी जान दुखाने के मेरी जान दुखाने के थैंक यू I think, do we have time, Smriti? नहीं कर लेने हैं I know. This is one of my latest composition. Recently I did it in collaboration with Global Music Collective. कच्चा पक्का जा सुना रहा थोड़ा सुनो तुसी मैनू इश्क हुलारे दिंदा जी मैनू इश्क हुलारे दिंदा सिर चढ़िया यार बुलेंदा मैनू इश्क हुलारे की पुछदा है की जात की पुछदा है की जात मेरी वो आदम वाली जात मेरी ही ना हुण अकरब दे विच घात मेरी विच रब दा सिर झुलेंदा मैनू इश्क हुलारे दिंदा किते शिया ते किते सुनी किते जटा धारी किते मुनी है मेरी सबसे फारग जो कहा सो यार मनेंदा मैनू इश्क हुलारे दिंदा बुल्ला दूरों चल के आया जी बुल्ला दूरों चल के आया जी ओदी सूरत ने पर माया जी उसे पाक जमाल दिखाया जी उसे पाक जमाल दिखाया ओ एकदम ना भुलेंदा मैनू इश्क हुलारे दिंदा थैंक यू जी थैंक यू Adi. I think that's it. Thank you Garima, thank you so much. Do we have time? Yeah. Please, go ahead.
एक और. So this would be the last one. Harpreet wants more. So एक और गा दीजिए. This would be the last one, please. Then we have the next session beginning. और सुनाते हैं थोड़ा, बाबा बुल्ले शाह से भटक सकते हैं हम इधर उधर थोड़ा सा. शुरुआत बाबा बुल्ले शाह से करेंगे इसके लिए. कभी सुनावा आओ चलो कभी. कबीर करते हैं. रैन गई मत दिन भी जाए, रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर उड़ा पग बैठे आए, रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर उड़े पग बैठे आए, कांचे कड़वे रहे न पानी, हंस उड़या काया कुमलानी. अभिषेक थोड़ा गिटार पढ़ सकता है क्या? Everyone clap with me. कांचे कड़वे रहे न पानी, हंस उड़या काया कुमलानी, थर 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 कांपे जीव, ना जानू का करी हड्डी, थर 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 कांपे जीव, ना जानू का करी हड्डी, कवा उड़ावत मेरी पैया पीर, कवा उड़ावत मेरी पैया पीर, कह कबीर मेरो कथा सीर, कह कबीर मेरो कथा सीर, रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर उड़ा पग बैठे आए. थैंक यू. Thank you very much. I hope you enjoyed this session. We have this beautiful festival store of a suitable agency right here, and this book is available. Please do take a look and grab your copies. There are other translations from the Murti Classical Library of India. You may want to take a look. Thank you very much for giving your time. Thank you for coming here. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धू और गरिमा जी, बुल्ले शाह की स्मृतियों और कृतियों को हमारे सामने इतनी खूबसूरती से पेश करने के लिए. एंड डेफिनेटली थैंक्स अ लॉट टू हरप्रीत. वी कुड नॉट हैव हैड अ बेटर सनडाउनर. दैट वाज अमेजिंग. Okay, we are in the realm of the spoken word. Our next session is called 3 Poets, 6 Languages, featuring Mehak Goyal, Mrityunjay and Jerry Pinto. So without giving much intro, I think that the title is a punch in itself. The session is supported by Speaking Tiger and Rajkamal Prakashan Samoor. May I please request Satyan and Nirupam ji of Rajkamal Prakashan Samoor to introduce the poets and the session. नमस्कार. समन्वय की बुनियाद ही प्रयोग पर टिकी है.
और प्रयोगों की कड़ी में एक प्रयोग यह सत्र भी है। एक सत्र 3 कवि 6 जुबानें। योजना यह थी कि हम कम कवियों से ज़्यादा भाषाओं की कविता सुन सकते हैं, और यह मुमकिन लगा हमें जब हमारे बीच जेरी पिंटो हों, मृत्युंजय हों। तो मुझे लगता है कि इस सत्र में हम शायद 6 जुबानें ही नहीं, शायद 14 जुबानें सुन सकते हैं। ये अगर हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जेरी पिंटो साहब का कुछ आप लोगों ने दोपहर में नज़ारा देखा है कि कैसे वो मध्यकालीन भक्ति काव्य मराठी का जो है उसको उन्होंने आप लोगों से एक पद बुलवा लिया और उसको अंग्रेजी में सुना भी दिया। अभी वे कुछ और इस तरह की चीज़ें आपके बीच सुनाएंगे और साथ ही अपनी अंग्रेजी कविताएं भी सुनाएंगे। उनके 2 कविता संग्रह अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, असाइलम और आई वॉन्ट ए पोएम एंड अदर पोएम्स। मृत्युंजय कवि हैं, हिंदी के आलोचक हैं और बहुत अच्छे अनुवादक हैं। और अनुवाद में मैं कहूँ कि वो कुछ जिस तरह के बेचैन मिजाज के हैं, वो जैसा कि रीता कोठारी जी कह रही थी कि अनुवाद की ज़िंदगी जो है वो बेचैनी की ज़िंदगी है। तो कभी वो अपभ्रंश से हिंदी में अनुवाद करने लगते हैं, कभी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने लगते हैं। वो भाषाओं के बीच की उनकी यात्रा बहुत दिलचस्प है और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो 6 जुबानों के बजाय 14 जुबानों तक अगर खींच के लेके चले जाएं सत्र को तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनकी कविता की एक किताब स्याह हाशिए छपी हुई है और राजकमल की भोजपुरी सीरीज़ की जो किताबें हैं उसके वो कंसल्टेंट एडिटर हैं। तो उन्होंने प्रकाश उदय और कैलाश गौतम की कविता संग्रहों का भी उन्होंने संपादन किया है और प्रकाश उदय की जो भोजपुरी कविताएं हैं उनके हिंदी अनुवाद के संपादन का भी काम किया हुआ है। और उनकी बेचैनी का आलम यह है कि वे अपने लिखने पढ़ने की अखंड साधना के खलल को मिटाने के लिए 7 नौकरियों को लात मार चुके हैं। तो वे मंच पर आ जाएं। ऐसी बेचैन आत्माएं ही साहित्य में कुछ जादू करती हैं। आमीन। हमारे बीच महक गोयल हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में लिखना शुरू किया। एक गंभीर चोट के कारण उन्हें अपना सफल स्टार्टअप बंद करना पड़ा, जिसके कारण वे 6 महीने तक बिस्तर पर रहीं। उनका पहला कविता संग्रह फेल्योर टू मेक राउंड रोटिस जगरनॉट से छपा और 3 महीने में उसका दूसरा एडिशन आने जा रहा है। वाह। और उन्हें अटा गलाटा बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। उनकी कविताएं द अमेरिकन जर्नल ऑफ पोएट्री, मैग्मा पोएट्री, स्काई आइलैंड जर्नल, द मद्रास कुरियर, एंगल्स, विजुअल वर्स वगैरह 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 तमाम जगह प्रकाशित हैं। वे हमारे बीच हैं, वे मंच पर आएँ। तो यह सत्र अब 3 कवियों के हवाले, देखते हैं 14 जुबान तक कैसे पहुंचते हैं। We thought there would be a moderator, someone who would keep us in control, but there doesn't seem to be anybody, so you're literally at our mercy. And we thought we'd do it this way. What we do is we'll have a first round of 10 minutes each, during which each of us will present a few poems, and then we'll come back again for another set of 10 minutes, and then, for another set like that. And after that, you will take the poems and go away. There will be no question and answer session because there are no questions possible that you can ask of a poem. The poem itself is a question to you, and the answer is something that you provide with your response. इसी के साथ ही महक, will you start please? Hello. I generally like to stand and recite my poetry. It's a big honor to be performing next to Jerry sir, whose poems I've cherished for so long, and Mrityunjay sir as well. So the first poem that I'm going to recite today is the titular poem from my book,
failure to make round rotis, and it's available at the bookstores there if anybody wants to take a peek. This poem is called How to Make Round Rotis. How to make round rotis. Snatch the book she's reading intently. Pull her hand, her weight if you have to. Hit her with a rolling pin if she refuses. This is for your own good, beta. Take 2 cups of unbound atta in a mixing bowl. Add 3/4 cup of water of discontentment. Knead with knuckles. Reiterate, the girl should be soft, smooth, and pliable. No, the dough should be soft, smooth, and pliable. This is for your own good, beta. Remove a dream from the dough. Roll on hands until confined to a circle. Place on the rolling board and flatten it with a rolling pin. Toss the roti on the virtuous tawa. This is for your own good, beta. Round and puffed, serve the roti for a worthy fortune. Just a quick show of hands, how many of you know how to make round rotis? So happy to see so many men raising their hands, it really warms my heart. Thank you. Advice to an audience that is clapping, clap in the way that you would like to be clapped for. So the second poem I'm going to be reading is called Remembering Childhood. This is one of the most special poems in my book because it was the first one to ever get published in an Indian journal. And trigger warning, it contains themes of sexual violence. Remembering Childhood. My father would nod at me only if I stood first in my class. Now, I should be the first of my friends to become a Mrs. I used to wander the toy store for hours till I found my perfect Barbie. But now, a Ken doll has been arranged for me. I should behave as he instructs. I worked until my eyes dried to be the lucky one at my job. But now, we walk 7 fairas because the Panditji assured my new parents I would be auspicious. Even peeking at liquor was prohibited. Even peeking at liquor was prohibited. But now, on my wedding night, the wine bottle is thrust inside me. I should stain the sheets red. When I was 10, I asked, "What do you dream about, Ma?" She replied, "My child should be safe and happy. You are my everything." I laughed then. But now, my daughter's dainty palms touch my chest. I can't fail my daughter. I can't fail my daughter. Thank you, guys. Do I have time? I'm going to be reading a very, very different poem now from a toxic relationship.
Just a show of hands, how many of you have been in a toxic relationship? So I was in one, but I did not realize it even after the relationship had ended. For me, that was the only kind of love possible. And it took me a long time to come back to myself. This one is called Ring, Ring, Ring. You called at 12:05 on my birthday. I wish these were bigger, baby. OMG, did you fake it? You're wearing this to the party? Writing is just a hobby, right? It's not gonna pay bills. My mom thinks you're really selfish. You're such a princess. I just can't. I can't take care of you anymore. Again, he rings. I pick up. He rings. I pick up. This time, I cut off mid-sentence. Silence. Silence. My words travel back to me. My words travel back to me. An affirmation at a time. An affirmation at a time. Thank you guys. Thank you so much. सो पहला काम ये करते हैं कि भाषा ढेर सारी कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा। हम लोग हैं उस रवायत के, हमारा ये जो मुल्क है वो इस रवायत का है। सो अपने एक पुरखे कवि की कविता सुनाता हूँ जो हम सब जानते हैं उस कवि को, अब्दुल रहीम खान खाना। कविता का मतलब पहले बता देता हूँ, आपको बस इतना करना है कि सोचना है कि इसमें कितनी जुबानें हैं। So I am going to now recite Rahim. There is a one Savaiya of Rahim. There is a lot of languages used in that Savaiya. So कविता ये है कि नायिका कहती है कि उसका पति पूरब कहीं गया हुआ है, ईस्ट में। क्या करूं, मेरे कर्म हैं ये सब तो, और गांठ में धेला भी नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा है, परिवार बहुत बड़ा है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, इश्क में तुम पर फिदा होने का मन कर रहा है। ये चिंता करते करते तब तक किसी ने नायिका को बताया कि वो आ गया। खैर कविता सुने और भाषाएं देखिएगा। भरता प्राचीन गतो में बहुरिन बगदे, शू करूं रे हवे हूं, माझी कर्माची गोष्ठी अब पुन सुनस गांठ धेलो नहीं ठे, मारी तीरा सुनोरा खर्च बहुत है, इहरा टावरा रा दिट्ठी टैणी दिलोदी इश्क अलफिदा ओडियो बच्चनाडू। तो उम्मीद करता हूं कि आप कुछ भाषाएं आपने मार्क की होंगी, कम से कम 8 जुबानें, सिंधी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, तेलुगु या ओडियो बच्चनाडु। सो या मैं चलता हूं आपको लेके, एक काम मैं कर रहा था जिसके बारे में निरुपम जी बात कर रहे थे। 11th सेंचुरी पोएट अद्दहमाण, अब्दुल रहमान, जिसको पुरानी प्राकृत में अद्दहमाण पढ़ते हैं। सो अद्दहमाण की एक किताब है संदेश रासक, जिसका तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं फिल वक्त। और भारतीय भाषाओं में पहला ज्ञात मुसलमान कवि है और पहली ही किताब इतनी जबरदस्त किताब है। खैर तो मैं पहले आपको 2 छंद अपभ्रंश में और फिर उसका तर्जुमा सुनाता हूं।
पिय बिरह बियोए संयम सोए दिवस रयणि झूरंत मड़े निरुअंग सुसंत वाह फुसंत अपहण दय किंपि भगे तसु सुयण निवेशिय भाइण पेशिय मोह बसन बोलंत खड़े महसाई बखरु हरि गय तखरु जाऊ शरण कसु पहिण भगे। और दूसरा छंद है जय वीर विरामे नट्ठ सोहो मुड़ंती सुहे तय्य राओ उग्गिलंतो सिणे हो भरवि नयन रंगे इक्क कुंभो घरंती हियौतः पडिल्लो बोलियंतो विरत्तो। इन दोनों का अनुवाद आपके लिए। पिय बिरह वियोगे संयम सोचे रात दिवस सूखी जाती सब अंग सुखाए दृग बरसाए निज दुख किस भाषा गाती जह नजर टिकी जिस देह लगी मैं मोह भरी थी मदमाती वह बिरह चोर सब ले भागा मैं लुटी पिटी सी घबराती। और दूसरा छंद जो अड़िल है वो छंद यूं हुआ अगर मैं समझती कि सुख नष्ट होगा और दुख संग बिरहा फलीभूत होगा कुसुम भी घड़े में वही नेह भरती उसी में डुबोता वो दिल अपना निष्ठुर। मुझे लगता है अगली बार फिर भोजपुरी और खड़ी बोली के लिए फिर लौटता हूं। I will begin with what is, I think, a poem that sums up humanity's quest for divinity and the poet's absolute belief in the power of words. It is a poem that is 700 years old, comes to us across time, and it starts by saying, Amha ghari धन शब्दांची रत्ने आम्हा घरी धन शब्दांची रत्ने शब्दांचीचा शस्त्र यत्न करू शब्दाची आमच्या जीवनाचे जीवना शब्द वाटू धन जन लोका तुका म्हणे पहा शब्दाची हा देवा शब्देची गौरव पूजा करू. And the translation, my humble translation is, words are our wealth. Words are our tools. Words, life of our life. Words, the wealth we offer you. Tuka says, the word is God. The word be praised. And for me, when I first read this poem, it brought back the Gospel of St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word, immediately there is that moment of connection where you see that words and language constitute the ratne, the dhan, the wealth, the yatan, the puja, all of it comes down eventually to words. But there is another aspect to Tukaram, another aspect that I loved as much. In the 6th standard we studied a poem called Zeka Ranzale Ganzale. When I studied it, I did not know what it meant. I didn't even care to know what it meant, because it was one of the things that I had to learn by heart. And when you have to learn something by heart, it becomes an imposition on your soul. I'm a great believer in learning poetry by heart, but I'm also a great believer in freedom. So when you choose to learn poetry by heart, it becomes your ratne, your puja.
But when someone else makes you do it, you just resist. And yet many years later, when I read Auden saying to young poets, advice to young poets, to learn poems by heart, I began to learn poems by heart myself. And there's a long stretch by the sea in Bombay, which starts at Nariman Point and ends on Malabar Hill. It starts with the death of the sea, where Nariman Point was built on the top, on reclaimed land, and ends with the death of the Parsis at Malabar Hill, where the Tower of Silence is. And I challenged myself for a 1.5 hour walk, that I would walk down that and recite poetry non-stop. And about 3/4 of the way through, I began to lose, I had no more poems to, and suddenly from nowhere, Tukaram surfaced. Zeka Ranzale Ganzale surfaced. It was a memory hidden somewhere inside me. And I think maybe this book is the beginning, has a beginning in imposition and is liberated by freedom. It takes in both aspects, because God is both a controlling force in some ways, if you believe in Him, and He is a liberating force in some ways, if you believe in her. You go figure. Zeka ranzale ganzale, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोसी साधू ओळखावा, देवते तेची जाणावा, मृदु सभाय नवनीत, तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही, त्यासी धरी जो हृदय, दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती, तोची भगवंताची मूर्ती. And the translation is, how do you tell a saint? Look for one who takes as his own the overborne, the outworn, and the forlorn. Know that this man is an image of God. His mind is soft as butter, inside and out. To his heart he holds the low-born, the base-born. His slaves and his children are as one to him. Tuka says, I could go on and on, but this is the embodiment of God. And from Tukaram, divine poet, to the slightly humbler Jerry Pinto. And I think what we have all experienced at some point, and this is again me being oracular, I feel that often one plans a poetry reading, one tries to organize what one will do and how one will manipulate, and this time I decided to go oracularly. I would open a book of poems and I would read from it, and it came to a poem that I have never read it in public because I think it's far too intimate. I regret having written it. In the sense, I don't regret having written it, I regret having published it. But now that it is published, it is time to be brave. If it is, because there's nothing more brave than trying to imagine reading into the darkness of a Delhi night. It's called, Will You Miss Me? Let me see. How shall I miss you? Let me count the ways. I shall miss you as a broken needle misses its thread. I shall miss you as the bones of Nureyev miss his jetés. I shall miss you as Beckham missed his penalty in 2004. I shall miss you as ISRO misses Chandrayaan. And I shall miss you as I would a stone in my shoe. And I shall miss you as New York misses its twins. I shall miss you as I would miss a splint in my shins. Oh yes, in those ways too. But I shall miss me too. I shall miss how you made me
me. I shall miss what we made of each other, the stain of your voice on mine, the phrase I fed you one evening, which surfaced the next day, recognizable in my words, unrecognizable in the chilled music of your wine-dark song. The outpost I still man in your mind, the dam you built in mine. I wish I could say I would not miss you so much because of this coming and going, this uncanny symbiosis, this more than friendship, this more than bizarre love, this sense of a connection forged before we met. I wish I could say, you're in me, I'm in you, what's to miss, who to miss? But I'm not that way. I will miss you. Some days it will be bad. Some days will open into darkness and only music or chocolate or yoga or language will lighten them. Some days will close into darkness in which I will store up things to tell you, and I will lose sleep panicking that I might forget. And there will be other days when it will only be a moment, when something opens up and oozes. Hold on, I will miss you, but you're going away. I'm here. If you don't want to be missed, stay. No, you're off. You're a truck without brakes running down a hill road. You're a comet being whipped around by some dark sun. You're what you want to be. You're off. I'm staying. And you're asking, will you miss me? You have some cheek. I will miss that cheek. I will miss you. I don't have much choice. Thank you. I don't know how to go after that, but I'm gonna try. So I'm gonna be reciting 2 poems in succession. And these are about the societal expectations from men and women after marriage or even before marriage. And I feel that since childhood, both the genders are trained in those specific ways to cater to being woman as a caregiver and the male as a breadwinner. And this book is a tribute to change the narrative going forward, hopefully. What was said when he fell in love? She can't even cook bhindi. What are you gonna eat? She drinks tequila. Look at her gulping one shot after the other. Who's this guy hugging her on Facebook? Short skirts, hot pants, that's all she's wearing. Does she even own a sari? There she goes again. She likes her job more than you. You're innocent, beta. I have seen the world. Your love won't last. Your promises won't be kept. You had your fun now. I only care about you and your happiness. I will find someone for you. I will find someone for you. And the other poem is, what was said when she fell in love? He drives a Honda. What were you even thinking? He's been at the same company since the last 5 years. You will just be shifting from one rented house to another. My astrologer assured me you're meant to rule a business empire. Leave him. Leave him.
You're innocent, beta. I have seen the world. Your love won't last. Your promises won't be kept. I only care about you and your happiness. Arey, stop crying, beta. Stop crying. I will find someone for you. I will find someone for you. Thank you so much, guys. So now it's time for Bhojpuri and Hindi. अब मेरी कविता, मतलब दूसरे की बहुत सुना ली। कही लात खाली खाली टीना ढब ढब करे, कही लात खाली खाली टीना ढब ढब करे, कहले क भैया कोनो मोल हो कि नाही हो। कही लात खाली खाली टीना ढब ढब करे, कहले क भैया कोनो मोल हो कि नाही हो। जिभिया पे सच के अंगार टभ टभ करे, कैसे कहीं हमरे में झोल कोनो नाही हो। और ब्रह्म राक्षस बनी सोचले बिचरले क, चाह के अंगार हु देखात कहीं नाही हो। भीतरा में लागेला कि मुर्दा के टीला हवे, तूहू कहा बाबू गमकत हो कि नाही हो। तूहू कहा बाबू। And the second one. रे माटी में खेलत खात नहात, माटी कने ह माटी क लीला। माटी क फूल आकाश पताल, भधूरी के बादर से मन गीला। माटी के नदी में माटी क नाव, ह माटी के सुग्गा क बोल रसीला। प्लास्टिक पन्नी के राज गली कभो माटी का राज हुई अलबीला। प्लास्टिक पन्नी के राज गली कभो माटी के राज हुई अलबीला। तीसरी एक सीरीज थी, उसका दो एक सुनाता हूं। अरे परिवार के आरर डार सखी, नहीं डारो कभी निज इश्क के झूला। डाल टूट जाती है। आरर हमारी भोजपुरी इलाके का बड़ा दिलचस्प शब्द है, मतलब वेरी नाजुक, बहुत टूट जाने वाला जल्दी। सो परिवार के आरर डार सखी, नहीं डारो कभी निज इश्क के झूला। रैंप मॉडल कैंप सिपाही, आधी मजूरी चोख त्रिशूला। फांसी गोली डॉक्टर वैद्य से हाथ मिलाए करे निर्मूला। ई नगरी बिच प्रेम करे जेते खरहा के फूल, सिंह आकाशे क फूला। ई नगरी बिच प्रेम करे जेते खरहा के सिंह आकाशे क फूला। एक दो खड़ी बोली की कविताएं सुनाता हूं। एक तो अपने आलोचक दोस्तों के लिए मैंने कविता लिखी थी, उसको सुन लीजिए। कविता का शीर्षक है माजना। थाली में जूठन की परत को हाथ से साफ करना चाहिए, उसे हल्के हाथ से माजना चाहिए, बहुत रगड़ने से कोई फायदा नहीं। जब बर्तन पर चिपक कर कट्टा गया हो भात, उसे देर तक भिगोना चाहिए। जल्दीबाजी से वह छूटने का ही नहीं, नाखूनों से उसे कतई नहीं खुरचना चाहिए। कड़ाही पर तेल, कालिख और जलन के निशानों, काले तवों को पर्याप्त वक्त देना चाहिए। जलने के गहरे निशानों को समय से मांजना चाहिए। झामे में थोड़े साबुन के साथ ज्यादा वक्त लपेटना चाहिए। दाग इतने हैं कि एक दिन में मांज सकना असंभव है। हड़बड़ी में बर्तन के किनारे छूट सकता है साबुन,
ऐसे गंदगी मांजने से मांजने की गंदगी बची रह जाती है। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए समय के साथ एहतियात और नाजुकी भी चाहिए। उन्हें मांजते हुए सांसें आहिस्ता आहिस्ता लेनी चाहिए। मांजे गए गीले बर्तनों में पानी भी छोड़ देता है निशान, इसलिए ठीक से मांजने भर से काम पूरा नहीं होता। बर्तनों से सुखानी चाहिए पानी की हर बूंद। कभी कभी मांज लेना चाहिए बर्तन स्टैंड को भी। राजा नल की तरह उसी में छुपा हो सकता है कलयुग। धीरज के बगैर नल का तेज पानी गंदगी फैला देगा। झामे की कड़ाई का फैसला बर्तन की प्रकृति से तय होगा। ज्यादा घिसने से मुलम्मा ही नहीं, धातु भी घिस जाती है। कुछ बर्तनों को मांजने के बाद स्नेह चाहिए, कुछ को एकदम नहीं। गंदगी के निशान छुड़ाते छुड़ाते झामे के निशान बना देना कुफ्र है, और विज्ञापन देखकर बर्तन मांजना सीखना तो असंभव है। आई हैव टाइम? आप मतलब करना ही चाहिए, सब लोग सीखना चाहिए। ये एक इमेज है, बस एक इमेज है। नश्वर थी सुंदरता, इस कविता का शीर्षक है। धीरे धीरे खड़ी हुई वह लाद सांस की बोरी, चली कुछ कदम। धीरे धीरे खड़ी हुई वह लाद सांस की बोरी, चली कुछ कदम, रुकी देख कर दुख की सीना जोरी। दृश्य खड़े थे उसे नापते, आंखों में थीं लहरें। अति आधुनिक रहस्य कथा की दृष्टि गांठ के पहरे। डर की परत छेद कर निकली बोली सी अनबोली, पिस्टल से ज्यों धीरे धीरे निकले कोई गोली। नजरों का था द्वंद्व युद्ध, हथियारों के थे चेहरे। कटने के निशान दिखते थे दिल तक गहरे गहरे। धरती जकड़े पैर खड़ी थी, गगन थामता माथा। इस अवगति को गति से ही वह बना रही थी गाथा। एक कदम में 3 लोक 84 नरक डगर थी। गुइयापन के रस्ते जूझी सदियों से बेघर थी। चलते चलते पीछे देखा, चलते चलते पीछे देखा। महाकाव्य थे गति में, भय को थामे दृढ़ता हिम्मत आए आए मति में। एक कदम था सदा हवा में, धीरे धीरे गिरता। हाथ उठे थे, जख्म हरे थे, नश्वर थी सुंदरता। आखिरी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, 3-4। गर्द कलेजे में भरती सी, उठती सी, थमती सी, नुचे परिंदों की जुबान पर गिरती सी, जमती सी, भूरी सी, गाढ़ी सी, सूखी गति में थिरती सी, दिल के दाग बढ़ाती, जैसे दिल को ढकती सी। 2 रात आंख में थी विहाग की सर्द लहर। हाँ, खुब जाए नीले कांटे का बर्क जहर। हाँ हाँ, ऐसे में पानी के ही सपने आए जादू। जाने कितने जुग के भूले अपने आए जादू। जादू गिरकर टूटा, पत्थर से फैला मुरझाया जी। बिखरा था जो गुमा, यहीं पर था मेरा सरमाया जी। जी इस खोने से चाहूं हूं, बचा रहे खो जाए नहीं। बेचैनी की झील नहाए, सुन्न महल में जाए नहीं।
नहीं रात को रोको आशिक रहो नहीं हाँ, नहीं कुफ्र की बात प्यारे करो नहीं हाँ। 3, अपनी ही राह चले जाते हो गोया, छुड़ा के बाह कहीं जाते हो गोया, गोया सियाहियों में गिरे हो ख्याल की, ख्वाब महबूब हुए जाते हैं गोया। 4, आसमान में याद का दरख्त उल्टा खड़ा था, कत्थई रंग डूबती थी घास, वस्ल का किस्सा पड़ा था, थम गई करुणा ठिठक कर रास्ता पिंजर मढ़ा था, वह हरफ जो मिट गया किसने पढ़ा था। और लास्ट हिस्सा, शीत की अर्जियां मुकम्मल थीं, शाम ढली, होठ पर भाप की पंखुड़ियों ने पर खोले, चांदनी चूम रही पृथ्वी की पेशानी, आग के होने से हुई दुनिया इश्क हुआ। शुक्रिया। Thank you very much. The first poem is called My Poems, and it comes out of the fact that very often when we are talking about our poems, we start by saying my poems are about, and so I thought I'd do a poem called My Poems. My poems are about many things. My poems are about magic. My poems are about music. My poems are about poetry festivals. My poems are written for people like you. My poems take shortcuts. My poems ride slipstreams. My poems take the path of least resistance. My poems are needy. My poems need you to like them. My poems want you to remember them. My poems demand that you memorize them. My poems want prizes. My poems want to be on syllabi and curricula. My poems want to be translated into Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Gujarati, Sanskrit, German, French, Italian, Polish, Afrikaans, and American. My poems want diplomatic immunity. My poems want visa on arrival. My poems want to be burned in public, but only by men in the right kind of clothes. My poem want exclusion from the canon and recovery by Pound, Eliot, or Rushdie. My poems want to be epigraphs on other poems. My poems want to be photographs of busty blondes with sexy, smooth, silky, those things. My poems challenge virtual reality. My poems are live headlines and red bottom lines. My poems want you to sit up and pay attention in pin drop silence or they'll come and get you. My poems are torn from the gut and mined in the amygdala. My poems are dredged from the heart and filed in the sigmoid colon. My poems are seeds planted in your head. They'll sprout when you're dead. My poems are viruses. They self-replicate. They do that parthenogenesis thing. My poems are programs. They'll erase your hard disk and implode. My poems are dangerous. They can only be bought by adults who have certificates of illiteracy that make them immune. My poems are wanted by Interpol. My poems are tracked by the FBI. My poems are protected by Amnesty International. Thank God I am nothing like my poems. And once upon a time, back in the past, there was a very brave festival called the Dubai Literary Festival, which actually invited me there and then put me into the Hotel Crown Plaza, which was an experience because when I arrived, nobody was sure that I should be at the Crown Plaza because they asked me for a credit card and I didn't have one. They asked me for a mobile phone number and I didn't have one. At that time, I didn't have a mobile phone number. And they said, you know, here's the Wi-Fi password, and I didn't have a laptop. So they thought, are you sure you should be here? And I went into that room feeling this room is not for me. So this is called my hotel room at the Crown Plaza, Dubai, with thanks to the Dubai Literary Festival for putting me there. I love my hotel room. It was not designed for me, I know. It was designed for a tired businessman with sacks of dollars, a saluki, and 2 mistresses.
My room is puzzled by me and I by it. I cannot tell where the light switches are. And this is because there are no light switches. There are only sensors which spot me and track me and turn on lights where I will need them without my even knowing them. My room wants to know why I have no laptop and no mobile phone, and there are no phone calls for me. Nothing that requires me to stand by a window and talk to Bill and Bob and Nihar and Ahmad. So room 1654, this is for you. Room, you are larger than my home in Bombay. Room, you have running water all 24 hours. I wake up sometimes in the night and dabble my fingers in fresh flowing streams. Room, you have paintings, 4 of them, 2 in the toilet, and I would study these paintings, I really would. But when I am on the pot, one of them is behind my head. Room, you cost 1,950 dirhams a day, not inclusive of 10% municipal tax and 10% service tax, and that's more than I have ever made from my poetry. Room, I can barely sleep here because I can't bear to think that I might waste even 1 dirham of this rental. Room, your lights, they are near my bed, near my head, and they turn themselves off when I touch the panel. I touch the panel. On, off, on, off. I'm a pervert now. Room, your air. It's cool, it's clean as air should be. I have a cold and a running nose. My system is not used to this. Room, your bed. Should you be so yielding? Have you no self-respect, room? Come, let me go. Room of 4 pillows, room of a minibar emptied before my arrival because I have no credit card. Room filled with chocolate bars and pistachio nuts that I would be a fool to eat at these prices. Room, I'm going to bed now. You should sleep too. Stop looking at me, room, and please, this transparent door, this picture window to the Shah. Room, I'd like some privacy, please. Room, keep this between us. But I'm going to take the soap, the shampoo, the conditioner, the shower gel, the shower cap, the pencil, the pen, the envelopes, the writing pad, the tea bags, the coffee powder, the extra sugar, the soft slippers, and one big, fat, white, virginal towel. Thank you. Thank you all very much. The best act you can do to support poetry is to go out and buy our books and then come up to us and get them signed. Thank you so much. जेरी, आपको एक सूचना दे दूं, किताबें ये लोग खरीदेंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे कुछ बहुत ही कविता प्रेमी दोस्त एक घोर कविता विरोधी दोस्त को यहाँ पकड़ के बिठाए हुए हैं, और मैं नहीं जानता कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने घर में 4 दिन एयर प्यूरिफायर बंद करके दिल्ली में जी सकेंगे या जाके 4 पैकेट ORS का घोल खरीदेंगे। लेकिन कल कुछ फेसबुक पर बहुत भयावह होगा। बहरहाल, मजाक से अलग, आप सब किताबें खरीदें, किताबें पढ़े भी, पढ़ाए भी। तो यह सत्र यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और निश्चित रूप से कुछ हमें ताजगी मिली। कविता सुनने का यह सुख लंबे समय तक याद रहेगा। This is turning out to be an evening of poetry. Our next session also involves poets, although all of them are Hindi writers, but they are poets from different regions and also representing different voices. हमारे इस सेशन का टाइटल है आदिवासियत, पहचान और साहित्य। हमारे सेशन में फीचर कर रहे हैं
Dr. Joram Yalam, she is an associate professor and writer at the Rajiv Gandhi University. She is the author of Sakshi Hai People, Tani Kathaएं, Jangli Phool और गाय गेका की औरतें. Dr. Yalam is deeply interested in questions of tribal identity, culture and survival. Our next poet is Rahi Durmarchir. Rahi Durmarchir completed his education from Jawaharlal University and Hyderabad University. His poems and translations from Bengali to Hindi have been published in newspapers and magazines like Alochana, Sadanira, Kriti Majority, Samkaleen, etc. These days he is teaching at RD and DJ College in Bihar. Anuj Lugan is from Jharkhand. He has completed his education in MA and PhD from the Banaras Hindu University. His published poetry collections include Baag और Sugana Munda की बेटी, Alghoshit Ulgulan. He also writes regular columns for Prabhat Khabar. He has been honored with Bharat Bhushan Agarwal Samman, Savitri Tripathi Sahitya Samman and Yuva Sammelan of Indian Language Council, Sahitya Academy, Yuva Samman. Our next poet is Parvati Tirke. Parvati Tirke received her education from Jawahar Navodaya Vidyalaya Gumla. Uske baad she completed her graduation and post-graduation from Kashi Hindu University. She has special interest in poetry and folk songs and also writes stories. Fir Ugna is the first poetry collection by Parvati Tirke. Currently, she is an assistant professor in the Hindi department of Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi. The session is moderated by Dr. Rahi Soren. Dr. Rahi Soren is an assistant professor at the School of Oceanographic Studies, Jadav University. She was with us earlier in the day as part of the digital archive session. This session is supported by Rajkamal Prakashan Samoor. So I would like to invite Nirupam Ji from Rajkamal Prakashan Samoor to talk about the sessions and introduce the poets. Thank you. धन्यवाद कनिका. सभी वक्ताओं के परिचय आपने अंग्रेजी में विस्तार से सुने ही. मेरा एक अलग तरीका भी है लेखकों तक पहुंचने का. मैं वह रास्ता आज आप सबको भी बताता हूं. शायद आप में से बहुत सारे लोग उस रास्ते किसी लेखक तक पहुंचते रहे हों. मैं लेखकों को उनके किताबों के समर्पण के रास्ते भी समझने की कोशिश करता हूं. किताबों के समर्पण मैं किताब पढ़ने से पहले भी पढ़ता हूं और किताब खत्म करने के बाद भी पढ़ता हूं. तो सबसे पहले मैं जोराम यालाम नाबाम की किताब तानी कथाएं का समर्पण आप लोगों को सुनाना चाहूँगा. ज्ञात अज्ञात पूर्वजों को. पार्वती तिर्की की किताब फिर उगना, उसका समर्पण है अदृश्य व अबोले रूप में हमेशा साथ पुरखों को. अनुज लुगुन की किताब जो अभी हाल ही में आई है अघोषित उलगुलान, उसका समर्पण है पुरखों के गीतों के नाम जिनमें जंगल की लय के लिए कुर्बानी की कथाएं हैं. राही डुमरचिर की पहली किताब, पहला काव्य संग्रह डागा, हाँ कहीं खो गया, डागा टोला, उसका समर्पण है बांसलोई के लिए. बांसलोई नदी है जिसको हम दिक्कू लोग बरसाती नदी कह सकते हैं लेकिन उनके लिए वह बरसाती नदी नहीं है. तो आदिवासी समाज को, मैं जिस समाज से आता हूं और आप में से बहुत सारे लोग उस समाज से आते हैं, वहाँ बचपन से हमें यही बताया गया कि हम उनके लिए दिक्कू हैं. वे लोग ऐसे रहते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं, वो हमें दिक्कू मानते हैं. तो ये एक हम और वे का रिश्ता था और उसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसे बताई जाती थीं कि लगता था कि पता नहीं वह दुनिया कैसी है. फिर हम और वे के बीच कुछ ऐसे लोग आए जो हमारे बीच के थे और वहाँ रहते थे.
फिर कुछ ऐसे लोग आए हमारे जीवन में जो वहाँ के थे और हमारे बीच रहते थे, और इस तरह से होते होते फिर एक ऐसा समय आया जब लगा कि कुछ भी फर्क तो नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी मान्यताएं कुछ चीज़ों को लेकर अलग है, उनकी मान्यताएं कुछ चीज़ों को लेकर अलग है। सारा खेल मान्यताओं का है, अपरिचय का है, दूरी का है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस सत्र में आदिवासियत के बारे में। आदिवासी समाज के भीतर भी कई समाज हैं, उन सब के लिए अपनी आदिवासियत का कुछ अलग मायने हो सकता है, तो वे क्या सोचते हैं। और साथ ही यह भी है कि जैसा हम देखते हैं कि दलित लेखन में, अस्मिता लेखन की हम बात करें तो दलित लेखन में एक हमें शिकायत रही है कि इसमें तो बहुत रुदन है, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। कभी हमने ये समझने की कोशिश नहीं कि वह क्यों है। जब आदिवासी साहित्य से मेरा परिचय होना शुरू हुआ, बुधन पत्रिका से सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दोनों में फ़र्क क्या है। आदिवासी दिक्कुओं से परेशान थे, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक दुनिया थी जिसमें वो अपने पूर्वजों की थाती, उनकी विरासत के साथ एक स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। दलितों को यह उपलब्ध नहीं था। शायद यहीं पर अपना साहित्य रच सकने, अपने को अभिव्यक्त कर सकने का, अपनी परंपरा को आगे ले जाने का ब्ला 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 ये सब आलोचकों की जिम्मे छोड़ देते हैं। लेकिन आदिवासी समुदायों का जो मौखिक इतिहास है, मौखिक साहित्य है, उसकी जो लंबी परंपरा है, उसे सहेजने का काम भी अलग अलग स्तर पर जो हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी अपने स्तर पर क्या कर रही है, आज हम इस पैनल से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उनके लेखन पर अपने समुदाय की परंपरा में चले आ रही गीतों कथाओं का किस तरह का, किस हद तक असर है। डॉक्टर राही सोरेन इन लोगों से बातचीत के दौरान शायद कुछ बातें निकाल सकें, और निश्चित रूप से कुछ इन लोगों के लेखन की भी झलक हमें सुनने को मिलेगी। बस इसी के साथ मंच राही सोरेन के हवाले। धन्यवाद। Shanam Koge Johar. Thank you so much for the kind introduction to all the panelists here. अभी मैं समय ज़ाया नहीं करूँगी, सीधे चले जाते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको, उनके लेखन को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग कई कई जगह से आए हैं, हालांकि हिंदी में लेखन है, but as you can see the diversity, even if when we say Adivasi, even if when we try and find a single word to describe us, so ये एक खोज है। तो चलिए इस खोज में आपके साथ हम भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल अनुज जी से रहेगा कि आपके लेखन में आदिवासियत क्या है, या फिर आप जिस तरीके से समझते हैं वो ज़रा हम लोगों को भी बताइएगा। अनुज जी। धन्यवाद। जोहार आप सबको, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए राजकमल प्रकाशन समूह को और ख़ास तौर से सत्यानंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यह एक स्वतंत्र अवसर दिया कि हम आदिवासियत पर बात कर सकें। आदिवासियत पहचान और साहित्य पर बात करनी है। मैं सबसे पहले मणिपुर में हुई हिंसा और उसे तत्काल ना रोक पाने, शांति की प्रक्रिया ना बहाल कर पाने की प्रक्रियाओं का निंदा करता हूँ। हम आदिवासियत की बात करना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, आसमान से ज़मीन नहीं दिख रही,
जमीन से आसमान भी साफ नहीं दिख रहा। और यकीन मानिए हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग ऑक्सीजन के बैंक से नहीं, ऑक्सीजन के भंडार कोण से आए हैं। और ऑक्सीजन का होना महज पेड़ या वायु के शुद्ध होने का मसला नहीं है, इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ भी है। हम सब जानते हैं गैस चैम्बर में मरे लोगों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ही ज़रूरत थी जो हिटलर ने वहाँ डाल दिया था। आदिवासियत उस ऑक्सीजन की बात है। सवाल यह आता है कि क्या आदिवासियत एक ऐसा सवाल है जो समकालीन विमर्शों की उपज है या इसकी कोई ऐतिहासिकता है? इसे हम कैसे समझें? तो मेरा अपना मानना है, जैसे राही जी ने कहा कि आप अपने लेखन में कैसे समझते हैं, मैं इसे अपने लेखन से बाहर पूरे वैश्विक समाज का जो आदिवासी लेखन है उसको देखकर मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आदिवासियत है क्या। दरअसल आदिवासियत उन बड़ी और महान परंपराओं, उनके सांस्कृतिक प्रभुत्व, वर्चस्व और हिंसा के विरुद्ध एक सहजीवी दर्शन है। और यह किसी भी तरह के उस वर्चस्व के विरुद्ध है, सांप्रदायिकता के, लैंगिकता के। और जैसा कि निरुपम जी ने हम सभी की रचनाओं के समर्पण का जिक्र किया, उससे भी एक बात ध्वनित होती है कि वो चीज़ें हमने सीखी, ग्रहण की है पुरखों से, पुरखाओं से, और उनका एक इतिहास है और उस इतिहास की स्मृति है, उसका इतिहास है जो विस्मृत है। साहित्य से, रचनाओं से वो चीज़ें सामने आ रही है। हम भारतीय संदर्भ में कहें तो जिसे सागर मंथन कहा गया, जिसमें असुरों के साथ सबसे पहला अन्याय हुआ, या कोलंबस जब अमेरिकी ज़मीन पर पहुंचे और वहां जनसंहार हुआ, या कथित ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले जो नाविक या कैप्टन थे उन्होंने जो जनसंहार किया, वहां से जो एक समझ, एक सांस्कृतिक सामाजिक धारा बनी है, एक दर्शन बना है, उन चीज़ों का एक समुचित प्रतिरोध है आदिवासियत। और अगर हम उसको भारतीय संदर्भों में कहें, जो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में बात कही थी कि वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 2500 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। और जो दक्षिण अमेरिकी आदिवासी समुदाय के जो माया आदिवासियन हैं वो कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 500 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, फर्स्ट स्लेवरी एंड देन स्पेन के विरुद्ध जो उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अभी जो वे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा एक वैश्विक संदर्भ बनता है आदिवासी साहित्य का, आदिवासियत का। हम यहाँ जो बैठे हैं उनकी रचनाओं में जो बातें हैं सो है, उनके अपने सांस्कृतिक संदर्भ हैं, उन संदर्भ की अपनी ऐतिहासिकता है। उस ऐतिहासिकता को हमें समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हम यहाँ उसी पर बातचीत करना चाहते हैं। मैं कुछ रचनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और उसके ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो आदिवासियत है वह साहित्य में, रचनाओं में दर्ज हो रही है। मैं कुछ अमेरिकी लिटरेचर, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनकी कविताओं का उदाहरण दूंगा, कुछ आदिवासी कविताओं का, और हम ये देखें कि कैसे वो सारी चीज़ें अलग भूगोल में होने के बावजूद अपनी वैचारिकी में, अपनी संवेदना में, अपने मूल्य में एक दूसरे से वैचारिक रूप से बहुत प्रतिबद्धता के साथ जुड़ी हुई है। एक कवि है रेड हेयर क्रो, ये अपाची नेटिव्स के हैं, और देखिए कैसा विरूपीकरण किया गया आदिवासी समाज का। हम अपाची मतलब दरअसल एक बाइक का नाम जानते हैं जो यामाहा कंपनी की है। वो ट्राइब्स है, कम्युनिटी है। उनकी कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि द माउंटेन्स आर माई किंगडम। मैंने उसका एक अनुवाद हमारे एक साथी ने करने की कोशिश की है, मैं बस कुछ अंश पढ़ना चाह रहा हूं। पृथ्वी बिना मांगे इतना देती है,
जिसके लिए मैं आवश्यकता से अधिक ना लेकर आभार व्यक्त करता हूँ, तुम मुझसे वह भी छीन लेते हो। स्वतंत्रता आकाश की और मैदान की, मरुस्थल की मैं जानता हूँ, जहाँ मुझे मालूम है पानी किस तरह ढूंढते हैं, और गहरे जंगल जो लोगों की भाषा भी जानते हैं। तुम कटीले तार लगाओगे और बाड़ बनाओगे और बंदूकों से उनकी रक्षा करोगे, ताकि मैं उस धरती पर अपने पैर ना रख सकूं जिस पर मेरे पूर्वज चले थे। तुम अपने लालच से उसे अपवित्र करते हो। जब मैं चारों ओर देखता हूँ और नदियों को बहता हुआ पाता हूँ, नई हरियाली धरती पर फैल रही है, मेरा हृदय आनंद से भर उठता है, क्योंकि मैं धनी हूँ और मेरे पास दिखावे के लिए कुछ नहीं है। मेरा गर्व मेरी माँ पृथ्वी है और उसकी रक्षा करना मेरा सौभाग्य है। ये कंटेम्प्रेरी नेटिव अमेरिकन पोएट है, उनकी कविता है। अमेरिका में एक पहली नेटिव पोएट हुई जॉन हार्जो। अनुज जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। उनकी कविताओं में ये बात देखने को मिलती है। सवाल ये होता है कि जो आदिवासियत है, क्या वह सिर्फ आदिवासी जैविकता होने की बाध्यता है? बहुत साफ है कि आदिवासियत आदिवासी होने की जैविकता की बाध्यता नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो उस प्रभुत्व का, उन चीज़ों का प्रतिरोध करता है, जो इतिहास में हुए अन्याय का विश्लेषण करता है। यह वर्तमान में घटित किसी भी तरह की वर्चस्ववादी प्रक्रियाओं का प्रतिरोध करता है, और इसकी अपनी एक भाषा है, उसके मूल्य हैं, उसके बिंब हैं। और हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं अलग अलग भाषा की कविताएं पढूं और बताऊं कि कैसी भाषा की विविधता होने के बावजूद एक वैचारिक और एक संवेदनशील एकजुटता दिखाई देती है। तो मैं संक्षेप में प्रस्तावना के रूप में आदिवासियत को लेकर मैं यही बात रख रहा हूं, और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, जो बाकी साथियां हैं उनसे भी मैं यही सवाल, उनके विचार सुनने की एक जगह रखना चाहती हूँ। इसीलिए आई वुड लाइक टू वेलकम जोहराम टू टॉक अबाउट हर थॉट्स ऑन आदिवासियत एंड व्हाट शी understands by the term. बहुत बहुत शुक्रिया। आदिवासियत जो मेरी समझ है, सिर्फ समझ ही नहीं, जिसको मैं जीती हूँ दैनिक जीवन में, उसके अनुसार आदिवासियत वो है जो प्रकृति और पूर्वज पर आधारित जिनकी संस्कृतियाँ बनती हैं। अगर मैं कहूँगी प्रकृति कैसे, तो हमारी भाषा भी प्रकृति के उससे ही, ऋतुओं से, पेड़ पौधों से, और मतलब मौसम के हिसाब से, जंगल के पेड़ पौधों से, उसी से हमारी भाषाएं निर्मित होती हैं। और हम जो हैं होल यूनिवर्स को अपना परिवार मानते हैं, और जब हम परिवार मानते हैं तो न कोई हमसे बड़ा है, महान है, न कोई हमसे छोटा है, निम्न है। तो इसलिए आप हमारी भाषाओं में देखेंगे, जैसे अगर मुझे गुस्सा आए तो किसी को मैं स्वर कह दूं तो उसे गुस्सा आ सकता है, लेकिन हमारी भाषा में जब हम उसे इरिक कहते हैं तो हिंदी में जो स्वर में जो गुस्से का जो भाव आपको मिलेगा वो इरिक में नहीं आएगा, क्योंकि इरिक गाली के रूप में हम उसे प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर हम किसी को कुत्ता कह दें तो आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन हमारी भाषा में कुत्ता को इकी कहते हैं, और हमारी भाषा में जब आपको इकी कहेंगे तो गुस्सा का भाव नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि पारिवारिक रिश्तेदारी है, और इसलिए हमारी भाषा जो है, जैसे इसलिए नामकरण में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आदमी का नाम भी इकी है तो कुत्ता को भी हम इकी कहते हैं। दोई यानी सूरज, और दोई मनुष्य का नाम भी हम रखते हैं। और आपको हंसी भी आएगी, लेकिन जब आप गहरे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। जैसे चमगादड़ चमगादड़ आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदी में आप किसी का नाम चमगादड़ रखेंगे, लेकिन हम अपनी भाषा में चमगादड़ को तपिन कहते हैं और व्यक्ति का नाम भी हम तपिन रखते हैं। इसके पीछे यही दर्शन है कि वो देखने में, रूप में, हमारे होने में जो है वो उसमें भिन्नता है, लेकिन है हम एक ही परिवार के। इसीलिए जैसे और देखिए जैसे जोंक है जोंक को भी जो है हम लोग तपिक कहते हैं और आदमी के नाम भी हम तपिक रखते हैं। ये हमारा जीवन दर्शन है। इसी से हमको पता चलता है कि हम प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं हैं, एक ही परिवार के हैं और इसलिए हम कोएग्जिस्ट करते हैं और उनके और हमारे बीच संतुलन का रिश्ता है और इसी से इसी पर आधारित हमारी संस्कृतियाँ निर्मित होती है। उसमें बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, बहुत बहुत तरह के। अब मैं पूर्वज की कह रही थी, जैसे प्रत्येक संस्कृतियों में मृत्यु के बाद की कल्पना है कि व्यक्ति मर जाने के बाद किधर जाते हैं उनकी आत्मा कहाँ जाती है। तो हमारे में ऐसी ये भी एक कल्पना ही है, लेकिन है अपनी अपनी कल्पनाएं। तो हम कल्पना करते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा हमारे पूर्वजों के पास जाती है और हमारे पूर्वज जो है वो कोई ईश्वर नहीं है, वो जज का काम नहीं करता है। हम पापी हैं, पुण्य वाले हैं, क्या है, प्रेम का उनका रिश्ता होता है। मरने के बाद भी उनके साथ हम अपना रिश्ता नहीं जोड़ते, नहीं तोड़ते। जब कोई बीमार हो, घर में कोई पूजा पाठ हो, कर्मकांड हो, तो हम उन्हीं को ही बुलाते हैं, उन्हीं की आत्मा को बुलाते हैं और हम मानते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं। और ये कर्मकांड ही सॉरी ये सिर्फ कर्मकांड में ही नहीं होता, आप उसको अलग जो चीज़ों में भी देख सकते हैं। जैसे कोई सामान है, जैसे आभूषण है, मुझे सोना, हीरा, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, कीमती आभूषण है वगैरह है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो महत्वपूर्ण जो अवसर होते हैं, कर्मकांड होते हैं, ऐसे में हम अपने पूर्वजों से बहुत जो प्राचीन हजारों हजार साल से पुरानी चीजों को ही हम इस्तेमाल करते हैं आभूषण के रूप में। वो बीड्स होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि ये कितने कितने पुराने हैं। जिनको देखना आता है उन्हें पता है। और शादियों में भी हम दुल्हन को सोना चांदी देने का रिवाज नहीं है, ये गलत होता है। पूर्वजों का कितने कितने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का उसमें स्पर्श है, उसी से हम रिश्ता ये करते हैं। इसके बाद अगर कोई झगड़ा हो गया, केस सुलझाना हो, तो भी हम इन्हीं आभूषणों को, और बहुत सी चीज़ें होती जो पूर्वजों से रिलेटेड होता है, उसको गिनते हुए आते हैं कि ये जो सामान है किसके पास गया था, फिर कहाँ से कहाँ होते हुए हमारे तक आए हैं, तो इसका मतलब आप और हम रिश्तेदार हैं। फिर झगड़ा की किस बात की, नफरत किस बात का। तो ये हमारी संस्कृति है। तो आदिवासियत यही है जिसको जो है हम सिद्धांतों में नहीं जीते हैं, उसको जीवन में जीते हैं। मतलब कोई धार्मिक किताब तो है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है रिटर्न में नहीं होकर भी इसको, क्योंकि हम हर रोज जीते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा कानून होता है जो हमें संतुलित करता है, अनुशासित करता है। और इस वजह से क्या है कि बहुत से भेदभाव को भी ये बिना कहे ही रोकता है। ये आदिवासियत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप जीवन दर्शन की इतने बात किए हैं और आत्माएं कहाँ जाते हैं,
इसको लेके मुझे याद आ गया कि हमारे पुरखों में ये कहा जाता है कि जिनका डेथ हो जाता है तो वो ही भगवान के पास भगवान तुल्य हो जाते हैं। ये जो पुरखों के एक रिवाज है कि द एक्चुअल टर्म इज बोंगा तालाए नाय, सो द पर्सन इज इन बिटवीन द बोंगाज और द स्पिरिट्स। और संताली में बोंगा is a term which is used for spirits, so it can be a good spirit, it can be a bad spirit, but usually again then the translation happens to be in form of gods, and then it becomes very problematic when you talk about gods and devils. Well, today I'll not delve into that, पर जब पुरखों से चले आते हैं कई चीज़ें, जैसे जोराम जी ने बताया, तो पार्वती जी से मैं पूछना चाहूँगी कि जो गाने वो लिखते हैं, जो गाने उन्होंने सुना है, पुरखों से चले आते हैं फॉर जनरेशंस थ्रू ओरल नरेशंस। हालांकि पहले भी ये हम लोगों ने आलोचना किया है कि most of our languages are still largely orally transmitted from one generation to the other, but it's wonderful to see the transformation into written forms and then in print versions as well. पार्वती जी, आप इस बारे में अगर कुछ विचार रखें तो। आवाज़ आ रही? आप सभी को ओलगी आदिवासियत क्या है? मैं कुड़ुक समूह से संबंध रखती हूँ। हमारे पुरखों ने अपने आसपास की पारिस्थितिकी से एक विश्वास विकसित किया है, जिससे उनकी सामाजिक संरचना तैयार होती है, जिसे हम टोटेम व्यवस्था कहते हैं। टोटेम यानी विश्वास। मैं तिरकी परिवार की हूँ, मैं बाघ परिवार से नाता रखती हूँ, मैं टोप बोलने वाली टोप्पो चिड़िया के परिवार से नाता रखती हूँ, मैं किरकिट्टा चिड़िया के परिवार से नाता रखती हूँ। अतः मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये आदिवासियत है। दूसरी बात, हमारे पुरखे जब बाजार गए, दूसरी समूह से उन्होंने वे इंटरैक्ट हुए। जो पुरखे बाजार गए, जंगल में चार के फल बढ़ते हैं, चार लेकर वे बाजार गए। चार से उन्होंने नमक खरीदा। बाजार में एक ऐसी भाषा निर्मित की जिससे वे दूसरे समूह से संवाद कर पाए। पहाड़ में, पहाड़ के दूसरी तरफ असुर समूह रह रहा था और पहाड़ के इस तरफ कुड़ुक समूह रह रहा था। असुर गीत गा रहे थे, बुरु लयो तना, बुरु लयो तना। पहाड़ जल रहा है। तब कुड़खों ने बाजार की भाषा में गाया, पहाड़ पोड़े पर्वत पोड़े। पहाड़ जल रहा है, पहाड़ जल रहा है। संवाद की यह भाषा जो उन्होंने विकसित की, ये आदिवासियत है। और आदिवासी समूह की जो परंपरा है, वाचिक साहित्य से लेकर जो लिखित साहित्य तक का उनका संघर्ष है, अपनी भाषा के अलावा कई कई भाषाओं में जो उन्होंने संवाद किया, तो यह संवाद का संघर्ष भी आदिवासियत है। जब उनका विस्थापन हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह वे जा रहे थे, तो उनकी स्मृतियों को वो लेकर चले। आज भी पुरखे गीत गाते हैं। एक गीत है, बारो बछारे राजा बनी सीकार,
बैनिका मुड़े राजा पगरी बांधे। जब भगाया गया स्त्रियों ने शिकार खेला, ये कविता में किस प्रकार आता है? ग्रेस कुजूर लिखती हैं, जब फुटकल के गाछ, डुगडुगिया मछली, नकदौना, ढिचुआ ये सारे गायब हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार और ज़रूरत है ज़बरदस्त जनी शिकार की। तो यह संवाद का संघर्ष आदिवासियत है, जंगल से प्रेम आदिवासियत है, और इस प्रेम के लिए, जंगल के बचाव के लिए कई कई भाषाओं के संवाद का संघर्ष आदिवासियत है। धन्यवाद। हेलो, बहुत खूब। अब बारी है राही जी से बात करने की, और मैं उनको यही सवाल फिर से पूछती हूँ। इनके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि आप के लेखन में किस तरह के इन्फ्लुएंसेस आए हैं, और आपका जो जर्नी रहा है वो ज़रा हमको बताइएगा। जोहार सभी को। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा राजकमल प्रकाशन का, जैसा कि अनुज भाई ने भी कहा कि अलग से एक सत्र आदिवासी साहित्य, आदिवासियत पर विचार करने के लिए, क्योंकि इस धरती पर जो सबसे पुराना है हिंदी में, उस पर सबसे नए तौर पर विचार हो रहा है। और अपने बात की शुरुआत मैं एक लैटिन अमेरिकन जो वहाँ के नेटिव ट्राइब हैं उनका एक प्रोवर्ब है उससे करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आज के समय में जिस समय हम खड़े हैं, और ये सदियों से, बहुत हजारों साल से चला आ रहा प्रोवर्ब है, वह कहता है कि यह धरती हमें पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार में लिया है। ये आदिवासियत है और ये लगातार चला आ रहा है। पर मैं जल्दी जल्दी दो एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि विद्वत समाज के सामने हम बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। यहीं से एक कमेटी बनी थी 1965 में, लोकूर कमेटी, जिसने ये विचार करना था आदिवासी के संविधान के अंतर्गत के आदिवासी क्या है, और उन्होंने 5 पॉइंट्स गिनाए थे और उसके आधार पर यह तय किया था कि ये आदिवासी हैं जिसमें प्रिमिटिव ट्रेड्स उनमें है, या फिर डिस्टिंक्ट कल्चर है, और आइसोलेशन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, बैकवर्डनेस और साइनेस फ्रॉम द लार्जर कम्युनिटी, संकोच और पिछड़ापन। बाकी 3 को हम छोड़ भी दे, बाकी सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने इस पे खूब कहा कि अभी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये 2 शब्द पिछड़ापन और संकोच कभी नहीं छूटा। आप ये सोचिए कि उनको संकोची कहा जा रहा है जिनके यहाँ सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, जहां हर समय हर चीज के लिए गीत है, आप उनको संकोची कह रहे हैं। संकोच उनका किसके प्रति है? हमारे प्रति है जो बाहर से गए। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें कि वो संकोची न रहें। मेरी यात्रा दिकू से, नॉन ट्राइबल से आदिवासियत के तरफ की है, और मैंने अपने पहाड़ों और जंगलों से यह सीखा कि जिस तरह से मेरे पुरखों ने उनके पुरखों को या आदिवासियों को देखा है, तुम्हें नहीं देखना है। मैं आप सबसे भी यही कहता हूं कि आपके पुरखों ने जिस तरह से आज तक आदिवासियों को देखा या देख रहे हैं, आप अभी इसी पल उसको छोड़ दीजिए। हमें अपने जो पूरा पेडागोगी है, जो शिक्षा शास्त्र है, सोचने का तरीका है, उस फ्रेम को तोड़ना होगा। थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए। पहले से सोच कर जाएंगे, किसी भी तरह की विचारधारा के साथ आदिवासियों के पास आप नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा समय दीजिए। और इसके साथ बस एक छोटी सी घटना, और जिस तरह से इससे मुझे भी बहुत दुख पहुंचा कि आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यस मूवमेंट हार गया। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जानना चाहिए कि यस नो मूवमेंट क्या था और इसके अगेंस्ट में नो मूवमेंट कैसे जीत गया। हमको याद है कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने
पब्लिकली माफी मांगी थी वहां के आदिवासियों से, और ये कहा था कि हम आपके प्रति और आपके पुरखों के प्रति मतलब माफी चाहते हैं कि हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। 1788 में जब अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां 500 भाषा भाषी आदिवासी रहते थे। विविधता में एकता, एसडीजी गोल क्या है? एसडीजी गोल में हम कहते हैं इन्वायरमेंट बचाना है, हमें विकास ऐसे करना है कि भविष्य का भी कुछ नहीं बिगाड़ना है। ये सारी बातें तो वहां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये नो मूवमेंट इसलिए जीत गया क्योंकि वहां के आदिवासियों को जनमत संग्रह करवाया गया था, ताकि आदिवासियों के अधिकारों के लिए कमेटी बने और उनके अधिकारों को संविधान में जगह मिले। पहले अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पहली जो मीटिंग की थी उसमें यही बात कही थी कि हम ये करवाएंगे, और जनता साथ थी, लेकिन बाद में एक लंबा घटनाक्रम है। तीसरी बात, आदिवासी विश्व दृष्टि है। जैसे मार्क्सवादी विश्व दृष्टि है, जैसे गांधीवादी विश्व दृष्टि है। जिस तरह से उसने बराबरी की बात की, उसी तरह से आदिवासियत एक विश्व दृष्टि है, जिसमें हम ये सब जानते हैं और ये बार बार कहा गया है कि इसमें 3 शब्द बहुत प्रमुख हैं। एक तो सामूहिकता, कि हम साथ रहें, सहभागिता, साथ में काम करें, और सहअस्तित्व। ये हमारे और आपके लिए नहीं है। इस सहभागिता, सामूहिकता, सहअस्तित्व में पेड़ भी शामिल हैं, इसमें जानवर भी शामिल हैं, इसमें इस श्रेष्ठता का नकार है कि मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ होने की बात छोड़ दीजिए, मनुष्य होने की सर्वश्रेष्ठ होने की बात। फिर आप ये देखिए कि ये सारे जो चीजें हैं कैसे अपने आप ध्वस्त होती हैं आदिवासियत के सामने या आदिवासियत विचारधारा से। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक भाषा का सवाल है, और उससे पहले साहित्य। सिर्फ एक पंक्ति कि हम ये जानते हैं कि या मानते हैं कि हिंदी की या भारतीय भाषा की पहली कविता जो है वो क्रॉन्च जोड़े के वध से या उसमें से एक पक्षी के वध से हुआ, और वहां से एक श्लोक फूटा करुणा में। करुणा कविता का स्थायी भाव बन गया, और फिर हिंदी कविता का और भारतीय कविता का प्रवाह हुआ। आदिवासियत पूछती है कि क्रॉन्च जिस पेड़ पर बैठा था उसकी बात आप करेंगे कि नहीं? वह पेड़ जिस जंगल का था उस जंगल की बात आप करेंगे कि नहीं? जिस नदी के किनारे वो क्रॉन्च और क्रॉन्ची मारे गए उस नदी की बात होगी या नहीं? सबकी बात होगी। ये आदिवासियत है। और अंतिम बात भाषा का। आदिवासियत जो है भाषा के वर्चस्व को भी तोड़ती है। जैसे बहुत आसानी से हम ये कह देते हैं किसी बात पर, कह रहे इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। वामक जौनपुरी याद है ना कि जमी पे वहमो गुमा से कुछ नहीं होता, जमी पर रहने वालों आसमां से कुछ नहीं होता, यकी से काम लो वहमो गुमा से कुछ नहीं होता। जब आप ये कहते हैं कि इसमें धरती आसमान का फर्क है, तो आप किसके साथ खड़े हैं? आप धरती के विरोध में खड़े हैं। उस धरती ने जिसने हजारों साल कष्ट सहा, जली गली और हमें पैदा किया और प्यार करने का, नफरत करने तक का मौका दिया। पहाड़ हमारे यहाँ बोझ नहीं है, जंगली होना हमारे यहाँ सुंदर है, जैसे कि यालाम जी भी बता रही थी। तो ये भाषा का भी सवाल है, साहित्य का भी सवाल है। तो आदिवासियत में इन सारे वर्चस्व का, इन सारी चीजों का नकार है, और एक बेहतर, सुंदर और सबके साथ चलने की दुनिया का है। अंतिम बात कि हम पीछे नहीं लौटें। जैसे कि इस धरती ने बहुत विकास कर लिया, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज आपके पास है, लेकिन आप पीछे लौट रहे हैं। कैसे? आप सुबह उठकर पेड़ के पास टहलने जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। क्या पता पैदल ही चलते रहते तो हम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए होते। आदिवासियत आपको वापस इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है या आमंत्रित करती है। शुक्रिया। I am lost of words. So, what has always come into my mind time and again, बार बार ये सोच में आता है कि ये जो विविध है, ये विविध विचार हैं, तो इसको अपनाना ही आगे बढ़ना है। और हम लोग कई सारी बातें तो ऐसे चेयरों में बैठे करते आए हैं, लेकिन वही दिल्ली के पोल्यूशन, कलकत्ता के पोल्यूशन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सबको रिक्वेस्ट करेंगे,
मेरे पैनल में बैठे हुए गुणीजनों को कि अपने लेखन से अगर कुछ पढ़ के सुनाएं। तो पहले आप जोराम जी आप पढ़ेंगे। मेरी किताब तानी कथाएं राजकमल प्रकाशन से छपी है राधा कृष्णन से। तो बहुत लंबा नहीं पढ़ूंगी, बस 4-5 लाइन पढ़ देती हूँ। हमें यह भी याद रखना होगा कि किसी धर्म का नहीं होना भी एक धर्म है। यह एक दृष्टिकोण है जिसमें सत्य को अपने ढंग से देखा और समझा जाता है। आदिवासियत शब्द ही अपने आप में हमारे लिए धर्म है, और ये किस तरह से है और धर्म का अर्थ हमारे लिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों हो गया है और ये हमारे लिए समस्या क्यों बन गई है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने में हमारे पास एक तानी दर्शन है और उसी पर आधारित ये किताब है, उससे मदद मिल सकती है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी अनुज जी, अगर आप 2-4 कविताएं पढ़ के सुनाएं। मैं अघोषित उलगुलान संकलन से कविता पढ़ता हूँ। शीर्षक है घड़ी की बात। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। घड़ी नहीं थी इसका मतलब यह नहीं था कि वहाँ समय नहीं था। जब वहाँ दोपहरिया के लाल लाल फूल खिल जाते थे तब उनके स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी। जिन दिनों बचपन में हम दोस्तों के साथ नदी नदी घूमते थे या जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, तब भी हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास समय नहीं था। जब पेड़ों की परछाई अपने पैर के नीचे सिमट जाती थी तब हम जान जाते थे कि दोपहर हो गई है। इसी तरह काम के दिनों में हमारे पास अपना समय था, उस समय का अपना रंग था। हमने अपने को उसके अंदर रच लिया था। उस समय की एक सुई थी जिसमें हर कोई सवार था। उसी से दिन रात होते थे और सदियों से यह चला आ रहा था। लेकिन हमारे घरों में घड़ी ना पाकर हमें समय बताने वालों ने बहुत बड़ी गलती की। हमारी कलाई में घड़ी नहीं देखकर हमें आदिम समझने वालों ने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने समझा कि हमारी दुनिया में घड़ी नहीं है और उन्होंने अपना समय हम पर थोप दिया। मैं हैरान हूं उन सभ्य लोगों की चालाकियां जानकर। मैं हैरान हूं उन सभ्य लोगों की चालाकियां जानकर। उन्होंने घड़ी की बात कहकर चंदौली वालों को अपना समय दिया। उन्होंने बस्तर के माथे पर अपनी घड़ी ठोंक दी और साखू के पेड़ों पर लोहे की सुई लटका दी। आज जबकि हमारी घड़ी और उनकी घड़ी की सुई भीषण तरीके से टकरा रही है, तब मैं समझता हूँ कि वे हमसे छीन रहे हैं हमारा समय और हम उसे बचा रहे हैं। एक घड़ी की ही तो बात है, एक घड़ी की ही तो बात है, कहकर मैं घड़ी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह समय है जिसमें दर्ज है इतिहास में की गई साजिशों का लेखा जोखा। यह घड़ी अभी भी मेरी और आपकी आंखों में चल रही है। एक और कविता पढ़ देता हूँ, अप्रकाशित है। हमारे मिथकीय परंपराओं का एक पक्षी है ढेचुआ।
पार्वती और राही भाई भी जान रहे होंगे। यह कविता ढेचुआ से बात है। ढेचुआ कहता है पानी की बात। अभी रात का आधा पहर बीत चुका है और मुझे प्यास लगी है। मैं पानी के लिए घड़े तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन रात का पक्षी मुझे टोकता है, घड़े के पानी से सभ्यता की प्यास नहीं बुझेगी। मैं रात के पक्षी की आवाज से चौंक जाता हूं। रात का पक्षी ढेचुआ है, वह तो प्रहरी है आदिवासी गाथाओं के अनुसार। तो क्या है यह रात का पक्षी मुझे पानी के लिए सतर्क कर रहा है? कहने भर को यह रात का पक्षी है, इनकी दिनचर्या दिन में ही होती है। वह मुझे रोज दिन में देखता है, लेकिन बात करने के लिए रात होने का इंतजार करता है। वह कहता है कि शिकारियों का टोला मार्च करने वाला है। वह मुझे एहतियात बरतने की सलाह देता है और कहता है कि घड़े के पानी से सभ्यता की प्यास नहीं बुझेगी। यह विचित्र बात है कि मुझे प्यास लगी है और रात का पक्षी मुझसे पानी के बारे में बात कर रहा है। वैसे तो इस विषय पर सबसे पहले मेरी प्रेयसी को मुझसे बात करनी चाहिए। प्रेमी अगर पानी की बात नहीं करेंगे तो गुलमोहर लाल कैसे होंगे? और तो और मेरे जनरल सेक्रेटरी को मेरे प्यास लगने की चिंता करनी चाहिए। क्या कोई विचारधारा बिना पानी के धरती के गर्भ में उतर सकती है? लेकिन क्या मेरे आत्मीय जन पानी के नाम पर बिक चुके हैं? और रात का पक्षी मुझे सतर्क करते हुए कहता है कि घड़े के पानी से सभ्यता की प्यास नहीं बुझेगी। वह कहता है मुझे घड़े के पास नहीं बल्कि नदी के पास जाना चाहिए। वह कहता है मुझे घड़े के पास नहीं बल्कि नदी के पास जाना चाहिए और नदी के साथ जीने वालों से नदी का दुख साझा करना चाहिए। दजला वालों को इंद्रावती के साथ होना चाहिए, इंद्रावती वालों को दजला वालों के साथ। और यदि गंगा यमुना वाले अपना दुख आपस में नहीं बांट सके तो और कौन आएगा हाल पूछने मुनाफे की इस सदी में? रात का पक्षी कहता है दुनिया अब नदी घाटियों और जंगलों में बटी हुई नहीं है और ना ही दुख टुकड़ों में बटा हुआ है। वह कहता है घड़े के पानी से सभ्यता की प्यास नहीं बुझेगी। Thank you so much. I can't help but share a song that I had learned from my mother. बहुत पुरानी एक गाना है और इसमें कहते हैं कि ये जो नेचर के साथ संबंध है वो कितनी गहरी है, कितना अपना है। सो इट गोज कुल्ही कुल्ही तदोदना शाख दकिन अतीन कन कुल्ही कुल्ही तदोदना शाख दकिन अतीन कन शाख दकिन अतीन कनारे कुल्ही कुल्ही ते दोदना शाख दकिन अतीन कन कुल्ही कुल्ही ते दोदना शाख दकिन अतीन कन शाख दकिन अतीन कनारे शाखरिया अमला दैनमते निकन दैना शाखरिया अमला दैनम निकन दैना मोड़े मुकामान लिकन लेविर कोदर को लेविर कोदर को। So this song talks about snails moving in the gardens and two sisters talking about the snails and how one sister would like to make a garland out of the snails and they would hold hands and dance together in the moonlight like a flower dancing, a bamboo flower which basically grows in between 7 years, once in 7 years.
So that is how the knowledge, the indigenous knowledge, the Adivasi knowledge is embedded within the songs, within ourselves. That needs to be, I couldn't help but share it. So yeah, now I would like to request Rahi ji, would you like to go ahead? Yeah. शुक्रिया। एक कविता पढ़ूंगा और ये वही उसी शीर्षक से कविता है जिस शीर्षक से मेरा संग्रह जो अभी अनाउंस किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजकमल प्रकाशन की पहुंच को भी दिखाता है कि मैं बहुत कम छपा हूं, पर वो लोग मुझ तक पहुंचे और मेरी किताब वहां से छप रही है। मेरा नाम राही डुमरचिर है। इसमें डुमरचिर एक गांव है और उसमें एक टोला है नदी किनारे का, गाडा टोला। गाडा मतलब नदी। गाडा टोला एक। हर बार पहाड़ से टकरा रही होती सड़क मुड़ जाती थी। पहाड़ किनारे होते हुए पीछे छूटते जाते थे। मेरा सफर जारी रहता था। जिंदगी में कुछ बनने की चाहत में पहाड़ पीछे छूटते गए। नदियों को गाड़ी की खिड़की से जी भर के देख पाता, उससे पहले ही खत्म होती रही। बचपन का हमराज सखुआ का जंगल भी इधर कम आता है गाहे बगाहे बतियाने। सब कुछ बदलता रहा वहां, सब बदलते गए वहां, सिवाय मेरे अंदर, जहां गाडा टोला के सबसे आखिरी घर में आज भी रहता है पुरखे बास की वैसे ही। आह पुरखे, तुम क्यों चले गए मिजोरम सब छोड़ छाड़ के। मेरे बचपन के साथी पुरखे, क्या इतनी भी ताकत मेरी कलम को नहीं दे सकते कि लौटा सकूं तुम्हें वापस तुम्हारे उसी गाडा टोला के सबसे आखिरी घर में। 2, हर गांव में अमूमन होता था एक गाडा टोला, कभी कभी 2 भी, ऊपरी गाडा टोला और नीचे गाडा टोला। नदी आते जाते सब बोलते बतियाते गुजरते थे गाडा टोला से। सबसे ज्यादा रौनक होती थी गाडा टोला में। सब तरफ के गांव नाचते नाचते थक कर जब सो जाते, थम जाती उनकी लय, तब सबसे देर तक आती थी आवाज मांदर की गाडा टोला से। नदी के उल्लास की खुशबू हर ओर गूंजती थी। नदी के उल्लास की खुशबू हर ओर गूंजती थी गाडा टोला में। फिर पुरखे बास्की चला गया मिजोरम, दीवीलाल हेम्ब्रम कश्मीर, बेदे टुडू असम, बाहा किस्कू बंगाल। इस तरह जीने बचने की जुगत में छोड़ते गए गाडा टोला सब एक एक कर। अब वहाँ एक गांव आबाद है जिसमें कोई संताल नहीं है। 3, नदी कभी सूख जाएगी सोच ही नहीं पाए कभी। लगा ही नहीं कि पहाड़ों से बार बार कूदती फांदती आती नदी छोड़कर चली जाएगी हमें एक दिन। कहाँ सोचा था हमें बिना बताए किसी रोज हमारे बीच से चला जाएगा गाडा टोला भी चुपचाप। 4, मिट गया गाडा टोला से होकर नदी जाने वाला रास्ता। नदी भी स्मृति हो गई है अब। मिटते कदमों वाले साथ ले गए गाडा टोला और रूह नदी की। 5 और अंतिम, हुलास मारती है नदी सबसे पहले दिल के भीतर, तब नक्शे पर जन्मता है गाडा टोला। पहले अंदर मारी जाती है नदी, तब मिटता है नक्शे से गाडा टोला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पार्वती जी आप थोड़ा सुनाइए। दो कविता पढ़ूंगी। पहली कविता मेरे काव्य संग्रह फिर उगना से। कविता का शीर्षक है रसुआ घर। आदिवासी के घरों में एक रसुआ घर होता है जहां धान का भंडार रखा जाता है। धान पक रहा था, जैसे सूरज उनमें थोड़ा थोड़ा समा रहा था। धान सुनहरे हो चुके थे, उनके सुनहरेपन से खेत सुंदर हो गया था। खेत के पास स्त्रियां एकत्र थीं, सुनहरे सौंदर्य की गठरी बांधने के लिए तैयार। इसे वे अपने रसवा घर में सहेजने के लिए इकट्ठा हुई थी।
वे धान काट रही थी। उनका हंसिया जैसे दिन को काटते हुए शाम की ओर बढ़ रहा था। सूरज थक चुका था। धूप में तपे उन स्त्रियों के गाल जैसे वह भी लाल हो रहा था। उसे अब लौटना था। स्त्रियों के समूह ने सूरज को काम से छुट्टी दी। हंसिया अपने कमर में खोसा, धान का गट्ठर सिर पर उठाया, लौटते चिड़ियों के संग अपने घर निकल पड़ी और सूरज पहाड़ के पीछे जाकर सो गया। उसे सबके साथ रसवा घर को सजाने के काम में फिर जुटना था। दूसरी कविता संग्रह से बाहर की है। शीर्षक है पाइका। हमारे पुरखे पाइका खेलते हैं। पाइका युद्ध शैली का एक नृत्य है। जब उनका बाहरियों से मुठभेड़ हुआ तब इस शैली को उन्होंने निर्मित किया। तो वे अपनी मिथक कथाओं में कहते हैं कि पाइका जब 7 राज्यों का समय था तब नहीं था। अब कविता सुने। पुरखों की कहानियों में 7 राज्यों के समय में पाइका नहीं खेले जाते थे। समूह युद्ध शैली के नृत्य नहीं करते थे और गीत मधुर राग में गाए जाते थे। समूह ने जब युद्ध किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने पाइका खेला। युद्ध की भाषा में नृत्य, नृत्य की भाषा में संवाद और संवाद की भाषा में पाइका। धन्यवाद। जी, मन में सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन वक्त काफ़ी हो रहा है, तो without taking the opportunity to question the audience here, I would like to ask the audience if they have questions, and our panelists, I think, will be happy to answer the questions. Please. शुक्रिया। प्रकृति अपने आप में एक परम अनुशासन है। इसे समझने के बाद मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक जी सकता है। पत्थर नहीं होता तो हमारा होना भी मुश्किल होता। इन्हें पूजा नहीं जाता, इनके साथ एक संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि हम साथ साथ रहते हैं, हम सहचर हैं। इसीलिए आज भी गांव वाले कहते हैं, पड़ोसी को समझना प्रथम अनिवार्य नियम है। ये ही प्राकृतिक धर्म है। धन्यवाद। Quickly, one question perhaps. I can't see with this light. Okay. So we don't have much time at all. I'm so sorry. But I would like to conclude with. आप लोगों को सुनना बहुत ही सुखद है और बहुत ताजगी भरा अनुभव है। हम यही चाहेंगे कि आगे फिर कभी आप लोगों को सुनने का हमें सुख मिले, मौका मिले और आप लोगों से हम लोग सवाल भी कर सकें, बातचीत कर सकें। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ सवाल जो मन में थे वो मन में ही रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोराम ने वाकई कम पढ़ा तो जैसा कि बात संकोच की हो रही थी कि राही कह रहे थे कि संकोच नहीं है, जोराम ने साबित किया कि संकोच है। ये शायद आदिवासियत के शहरीकरण का दुष्प्रभाव है। तो हम लोग फिर मिलेंगे। अभी आप लोग थोड़ा इजी हो लें, तब तक मंच की साज सज्जा बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। हमारे बीच मंजब्बा हैं और उनका एक अद्भुत प्रदर्शन हम लोगों के बीच होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं। इस सत्र के सभी सहभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस शीत में, प्रदूषण में
हमारे साथ सुबह से हैं और अभी तक ठहरे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने हमारे मॉर्निंग सेशन में कहा था, धीरज धरो। अभी एक बहुत अद्भुत परफॉर्मेंस होने वाली है और जैसे निरुपम जी ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि मंजमा जी और उनकी संगत हमारे साथ आज एक पेशकश देने वाली हैं। जोगती नृत्य पद्मश्री अम्मा जोगती और उनकी संगत द्वारा एक पेशकश है जो जोगती ट्रांसजेंडर समुदाय का लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को, जिसे कहते हैं, सड़क से स्टेज पर पहुंचाने में अम्मा जोगती की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस लोक नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता और सम्मान दिया गया है। उसमें उसका श्रेय भी अम्मा जोगती को जाता है। ये सेशन हमारा हापर कॉलिन्स इंडिया द्वारा आयोजित है, सहयोगित है और हम लोग अभी सेशन सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद मैं इनवाइट करूंगी अनंत जी को हापर कॉलिन्स से, जो कि आएंगे और परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए धीरज धरो। स्टैंडिंग माइक लगाओ, जो मांगे उन्होंने। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हार्पर कॉलिन्स से अनंत जी, जो कि इस पेशकश को इंट्रोड्यूस करेंगे। स्वागत है। Thank you, Kanika. Thank you, everybody, for being here. May I just invite as many people standing around to be at the amphitheater, please, if you can settle down. The next performance by Amma Jogamma, they've taken the trouble to fly many thousand kilometers from North Karnataka to be here with us. This is truly special. We had the opportunity to publish a book about her life story as well, which is available in the bookshop. It's called From Manjunath to Manjamma, written with Harsha Bhatt, the inspiring life of a transgender folk artist. I'm going to read from the book. As a young Manjamma lay unconscious after a suicide attempt, she could not have imagined that one day she would receive a national award from the President of India. A transgender folk artist who became the president of the Karnataka Folk Academy, her life's journey has been nothing short of epic. As a young boy, Manjunath discovered that he felt more like a woman, which led him to being ostracized and mocked. The transformation into Manjamma, a performer of the Jogati Nritya, was a testimony to her grit and determination. Jogati Nritya is a Kannada folk form, is a dance form performed by the Jogati transgender community, and Manjamma became its leading proponent, popularizing it on a national level. And that's the one that she won the Padma Shri in 2021 for. From being stripped of her modesty to being given one of the highest civilian honors of the country, the Padma Shri in 2021, Manjamma's is an inspiring, heart-rending story which tells in this book with remarkable honesty. This is the book
I'm also going to take 1/2 a minute and read what I think is a very moving part from inside the book. My Padma Shri has been possible not because of activism, but because of art. This art of ours, called Jogatri Nritya, has empowered many transgenders like me to earn a living, to not have to resort to begging or sex work, to gain respect and recognition as folk artists, and free ourselves from the clutches of ridicule that the world imprisons us in. I was once homeless and orphaned. The same truth today has made me a mother to countless sons and daughters who call me Amma and embrace me as their own. Had I been born a man, I could not have fathered that many children, nor could I have been given birth to so many had I been a woman. Ladies and gentlemen, please welcome Amma Jogamma and her dance troupe. Thank you. हेलो 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 थोड़ा ऊपर कर थोड़ा ऊपर कर हाँ बस 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 ऋष उनके सामने कौन सा मैक रहेगा सामने ये तो वहाँ से उठाओ कॉर्डलेस नंबर बताओ उसका इसको बढ़ाओ ये जो मैक है हाँ, उसको ऑन करो हाँ हेलो कितना नंबर है हाँ नंबर 3 हेलो हेलो हेलो
ऑन आते ऑन हेलो हेलो ऑन है हाँ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗಿವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಟ, ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ನನಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. She's saying, I'm very happy that where I was performing my own folk little tales in my village in some remote corner of Karnataka, November 2021 changed a lot of things because it took me right from there to the parliament where she received the Padma Shri from the President of India. And she says it's a matter of great pride that this journey has been made possible only by her art form, which is called Jogati Nritya. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಆರ್ಪರ್ ಕಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಪರ್ ಕಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ಫ್ರಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಟು ಮಂಜಮ್ಮ, ಈ ಬುಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಕನ್ನಡದ ಆರಾಧನೆಯ ದೈವವನ್ನು, ಈ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ 2-3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಭಟ್ ಅವರು ಅಮ್ಮನ ಕತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಪರ್ ಕಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಓ ಶೂರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾವು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹರ್ಷ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಲು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಗಳಿಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ, ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತ್ರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. She says, कहाँ मैं कोई एक छोटे से कॉर्नर में कर्नाटका में बैठी रहती if not for this recognition and this life that art facilitated. I mean, I'm just diverting from what she said, but our journey began from there. 2021 November 8th, when I met her as a writer for a story, she said, it's not art that it's not activism but art that has made my journey from the pavement to the President's Court possible. And that's when I asked, can we make a book about just this one line? She said, sure, go ahead and do it. And that, she says, is the power of this story of a folk tale, where I was in Karnataka singing very rural songs. From there I got a lot of awards from the central government, the state government. I was the first transgender person to be the head of a government academy. She was the president of Karnataka Janapada Academy. And that also brought her to receive the President's Award. And she says, there have been books in Kannada, 2-3 biographies have come in Kannada, there's a work in Telugu.
ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 15 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ. Her life, which excerpts from her life story are in 15 universities, taught in 15 universities across Karnataka. But she says for this tale to go beyond Karnataka and people who would have been familiar with Kannada culture, HarperCollins made it possible to take it to the world through English. So because this tale has been told in English today, she's saying people across the world can know that this little subculture that exists in Karnataka has facilitated the journey of a trans person, which she says, this is not just my story, it's the story of our community, it's the story of all transgenders as we live in our rural setups, and it's the journey of a folk artist, more importantly. So she says the reception that we have today, being in Delhi, sitting here, where language is no barrier, that is the biggest applause for this book having happened in English, is the biggest applause to her art, and she's grateful to both the audience as well as her art form which has made this possible. ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದಳದಳ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಾರಿ 12 ಬಾರಿ 12 24 ವರ್ಷ ಪಟ್ಟವ ಮೀರಾವ ದಿನಗಳ ತುಂಬ್ಯಾವ ಜಮದಾಗ್ನಿ ಮಾರುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರ ಎಲ್ಲವನ ಮಾಡರ ಲಗ್ನವನ ಮದಿವಾರ ಮರದಿನ ಕನಸೆ ಕಂಡಾರೋ ಹೋಗ್ಯಾನ ಯವ್ವಾನಿ ಕೇಳಮ್ಮಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ದಾಳೋ ಏನಂತ ನೋಡ್ದಾಳೋ ಯವ್ವಾನಿ ಬಂಜಿ ಕೈಯ ಬಾಲ ಎಂಜಾಲಂದಾರೋ ಬಂದಾರೋ ಮಾವ ಗೋತಾಲ ಮುನಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ದಾಳೋ ಏನಂತ ನೋಡ್ದಾಳೋ ಬಂಜಿಯಾಗೆ ಮಾರಿ ನೋಡಬಾರೋ ದಂದಾರೋ ಕಾಣಬಾರೋ ದಂದಾರೋ ಪಾಪಿ ಎನ್ನಿನ ಜನ್ಮ ಇರೋಬಾರೋ ದಂದಾಳೋ ಹುಟ್ಟು ಬಾರೋ ದಂದಾಳೋ ಎನ್ನಿನ ಜನ್ಮ ಇರೋಬಾರೋ ದಂದಾಳೋ ಹುಟ್ಟು ಬಾರೋ ದಂದಾಳೋ ಅಯ್ಯವ್ವ ಬೋರಾಡಿ ಶೋಕದ ಮಾಡಳ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಡಳ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಯವ್ವ ದೇವಿನಿ ಕೇಳ ಹಿರಿಯೋದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಜನ ಬರೋದೆಲ್ಲಮ್ಮ
ಕಡೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ ಜಗದಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಟ ಕುಡಿವು ಕೋಮಡಿಯ ಜವಾನು ಕನಕದ ಕೈತ ಮಡುವೆನೋ ಗಾನ ಹಿರಿಯ ಆಡಿನ ಸೇವ ಮಾಡುವೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೋಡಿ 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 ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ ಸರ್ವ ಮಗೇನೋ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ ಜಗದಮ್ಮ ಶೀಲವಂತರ ಹಾಕಿದು ಏನರ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ನೇಮ ಪರಿಮಾಣ ತಂದೋರಿ ನೀವು ಗಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂದಾಗ ನೆನೆಯವ ನೀನ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ ಜಗದಮ್ಮ ಜಂಗುಮ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗ ತನಕವಿದು ತೊಟ್ಟವ ಅಂಗಿ ಜೀವನ ತಂಗಿ ಮಂಗ ಸಿದ್ಧನ ಈ ಮಂಗ ಸಿದ್ಧರನ ಇಡತಂದು ತಿನಸೇರಿ ಬಂಗಿ ಮಾಡಿದ ತಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಸಿ ತುಂಡ ಜಲದಂತ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ದೇವಿಯಲ್ಲ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ ಜಗದಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಹೂವಿನ ಸೇರಿ ಗಟ್ಟು ಗದ್ದಿಗೆಲೇರಿ ಜಿಟ್ಟಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ ವರವ ಬ್ಯಾಡಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಮೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಟ್ಟ ಮಾಡಿರಿ ಗುರುಗಳ ದೂರ ಅಲಿರದೆ ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಯಾದೆ ಸಮಾನೋ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಕರೆಯ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ ಜಗದಮ್ಮ
ಏತಾಂಬರ್ ಇದು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಶ್ರುತಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ She's just describing the instruments they use. That is called shruti, and she says it's an elaborate process and through which they make that instrument. ಶ್ರುತಿ and ಚೌಡ್ಕಿ. Adu that is chaudaki. The one on her left is chaudaki and the one to her right is called shruti. ಶ್ರುತಿ ಚೌಡ್ಕಿ. ಇದು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರಾಜನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ತಿವೀರಾರ್ಜುನರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳವು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಒಳವು. It's called ಒಳವು because it's according to the folk tales that they talk about. It's the heart of Kartivirarjuna. When he is उसका जब संहार होता है तो उसके दिल से वो पार्ट बनता है and it's called वड़वु. वड़वु also means interior. ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೋಲನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So his hand was chopped to make the stick, that wooden stick part of it. ಇದು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕಡಿದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. That is the thumb. ಇದು ಕರಳು. His intestine, the string stands for his intestine. ಬೋಟಿ. ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಚರ್ಮ ಇದು. And his skin, the back peat की जो चमड़ी होती है, उससे that tan, it's symbolic of his entire being personified in that instrument. ಕಡ್ಡಿ. ಇದು ಅವನ ಕೈ ಬೆರಳು, ಇದು ಕಿರುಬೆರಳು. It's his tiny finger that's used as the plectrum. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತಲೆಯ ಬುರಿಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಚರ್ಮ ಹಾಕಿ ಇದು ಮುಂಗೈ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕರಳುಗಳಿಂದ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. So this one is his skull. The string is still the intestine, so they put their hand there and play, and Parashurama is said to hold it and perform and come in offering himself to Yalama Devi. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪರಶುರಾಮ ಇವೆರಡು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಂದ. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನ ಜೋಗುತಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾದವರು ಇದು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುತ್ತು, ರೇಣುಕಾದೇವಿಯ ಮುತ್ತು. ಆ ಜೋಗತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಆದವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜೋಗತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. So those beads they wear are called Yalama's muttu. So when the process of transition where a man wants to be a part of the Jogati Sampradaya, that's when he wears it. He bows down to Yalama and wears her muttu, and that's from then she becomes a Jogati. ಅದನ್ನ ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಪಡ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಿಕ್ಷನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಚೌಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕುಣಿಯೋದು, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಆ ರೇಣುಕಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಈ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬದುಕನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. She's saying like Parashurama performs with the instrument at a time when her parents, everyone she was born with had excluded her, abandoned her. It's the art that gave her
means to earn back that love, that inclusion, that acceptance, and today made her who she is. So art has enabled this journey, and she's saying you can read the details in the book, but she's grateful that this enablement has happened through the art. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಂದು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೋಗುತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ, ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೇನೋ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೇನೋ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಎನಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೇನೋ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಎನಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೇನೋ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಎನಿಸಿದೆ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗ ಹುಟ್ಟುವ ಬೆಳಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರೆ ಎಲ್ಲವನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣನಿ ಎಲ್ಲವನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಎಲ್ಲವನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಿರದೆ ತಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಊದೋ ಎಂಬ ಕೈಲಾಗಿರದೆ ಒಳ್ಳೆಯದವ್ವ ನಿನ್ನ ಬಿರದೆ ತಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಊದೋ ಎಂಬ ಕೀಲಾಗಿರದೆ ಕಳ್ಳ ತುಳ್ಳರಿ ಬರದೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮವ ಕಳದೆ ಕಳ್ಳ ತುಳ್ಳರಿ ಬರದೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮವ ಕಳದೆ ಕಳ್ಳ ತುಳ್ಳರಿ ಬರದೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮವ ಕಳದೆ ತುಳ್ಳರಿ ಬರದೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮವ ಕಳದೆ ಕಾಲಿನೊಳಗೆ ಗೆಜ್ಜಿಯ ತಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣನಿ ಎಲ್ಲವನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಎಲ್ಲವನಂತ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಮಾಯಿ ಕಾರತಿ ನೀ ಎಂತ ಕೆಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಲ್ಲದ ಪುಂಡಗಾರತಿ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಮಾಯಿ ಕಾರತಿ ನೀನಂತ ಕೆವ್ವ ಗಂಡ ನಿಲ್ಲದ ಪುಂಡಗಾರತಿ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಮಾಯಿ ಕಾರತಿ ನೀ ಎಂತ ಕೆಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಲ್ಲದ ಪುಂಡಗಾರತಿ ಗಂಡದೊಳಗೆ ಮಾಯಿ ಕಾರತಿ ನೀನಂತ ಕೆವ್ವ ಗಂಡ ನಿಲ್ಲದ ಪುಂಡಗಾರತಿ ಗಂಡ ಎಂದರ ಬಿಡತೆ ಬಂದರ ಚೀಲವ ಹೊರತೆ ಗಂಡ ಎಂದರ ಬಿಡತೆ ಬಂದರ ಚೀಲವ ಹೊರತೆ ಗಂಡ ಎಂದರ ಬಿಡತೆ ಬಂದರ
ದಿಕ್ಕಿನೋ ಶಿಶುನಾಳ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊಲಿದೆ ದಿಕ್ಕಿನೋ ಶಿಶುನಾಳ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊಲಿದೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಾರವಾಯಿರದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಲಿ ಎಲ್ಲವ್ವದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಲಿ ಎಲ್ಲವ್ವದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಲಿ ಎಲ್ಲವ್ವದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಂತವಳನ್ನ ಶಿವನ ವಲ್ಲಭೆ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ ಆದಂಥ ಕವಿ ಆದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಆ ರೇಣುಕಾದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಹಾಡು, ಅವಳ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಳು. ನೀನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವಳು, ಗಂಡಸರನ್ನೋಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿದಿ, ಹೆಂಗಸರನ್ನೋಗಿ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಿದಿ, ಕೈ ತುಂಬ ಬಳೆ ಹಾಕಿ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜಗ ಒತ್ತಿ ದೇಶದ ತುಂಬ ಮೆರೆಸಿದೆ ಅಂತ ಶರೀಫರು ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. This song actually sums up the entire life and journey of the Jogatis, written by Shishunal Sharif. He's also like the equation, I mean, he's equated to call the Kabir of the South. So he was born a Muslim and he Guru Govindana Pada, what they say in the song only. So it encapsulates her entire journey. That apne the one who was born male, you made her a female. The one who was born female, you made her a male. And it describes the way they dress themselves, the bottu, the sire, what all they wore, how they sing, how they dance, and in pursuit of the divine, how they live. The entire song is about their journey, and it was penned by Shishunal Sharif. ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋನೆಲ್ಲರ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲದ ಮುದುಕೆರ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮುದುಕೆರ ಜೋಡಿ ಕಲ್ಲ ತುಳಿತ್ರ ಗದಗಿನ ನಾಡಿ ಕಲ್ಲ ತುಳಿತ್ರ ಗದಗಿನ ನಾಡಿ ತಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಣು ಕಚ್ಚಲೋ ಬಂದಾರ ಕೌತೋಕೆ ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಣು ಕಚ್ಚಲ ಬಂಡಾರ ಕೌತುಕ ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಣು ಕಚ್ಚಲೋ ಬಂಡಾರ ಕೌತೋಕೆ ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಣು ಕಚ್ಚಲ ಬಂಡಾರ ಕೌತುಕ ಬಂಡರಚ್ಚಿದೆ ಬಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಬಂಡರಚ್ಚಿದೆ ಬಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಪುಂಡ ಪುಂಡರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದೆ ಪುಂಡ ಪುಂಡರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದೆ ಪುಂಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ದುಂಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಚೌರ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೋರಿ ಕಲಗಲ ನಡೆದಾಕಿ ಕೊಳದಾಗ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಿನ್ನಕಿ ದೇವಿ ಕಲಗಲ ನಡೆದಾಕಿ ಕೊಳದಾಗ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಿನ್ನಕಿ ಗಿಲಗಿಲ ನಡೆದಾಕಿ ಕೊಳದಾಗ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಿನ್ನಕಿ
ಗಚ್ಚಿನ ಗುಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಗಚ್ಚಿನ ಗುಡಿಯ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲವ್ವ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯ ಹುಚ್ಚು ಎಲ್ಲವ್ವ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಳಿಯ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಕೋನ ಹಿಡಿಯ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕೋನ ಹಿಡಿಯ ಸಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಕೋದ ಎಲ್ಲವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕರಡರೆ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕರಡರೆ ತಾಯವ್ವ ಗೋಗನ ಜಾತೂರಿ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ 8 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರು 7 ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 7 ಕೊಳ್ಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ 7 ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ಜಾನಪದರು ಎಲ್ಲವಗೋಗನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಕರಡಿರಿ ಎಲ್ಲವನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲವ ನಂಬೋಳು ದೊಡ್ಡೋಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದರು ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಇದು ಜಾನಪದ ಹಾಡು. ಇದು ಜಾನಪದ ಹಾಡು. Song, she's actually giving you a glimpse of their life and what they do. So this song is about their devotion to Yellamma. There are 7 different mountains in that region and they make this pilgrimage. So Yelru Kudi, like, so all Jogatis come together and let's make this pilgrimage is the song, and it describes the difficulties they have to go through, what all they eat. So she says they pack their rotis and make the, go on a buffalo cart. So from the food to the transport to the everyday life details is in this song, and so it is the pilgrimage to Yellamma. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ 5,000 10,000 ಜನ ಸೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆಯ ಆರಾಧಕರು, ಕಲೆಯ ಪೋಷಕರು, ಕಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥರು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ ಕಲೆನ್ಸಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯದವರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಪರ್ ಕಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Saying I've performed where 5-10,000 people are there, make a lot of noise, शोर शराबा होता है, सीटी बजाते हैं, सब कुछ होता है. लेकिन यहाँ पे बैठ के मेरी हर परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से जानने की कोशिश कर रहे हैं. This audience, she's saying, is my, I'm feeling very, humbled and very, she's saying it's touching to see that there's an artist in each one of you who is trying to understand my artistic journey. Even though the language is not something you can understand, the story, the depth, the intensity of our life you're trying to understand. She says, I'm grateful, and she thanked Samanvay and HarperCollins for making this platform available to reach out to real artists and the artistic community. Also, she, at the end of every performance, she has a message that she always tells in Kannada. So that's a message she makes on behalf of her community that she would like to share. I'm sure you will get the essence of it. That I don't think I can ever translate because it's something coming from very, very deep within her heart. And I have cried every time I have heard her. But this is something I don't think I want to translate. It'll reach your hearts. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗಬಹುದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಭೂಮಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ನಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 1% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು? ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು? ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಂಜಮ್ಮನ ಥರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಪರ್ ಕಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಜಮ್ಮನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಲ್ಲ, ಟೋಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಸಮಾನತೆಯ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಯಾರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. She's just seeking that. She says, if आपके घर में मेरे जैसा कोई बच्चा पैदा हुआ तो प्लीज उसको घर से बाहर मत निकालिएगा. उसको बाकी कुछ ना दिए तो ठीक है, पैसा nothing. All we seek is inclusion and education. She's like, if a Manjama has reached here, it's because of an art. So similar, if a trans child is born to any of you here, please don't abandon it. Give it education. Then you will never find it at a traffic signal or indulging in sex work or begging for existence sake. Just facilitate their life with education and it will find a path for itself. So we're just seeking that much of inclusion from everybody here. She's saying, at least if all of us here can make that promise that we will facilitate that. That's a plea that she makes at every stage that she enters. Ravi.
come, no, they want. She wants Samanvay. Yes. Okay. Where's Shadab? Excuse me, do you want to say something? We are just. I'll do it. Thank you, Manjama ji and troop, for being here with us. And to all our audience members, thank you so much for being with us today. And we really hope to see you here tomorrow morning. Our first session starts at 11 a.m. with a talk by author and scholar Mineke Schipper. Mineke is best known for her work on comparative literature, mythologies, and intercultural studies. We really hope to see you all here at 11 in the morning. Manjama will also be joining us for a session tomorrow afternoon. Thank you.